उसके मलबे को हाथ से उठा रहे हैं और उस मलबे को ट्रॉली पे डालकर बाहर तेजी से खींचा जा रहा है। और इस पूरे अभियान में रफ्तार इतनी बेहतरीन रही है कि कल शाम से लेकर आज सुबह तक लगभग 6 मीटर का जो दायरा है वो पूरा का पूरा तय कर लिया रैट माइनस टेक्निक से वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उन्होंने। और अब एक उम्मीद जगी है कि आज संभवतः दिन के अंत तक ये जो महायुद्ध चल रहा था उस महायुद्ध में जीत होगी रेस्क्यू टीम्स की, अथॉरिटीज़ की और उन मजदूरों की जो पिछले 17 दिनों से सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे हुए हैं। वीडियो सहयोगी मृदुल के साथ मोहम्मद भारद्वाज, उत्तरकाशी, आज तक। It's day 17th of the rescue operation being carried out at Silkyara Tunnel, and these are different visuals of groundwork happening near Silkyara Tunnel. For the past 17 days, we have been hearing about groundwork for drilling, groundwork for vertical drilling, horizontal drilling, parallel drilling. But right now, the roads are being fixed. You can see cranes are actually moving the debris, which is to broaden the road. That debris is being taken away. You have the police officials moving. हाँ जी, आवाज़ मिल रही है आपकी? ओके। बैठ जाओ।
इतनी देर में तो चला जाता। सूरज कहाँ है तो छुपा हुआ, निकाल इसको बाहर में यार, ठंडा करके पता कैसा कैसा सूर्य नाम है, धुकी पड़ेगी धुकी। अरे क्या बिगड़ बात हुई बोला आपस में। अरे फोन कर दो भाई उन्हीं को, बोले आएंगे। उन्हें रखा गया उसमें आया, देख लेता हूँ एक बार, देख लेता हूँ। बोल रहे थे ऑलमोस्ट कर मैं चीज़ आ गया खेल हो गया। यहाँ लगाओ, यहाँ से सब आएगा। अब स्टैंड बाय हो सकता है ना, हाँ स्टैंड बाय। मृदुल वीके सिंह ये वो इनको समझाया ज़्यादा। वीके सिंह है ना, वीके सिंह है, दीपक पाटिल है वो जो है। दीपक पाटिल दिख रहा है तुम्हें? हाँ हाँ पाटिल है, ये वही वाला है कर्नल जो है, यही है। ये देखो देख लो एक बार।
इसमें इधर देख लो, इधर वही है ये। यस, दिस इज पाटिल, दिस वीके सिंह, ये सरदार आदमी यहाँ घूमता रहता है। ये तो ओएनजीसी वाले हैं। हाँ, ये दो एनजीसी वाले हैं। फिर बहस चल रही है क्या ऊपर वाले को लेकर? कह रहे हैं इसी पे करो। ओएनजीसी है, एनडीआरएफ है? ओएनजीसी हो रहा, लाल कपड़ों वाले। भाई हवा क्या, मेरी प्रेडिक्शन सही निकली? हवा देख रहे हो कैसे बदल रहा है? बर्फीली हवा चल रही है अब। ऑडियो चेक, ऑडियो ऑडियो मिल रहा है आपको? डू यू हैव माय ऑडियो? ओके। एनडीआरएफ की शॉट ले लो। हाँ ले लो, शॉर्ट्स ले लो। एकदम रेडी।
Absolutely right, Palami. You know, this is that day, the 17th day, unfortunately, but we have there's strong hope of a breakthrough, and it's reflecting in the body language of everyone. You know, be it the rescue operation officials or General V.K. Singh or the officials deputed on the ground. And I'm getting you the visuals of a completely different sort, Palami. You know, for past several days, we have been talking about ground preparation for horizontal drilling, for vertical drilling, but look at the ground preparation which is being done outside Silkyara tunnel. This is the Kacha road which is being prepared. The potholes are being fixed, the road is being broadened, white marks are being put up. Why is that being done? You know, because now the officials have a very strong feeling that they will be able to get a breakthrough, and that is why the road is being broadened, because ambulances have to be lined up. Movement of 30 to 40 vehicles will happen out here, and out there you will see NDRF personnel, you know, on standby. There are stretchers out there. All that is happening. The police was briefed out here a couple of minutes back, and we have also seen frames like this one, the rectangular frames like this one, being taken inside the tunnel in order to secure the exit, exit of the rescue tunnel which has been constructed. And on right outside the mouth of the Silkyara tunnel, these officials who are speaking, standing outside the tunnel, we have Colonel Deepak Patil, someone who has played one of the very crucial role in the entire operation out here, and he was briefing General V.K. Singh a couple of minutes back about the operation. You know, so these are the visuals which is also giving a sense of as to what is happening on the ground, what is happening inside the tunnel. And all this is happening again, Polemy, as I said, you know, because of the rat miners. They were the ones who were sent inside when the auger machine failed, when the parts of the auger machine was taken out last evening. They were the ones who were sent inside, and they were very passionate about the mission which was handed over to them. They had very clearly told me that we are workers, those who are stranded inside are workers, we are brothers, and we will ensure that they come out safely. And that's what they have been doing, you know, relentlessly since last evening. And a journey of 6 meters have been already completed. We hope that another 6 to 8 meters will be achieved as well. Paul, me, yeah. अब जहाँ अंग्रेजी वाला कहेगा 200 पाइप पे हमारे लिए, टाइम्स वाले बेचारे कहीं से स्ट्रेचर ले आए मांग के। क्या अब क्या हो गया? अब 2 रिपोर्टर आ गए, अब तो खत्म। आज फिर स्ट्रीमिंग हो रही है, वैसे स्ट्रीमिंग तो जा रही थी लाइव देखने। और क्या आज कोई लाइव फ्रेम का झपट नहीं है भाई। दीपक को बोला, दीपक दे देगा स्ट्रीम। तो मुझे ये बताओ, बाबा है क्या बात करना? हेलो, हाँ करा दो। पता नहीं, तुम फोन करेंगे तो पता लगेगा। हाँ हाँ हाँ, आप करिएगा, कॉल करिएगा, ये मैं कर दूँ। कर दो, ठीक है। क्या
It's day 17th of the rescue operation being carried out at Silkyara Tunnel, and these are different visuals of groundwork happening near Silkyara Tunnel. For the past 17 days, we have been hearing about groundwork for drilling, groundwork for vertical drilling, horizontal drilling, parallel drilling. But right now, the roads are being fixed. You can see cranes are actually moving the debris, which is to broaden the road. That debris is being taken away. You have the police officials movement out here. They are being briefed. The NDRF, the SDRF is on standby. And all this groundwork which is being done outside Silkyara Tunnel is happening because the very fact, again right there you can see how the debris is being brought, the soil is being brought on the Kacha Sadak, and this is being brought to widen the road, to fill the potholes which are there, and white markings are being done for the movement of cars. What is expected is that when these 41 workers who have been trapped inside the Silkyara Tunnel for the past 17 days, when they come out, first medical examination will be done here. After that, they will be taken to Chinsiali Salt, which is 45 minutes, 50 minutes away from here, and that would mean that movement of around 30 to 40 vehicles from here. Green corridor has been already fixed for the movement of those workers, and now the groundwork, the road is being broadened, the markings are being done, the police is being briefed, and all this is happening because a ray of hope was there this morning, and that was because of the rat miners technique workers who went inside the rescue tunnel last evening from 46 meters of distance. They have already covered 52 meters of distance, and it is expected that by the end of the day we could see a breakthrough, the big breakthrough that the entire country is waiting for. That is the authorities reaching to those 41 workers who are trapped inside the Silkyara Tunnel, and after that the process of rescuing them out, taking them to the hospital, medical examination will begin. With video journalist Mridul, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Uttarkashi. नहीं, कोई बात नहीं, बारिश दिखाएंगे ना, बारिश हो रही है, आ रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो हम जरा गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं। दरअसल 5 मीटर की लंबाई बहुत ज़्यादा है नहीं। जीपीआर को जब डेटा लेना था तब 10 मीटर का मलबा था और संभावना थी उसमें कि कुछ हार्ड स्ट्रक्चर जिसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा वो हो। अब 5 मीटर इसलिए क्योंकि पहले जो 3 मीटर खोदा गया है शुरू से उसमें कुछ भी नहीं मिला, पत्थर आए काट दिया गया, मिट्टी बहुत निकालना आसान और उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। अब अगले 5 मीटर में बस ये अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि जब भी मलबा गिरता है, एक जगह कोई हिस्सा गिरा उसके बाद वो नैरो शेप हो जाता है, एरोडायनामिक शेप हो जाता है, यानी जिस तरह ढलान पर गिरता है आगे दरअसल वो सरफेस है और ऐसे में पूरी संभावना है कि जो हार्ड रॉक था वो बीच में था, जो भी लोहा कंक्रीट था। हम दरअसल इस समय अंदर इसलिए बैठे हुए हैं कि बाहर बारिश होने लगी है। हालांकि इस बारिश का असर रेस्क्यू अभियान पर नहीं चलेगा क्योंकि हर कोई सुरंग में है। आपको बाहर की एक बार तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करता हूं गाड़ी के अंदर से ही कि तमाम जो रेस्क्यूअर्स हैं या बाकी जो टीमें हैं वो जहां तहां जगह लेकर के बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरंग के भीतर काम लगातार चल रहा है इस अभियान का। बारिश का कम से कम इस पूरे रेस्क्यू मिशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि आगे का हिस्सा इंक्लाइन हो सकता है, जहां पर मलबा गिरा है वो
एक ढलाव का हिस्सा हो सकता है। और ये माना गया था कि चूंकि जो हिस्सा टूटा है वो बीचों बीच टूटा है और अब आप बीच के हिस्से को पार कर चुके हैं तो आगे जो स्लोप है उसमें कच्ची मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात, उन मजदूरों से भी बातचीत इस बीच होती रही थी, वो भी जो समझ पा रहे थे और चूंकि वो टनल में काम करते हैं, मिट्टी को, मलबे को, पत्थर को समझते हैं, उन्होंने भी बताया था कि बहुत ज़्यादा इस तरफ मान लीजिए अगर कोई लोहा गिरा है तो उसकी कोई हिस्सा बाहर निकलना चाहिए। तो उन्होंने भी बताया था कि ऐसी कोई फिलहाल दिक्कत उस तरफ नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए अब ये उम्मीद बंधी है कि दरअसल 3 दिन पहले जो हम मान के चल रहे थे 24 तारीख को कि 9 बजे रात तक रेस्क्यू हो जाएगा, आज ये संभावना अब जताई जा रही है। और वो इसलिए तमाम जो रेस्क्यूअर्स होंगे जो अंदर जाएंगे उनकी तैयारी एकदम पूरी है, वो एकदम आखिरी मिनट के लिए तैयार हैं, एक्शन के लिए तैयार हैं। जहां मिट्टी काटी जा रही है वहां स्केप टनल के लिए जो रेस्क्यूअर काम कर रहे हैं वहां कंक्रीट ब्लॉक लगातार भेजे जा रहे हैं कि जैसे आगे बढ़े उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए। और इन तैयारियों को देख करके लग रहा है कि आज वो आश्वस्त हैं, उम्मीद काफ़ी मजबूत है, हौसला भी मजबूत है, इरादा भी मजबूत है कि कुछ घंटों की बात है, कुछ घंटों की चुनौतियां हैं, लेकिन आप समझिए कि भारी भरकम मशीनें जहां फेल हुई हैं, कुछ लोग स्किल्ड वर्कर कन्वेंशनल मशीन से उसे सफल कर पाने में कामयाब हो रहे हैं। शॉर्ट्स की ओर जाओ, शॉर्ट्स की ओर जाओ, शॉर्ट्स की शॉर्ट्स कुछ आएगा ये पहले नहीं नहीं, उधर ही घुमा, कैमरा घुमा, बारिश है तो बचू पहले कैमरा अरे घुमा। भीग रहा है कब कैमरा बारिश है तो बचू करो अंदर वायर इसको कैसे करते हैं देखो खोलते निकाल दी लेकिन अब बारिश कम हुई क्या? बारिश खत्म हुई नहीं, अभी हो रही है, तेज हो रही है। इस बारिश का मतलब है शाम को बर्फ गिरेगी।
है कितनी दूर? ऊपर जाओगे किसी काम से? अगर जाओगे तो ऐसे मारो दौड़ाना नहीं अच्छा लगता। अगर जाओगे तो चाहिए तो हरा वाला बैग है ना मेरा पीछे वाली सीट पे रखा है, उसमें एक चार्जर का अडाप्टर होगा, वो तो खैर चार्जर का लोड नहीं है। और अटैची में एक हरे रंग की जैकेट होगी मिलिट्री वाली, किस साइड किसी एक साइड में हरे रंग की है प्लास्टिक जैसी, वो दे दें। आ रही है ठीक है। वैसे आज तुम सबकी जमानत हो जाएगी आज यहाँ से, आज सबकी जमानत हो जाएगी भगवान ने चाहा तो। हाँ हाँ कहाँ जाना है? हाँ ले जाओ, क्या दिक्कत है? जैकेट दे जाओ, उसके बाद तेल लेके चला ज़्यादा बढ़िया है। अगर यहाँ से नहीं नहीं यहाँ से लग जाएगा हवा में। हरे रंग का है प्लास्टिक जैसा, फौजी वाला नहीं दिखता वही वाला, किसी एक साइड नीचे बाकायदा तय करके रखा, वही दे दो बस। जैकेट मिल जाएगी, वो पैजामा है ना उसको डाल देना फिर बैग में, यहाँ रखा है ना फट ना जाए। कहाँ है पैजामा, कहाँ गया? हाँ उसको फोल्ड करके डाल देना, जैकेट में देना। क्या हाँ 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बैग भी लाऊं? ट्राइपॉड बैग नहीं नहीं कांस्टेंट फ्रेम नहीं देना है आज, नागिन डांस पूरा, नागिन डांस हो रहा है, सब कर रहे हैं ना, सब नागिन डांस पूरा। आखिरी मोमेंट है ना, और कोई खबर नहीं चल रहा और मोमेंटम में चल रहा है। एक बार देखो कहाँ तक मूव कर सकते, सुनो फ्रेम यहाँ से लेकर के पूरा आना, ये एरिया, ये टेरेन और ये पूरा, इतना पूरा वॉक टेरेन रहेगा। अभी वो तैयारी कर रहे हैं उसको, हाय हाय ये डाला सही तरीका, जुगाड़ उसको बांधने से कुछ नहीं होगा। हो जाएगा हो जाएगा। मैं नहीं बांध रहा ऐसे, मैं पकड़ूंगा, मजाक कर रहा हूँ। ये पकड़ लो भाई, वायर वायर थोड़ी पकड़ूंगा। पकड़ किसने है? पकड़ किसने है? वो वेट करता है यार, वेट करता है। साला सीढ़ी बना रहे मंदिर में जाने के लिए। पाइप में घुसा था अंदर, कितना रह गया वहाँ तो भी 4 बाकी है, 4 मीटर। कब तक का है उसका, कितना टाइम? इधर मंदिर बना दिया, मान के चलो 2-2:30 बजे तक। चौदह 24 25 26 27 28।
ठंड बढ़ गई यार अचानक से। ठीक है ठीक है। हाँ तो टॉप टॉप एंगल तो है ही। सौरभ ठीक है। हाँ हाँ कैमरामैन साइन है। आज पुलिस वाला नहीं है क्या वहाँ? वर्टिकल काम रुक गया। आरनौ ये आरनौल डिक मरवाएगा सब।
उस मिट्टी का जो डेबरा है, चट्टान उधर तक जाएंगे, उधर से आ करके फिर ये वाले हिस्से पर आएंगे। आज अगर उम्मीद टूटी ना, आउटरीच हो जाएगा बहुत बड़ा। आज आखिरी वो क्यों मैं आपको बताता हूँ, आपको डेमो से दिखाता हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि ऐसी एक उम्मीद 24 तारीख को भी बंधी थी, जब लगा कि बस अब ब्रेक थ्रू मिला है, मशीन में 10 मीटर की बारी और आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए दरअसल लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, नहीं बताना चाहते समय सीमा। लेकिन हाँ, जब 5 मीटर बचा था, 2 घंटे हो चुके, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब तक कुछ इंच दूरी होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको अगर ये समझना होगा तो आप ये समझिए कि सुरंग के इस मुहाने पर आप हैं, इसके अंदर कहीं पर खुदाई चल रही है, इस तरह का मलबा है, मैं इसको सरिये से भी खोद सकता हूं। अगर पत्थर है तो उनके पास हिल्ट्री ड्रिलर मशीन है, आप उससे काट सकते हैं। लेकिन मानिए इस तरह ड्रिलिंग करते हुए सुरंग के नीचे आप एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जहां इस तरह तारों का जाल है, जंजाल है। ये जब आएगा, और ये अभी आप देख रहे हैं कि ये पतला जाल, ये तो हमने डेमो के लिए लगाया है। दरअसल अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है सुरंग में, उसकी छतों की मरम्मत के लिए और मजबूती के लिए इस तरह मतलब 35 से 50 मिलीमीटर तक की छड़ों का इस्तेमाल होता है। इसको काटना मुश्किल होता है। आप गैस कटर इस्तेमाल, प्लाज्मा कटर अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। गैस कटर से इसको काटेंगे, काट के निकालेंगे, साफ करेंगे, रास्ते में फिर अगर बड़ा बोल्डर है। लेकिन अच्छी खबर क्यों है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई चीज पहाड़ का हिस्सा टूटता है, यहां पर गिरा, ये बीचों बीच का हिस्सा सबसे ज्यादा चुनौती है। लेकिन जब 5 मीटर है तो ये अंदाजा लगाया रहे, चूंकि मलबा हमेशा स्लोप बनाएगा, ये इस तरह के स्लोप में होगा और आखिरी जो दूरी है वो स्लोप में होगी। यानी यहां से जब वो खुदाई होगी, इस पार जाने के हिस्से में भारी मलबा, पत्थर हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, कंक्रीट होगा, लेकिन लोहे का हिस्सा बीचों बीच रह गया आखिरी 10 मीटर में। और अब आखिरी 5 में दरअसल आगे इस तरह का स्लोप होगा तो वहां नुकसान नहीं होगा। इन संभावनाओं को देखते हुए जो स्टैंडर्ड फिजिक्स है उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि दरअसल चुनौती नहीं होगी। लेकिन इस बीच हो क्या रहा है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अंदर विज्ञान, तकनीक, लोगों की मेहनत काम कर रही है, तो सुरंग के मुहाने के ऊपर दरअसल आस्था का भी सहारा है। यहाँ पर जब उन्होंने प्रतिमा बनाई, मंदिर बनाया, और अब जो है ध्वजा लगा करके दरअसल पूजा पाठ प्रार्थना भी हो रही है। और वो इसलिए कि सकुशल 41 वो मजदूर निकल सके, स्थानीय लोग जो है वो पहुंचे हैं। उसी के बगल में श्रम जो तैयारी है वो तकनीक के जरिए है। आप जिन लोगों को देख रहे हैं येलो कैप में, उसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग हैं। वहाँ नीचे स्ट्रेचर है, वहाँ व्हील है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, पाइप है, डॉक्टर्स की टीम है। ये तैयारियां आखिरी मोड़ पर है, एम्बुलेंस स्टैंड बाई पर है। सड़कों को भी एक बार आप ये समझिए कि 16 दिनों तक जितने भारी भरकम पुर्जे असलहे थे, उससे आप 50 मीटर तक ही पहुंच पाए और सब धराशायी हो गई। आज जो काम हो रहा है, अब मान लीजिए मेरे पास ये जाल है लोहे का, हालांकि ये बहुत पतला सरिया है। ये पूरा हिस्सा ऐसे समझिए कि पहाड़ के हिस्से से गिर गया सुरंग पर। जब मशीन इसके अंदर से घुसी, ब्लेड इसके अंदर से घुसे, इसको तोड़ दिया और उसने पूरे ब्लेड को खराब कर दिया। इस हिस्से का जो बचा हुआ हिस्सा था, जिसकी मोटाई दरअसल ये जो आयरन रॉड है इस आकार का था, इसको काटने के लिए पहले प्लाज्मा कटर लगाया गया। लेकिन सुरंग के उस हिस्से में
3 मीटर और रह गया है। इसकी लंबाई 1 मीटर वो है, इंची टेप है, इंची टेप है। 3.5 होता है 1 मीटर, 1 मीटर नहीं नहीं, गाड़ी में है इंची टेप, किसी की गाड़ी में। अरे मीटर ना इनके पास होगा, इनके टूल में होगा। ज़्यादा 1 मीटर से 1 फीट, गलत ले आए, लेकिन कोई बात नहीं। 2 फीट, हरे रंग का नहीं मिला। 3 फीट। हाँ 1 मीटर हाँ? वैसी दिखाई नहीं दी, केवल कैप दिखाई दिया वैसे। अरे तो सामान निकालोगे उसके नीचे मिलेगा ना, कोई बात नहीं। ये अच्छा किया ले आए, बैग्स बंद कर दिए थे ना, मेरा वॉलेट। हाँ चलो, जो ले आए अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और ये कैमरा किसी वाला ऐसे दिखाई दिए। अरे ये उठा लाया। हर देखो, हर जगह के कपड़े अलग। ये लाता हूँ एंकरिंग के लिए क्योंकि ब्लू कलर है, स्टैंडर्ड दिखता है और कैमरे के सामने सबसे आइडियल कलर है, इसलिए ये इसलिए इस्तेमाल होता है। चल आज इसकी लंबाई है ना 3 मीटर, 1 मीटर है। अब 1 मीटर की 3 मीटर की लंबाई हमें नापनी। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, मार लेता हूँ। 1 2 ये 3, बस। चल ठीक है, देखिए ना दोनों मार्क, पीछे हो जाओ, दोनों मार्क को फॉलो करेंगे। मीटर है, पट्टी, इंची टेप। आवाज गई। ऑडियो नहीं आ रहा है। इंची टेप नहीं होगा मेजरमेंट डिस्टेंस नापने के लिए, 3 मीटर एक्यूरेट चाहिए। अच्छा, अंदर लोहा। ऑडियो चली गई, ऑडियो चला गया था, ऑडियो चला गया था। अब आया, अब आया ऑडियो। आपके पास हिल्ट्री ड्रिलर है क्या? हिल्ट्री ड्रिलर, हेक्सा ब्लेड जिससे मेटल वेटल काटते हैं। मैं सब दिखा लेता। आओ बात करोगे, आओ। जब इधर से शुरू करना होगा तो उल्टी दिशा में उस तरफ चले। आ रही आ रही आ रही है।
बिल्कुल, हालाँकि मुझे ये 24 तारीख की भी याद दिला देता है कि कैसी तैयारियाँ आखिरी पड़ाव पे थी, लेकिन उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए और जब सिर्फ 3 मीटर की दूरी है, 3 मीटर कितना होता है? मैंने आपके लिए दरअसल वो भी यहाँ नाप के रखा हुआ है। ये समझिए एक मुहाना है, जहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ से लेकर के कदमों के हिसाब से गिनेंगे तो कुछ ही कदम में आप 3 मीटर की दूरी पैदा कर पाते हैं। ये मैंने निशान लगा रखा, बस इतनी सी दूरी है, यहाँ से लेकर के इस मार्ग तक ये 3 मीटर दूरी है। लेकिन इस 3 मीटर की दूरी में सिर्फ पत्थर नहीं होंगे, सिर्फ मिट्टी नहीं होगी, लेकिन एक उम्मीद ये है चूंकि आखिरी का हिस्सा इंक्लाइन हो सकता है, वहाँ ढलाव होगा, तो वहाँ भारी भरकम मेटल नहीं मिलना चाहिए और अगर मिल जाता है तो ये मजदूर इतने कुशल हैं कारीगर जो उसे काट सकते हैं, जो रैट माइनर्स होते हैं। लेकिन हाँ, एक्टिविटीज आपको दिखाते हैं, देखिए एक तरफ विज्ञान काम कर रहा है, दूसरी तरफ पूजा पाठ भी हो रही है और तीसरी तरफ तैयारी हो रही है सड़कों को समतल करने की, क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ पर लाना है। ये एम्बुलेंस करेंगे क्या? दरअसल उत्तरकाशी जिला अस्पताल और सिल्यानी सौड़ जो इलाका है वहाँ पर अस्पताल स्टैंड बाई है। 17 दिन एक सुरंग में रहने के बाद आप किस हाल में होंगे, कम से कम चिकित्सा की जरूरत हो सकती है, परामर्श की जरूरत हो सकती है।
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ये शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ओके वहां से आउट करते मुझ पर आना, अभी चलने देना। वही उसी पर रखो, उसी पर रखो, उसी पर रखो। फ्रेम काटा है तुम्हारा। हाँ रिकॉर्ड कर लेना भाई जरूर। विंडो में काट रखा है शॉट तुम्हारा। ठीक है ठीक है ठीक है। अमेरिकन नहीं है ये, है स्लोवेनियन, स्लोवेनिया का है। आर्नोल्डिक्स यही, हाँ आर्नोल्डिक्स है भाई। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगे। रास्ता बनाने वाला एक फोकस रहेगा और दो चीज फोकस में रखना। एम्बुलेंस के लिए रास्ता, ये संकेत ये देते हैं कि वो शुभ घड़ी शायद आज ही हो और मंगलवार को यहाँ पर भी मंगल हो जाएगा उन 41 मजदूरों का और साथ ही इसमें लगे उन सैकड़ों राहत बचाव कर्मियों का भी। दरअसल जब ये हादसा हुआ था और पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है, तब मुझे पहली बार पता चला कि प्रोफेसर आर्नोल्डिक जो कि स्लोवेनिया में थे उस समय, उनको यहाँ बुलाया जा रहा है। NHIDLC कोशिश कर रही थी, वहाँ से मुझे लगातार कोई एक वादा करते रहे कि किसी भी हाल में मैं उन्हें निकाल कर लाऊंगा। और उनकी आस्था यहाँ आकर के मुझे उनके बारे में तब पता चला जब हर
दिन वो जा करके, जिस दिन मंदिर अंदर लगाया गया, स्थानीय लोगों ने कहा यहाँ मंदिर था उसे तोड़ा गया था, फिर उन्होंने अंदर से जो मंदिर था उसे लाया गया, काली माँ का मंदिर एक स्थापित किया गया। तो प्रोफेसर आर्नोल्डिक्स ने मुझे ये भी कहा था कि देखिए मेरी काली से एक डील हुई है, और वो बहुत बड़े, देखिए उनकी बहुत आस्था है। हर दिन सुबह सुरंग में जाने से लेकर बाहर आने तक वो हर बार इसी तरह ऊपर जाते हैं, पूजा करते हैं, और लगभग 25 मिनट हो चुके हैं वो उस मंदिर के नीचे ही बैठे हुए हैं पुजारी के साथ, क्योंकि अब राहत बचाव कार्य अपने आखिरी चरण पे है। तो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं कि और ये कैसे साइंस यानी विज्ञान का भी सहारा, आस्था का भी सहारा, और जिन मशीनों को आप देख रहे हैं उनके आगे ये अब ये काम कर रही हैं कि सुरंग के मुहाने से लेकर के बाहर की जो सड़क है, कनेक्टिविटी सड़क है, यहाँ के मलबा को निकाल करके सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए, क्योंकि 41 एम्बुलेंस हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और उन 41 एम्बुलेंस को दरअसल आसानी से सुरंग के भीतर भेजा जाए और टनल से बाहर निकाला जाए, ताकि जो भी प्राइमरी चिकित्सा केंद्र है जहाँ मजदूरों को ले जाने की तैयारी है उसके बीच में कोई अड़चन बाधा ना आए। लेकिन ये तस्वीरें इतनी दिलचस्प हैं कि किस तरह एक शख्स जिसके पास 13 से 14 देशों पे टेक्निकल एक्सपर्टीज, उनके तमाम लोगों को वो नियंत्रित करते हैं, प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के, यहाँ आने के बाद उनकी आस्था भी दिखाई पड़ती है। और उसी के ठीक बगल में स्थानीय जो लोग हैं वो ऊपर जो उन्होंने मंदिर की स्थापना कर रहे हैं वहाँ के लिए सीढ़ी भी बना रहे हैं, रास्ता भी बना रहे हैं, ताकि बाकी लोग, जैसे सीएम गए देखने के लिए, वीके सिंह भी गए वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, और जितने लोग हैं हर कोई जा रहा है। ठीक कैमरा जैसे आपको बगल में जाएगा तो आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन की एक और तस्वीर दिखाई पड़ती है, वो है उन बचाव कर्मियों की, उन देवदूतों की जिन्हें एनडीआरएफ कहा जाता है। हर मुश्किल ऑपरेशन जब इवैक्यूएशन होता है, रेस्क्यू होता है, उसमें वो कारगर होते हैं। यानी एक तरफ पहुंचने की कोशिश विशेषज्ञों द्वारा, कुशल कारीगरों द्वारा, दूसरी तरफ आस्था का सहारा, तो तीसरी ओर तैयारी फटाफट टनल के अंदर घुसने की। येलो शर्ट में आप टी शर्ट में देख रहे हैं वो एसडीआरएफ हैं, उनके जो पीछे नारंगी कपड़ों में हैं वो एनडीआरएफ के देवदूत हैं। ये तुरंत अपना सारा सामान लेकर के तैयारियों के सुरंग के भीतर जाएंगे। आपको फिर एक बार सुरंग के मुहाने पर लेकर के आते हैं। पुजारी लगातार वहां पूजा पाठ कर रहे हैं, और 25 मिनट से ज़्यादा हो गया है। प्रोफेसर आर्नोल्डिक्स, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जो माइन्यूट माइनिंग है, जी ये कहाँ चला गया आमिर? मैं साला बैकअप टीम हूँ, मुझे बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बंद है कैमरा? नहीं नहीं, ऑन है। ऑडियो देखना, और अच्छा ठीक 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 ठीक। आज सौरभ कहाँ है? यादव जी, यादव जी आइए। स्टैंड बाय।
देखिए, चूंकि दूरी 3 मीटर की है और अर्पिता इसको स्ट्रक्चर में समझिए, पहाड़ का मलबा बीच के हिस्से में कैविटी बनाते हुए ऐसे गिर गया। जिस हिस्से पर गिरा है आप उसकी गहराई पार कर चुके, यानी पीक ऑफ जो डायमेंशन होता है, मोटाई होती है, आप उसे पार कर चुके हैं। अब अगर आखिरी 3 मीटर है, मसलन ये समझिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इस छोर से लेकर के, दरअसल इस छोर तक मैंने जो एक आपके लिए हिस्सा तैयार किया है, ये बताता है 3 मीटर। अब ये 3 मीटर है, लेकिन पूरी दूरी 60 मीटर की थी, यानी लंबा हिस्सा जो था वो तो कट गया, और आखिरी 3 मीटर का ढांचा वो कैसा हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। जो गणित लगाया गया, जो फिजिक्स और जो आधार है खासकर मलबे गिरने का, उस आधार पर अगर हम इसको देखते हैं तो दरअसल आखिरी 3 मीटर का ढांचा कैसे होगा। आप ये देखिए कि मोटाई है, इस सरफेस को आपने 60 मीटर, लगभग 50 मीटर, 52 मीटर, 53 मीटर काट लिया। आखिरी जो सरफेस है वो दरअसल ढलाव का हिस्सा है, जहां से मलबा खत्म होता है, और जो उस पार मजदूर है वो वहां से 3 से 4 मीटर की दूरी पर है। जब वो आगे आते हैं तो उनसे भी तो बात की जा रही है, उनसे ये समझा गया कि उस पार वो क्या क्या देख पा रहे हैं। तो जो डायनेमिक्स उन्होंने वहां देखे हैं, उसे रॉक स्ट्रक्चर की, पत्थर की, मलबे की, उनके जरिए जो जानकारी मिली वो ये समझ रहे हैं कि शायद आखिरी 3 मीटर में ऐसा हिस्सा ना हो, यानी कि इस तरह के आकार। अब देखिए, जब पत्थर कोई सरिया टूटेगा कंस्ट्रक्शन का, तो 1-2 मीटर का तो नहीं होगा, अगर वो किसी भी दिशा में गिरे तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा होगी, यानी पीक जो था उसका वो आप हिस्सा पार कर चुके हैं। और अगर ये हिस्सा आता है, देखिए समय जरूर लग सकता है, लेकिन अब इसमें मशीन फंसने की दिक्कत नहीं है, मशीन का इस्तेमाल हो नहीं रहा है। इसको अगर मान लीजिए कि ये 35 मीटर भी है, इसको काटना आसान है, आपके पास गैस कटर है, जो विशेषज्ञ हैं उनके पास ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड्स हैं, उसके जरिए इसको जो काटना है वो बेहद आसान होगा। इसलिए मैं ये मान चलता हूं कि अगर हमें समय लगता है, ये इस पाइप को भी काट सकते हैं, और साथ ही अगर ये इतनी मोटी सरिया है इसको भी काट सकते हैं, गला सकते हैं, तो घंटे लग सकते हैं, 2 घंटे 6 घंटे लग सकते हैं। लेकिन अब ऐसी कोई बाधा दिखाई नहीं पड़ती, खासकर इस पहाड़ के डायनेमिक्स को, अंदर के उस हिस्से को, उस मलबे को देखते हुए। जो समझ मैं सामने ला सकता हूं आपके लिए सामान्य भाषा में, उसके मुताबिक समय बढ़ सकता है, कुछ घंटे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसी मुश्किल अब नहीं आती कि शायद पूरा दिन लगे या समय और लग जाए या फिर पूरा ऑपरेशन रोकना पड़े। और इसीलिए आज मैं भी बेहद आश्वस्त हूं, और मेरी भी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि अगले कुछ घंटों में हम उन्हें बाहर देख सकते हैं। और चूंकि ऐसा होगा, इसीलिए हर तरह की तैयारियां, रेस्क्यू जैसे पूरा होगा तो इवैक्यूएशन की तैयारी हम लगातार दिखाते रहे कि आखिर वो कैसे होगा। वो इवैक्यूएशन तैयार है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है किस मामले में, अंदर जो है तापमान, सुरंग के भीतर हवा तो है नहीं ऐसी, तो वहां पर गर्मी है, वो काफ़ी वार्म है, लेकिन बाहर आज बारिश हुई अब से थोड़ी देर पहले, देखिए मुझे भी डबल लेयर पहनने पड़े, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, यानी तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। वो बाहर आएंगे तो कहीं ठंड न लगे, उसके लिए ब्लैंकेट, लेयर, जैकेट, ये व्यवस्था की गई, और तुन्हें तुरंत एम्बुलेंस में डाल दिया जाएगा। और एक जानकारी दे दें, किसी की तबीयत फिलहाल खराब नहीं है, हर कोई स्वस्थ है।
यार, ये नहीं किया क्या वो? क्रैक जैक, हाँ लाओ। वाह, चाय के साथ होता तो चाय है खत्म। बंद करो। चेक ऑडियो मिल रहा है। ये जनरेटर के बगल में।
And isn't it so strange, Nabila, that a heavy machineries, a globally known auger machine failed. Every technology is failed, and end of the day, it is the skilled laborers of India, skilled workers, using the conventional method and their conventional equipments, and they are at the end of the breakthrough. Any moment we could hear the good news as we speak, nearly 55-meter drilling has already been completed, and because of these conventional method, and imagine they do not have such open space in extremely narrow pipe, 800 diameter pipe, 3 workers at a time, not only drilling, not only cutting the metal debris, not only clearing the muck, but also cutting down the boulders, heavy rocks, and then clearing out the entire muck, and then making the pipe safe not only for their work, but also ensuring the pipe reaches further. So it just matter of few meters, and how much exactly 3 meters could be. I've just placed a mark here from this point to just taking few steps, this another point. Now this is 3 meter, all they have to do. It looks very easier, but it is matter of hours, because however, why they are so sure and why it looks like that this time there will be no such obstruction, because the physics of the structure when it falls down, clearly, suppose this was the highest surface with this metal structure, when the cavity formed inside the tunnel, this entire collapse this way. The length could be potentially 40 to 45 meters as far as depth of the debris is concerned. Now clearing, this is exactly where the auger machine blades, the harrow blades were failed. Now these rat miners who are skilled to work in narrow passages, extremely narrow passages, they cleared this entire structure, cut down all the metal sheets, and remember this is just an example. Inside, the metal size, the rod, the size, the thickness was nearly this, 35 to 55 millimeters. Now cutting down they have reached to a point where exactly they do not find any more metallic structure. Now as far as next 3 to 5 meter is concerned, given the dynamics of the gravity that worked when the cavity was formed, when the entire debris collapsed inside the tunnel, the next 3 to 5 meter structure could be a slopey one or the inclining one. Now suppose this is the surface, they have cleared nearly this area. Now this 3 to 5 meter is exactly the inclining and very slope, and this is coming from the data from the workers, those who are already inside the tunnel. They are the workers, they know the tunnel very well, they know the construction thing, they know the construction material, they know the debris. They have been saying that because of this slope, potentially once the drilling start this side, maximum it could be a giant size boulder with the thickness of 2 and 2.5 meters. But since they have also been doing certain materials, certain studies in the last few days, their assessment is that next 3 to 4 meter there shouldn't be any mega hurdle. But even if there is a muck comes like a big boulder, a rock or a stone something, or a metallic structure, it will be easy for them to cut down with the help of conventional tool, be it the hexa blades, be it the gas cutters. So it may take time to cut down these kind of metallic structures, even if there is a net. So that could only potentially take a little more time, but it will be feasible and it will be easy for them too. But however, there are 11 such persons from the expert who have come from different company, and they are literally risking their life in the narrow passages with help of the other authorities. But the way they have worked is very impressive. From last evening, again starting this morning, cutting down inch by inch, centimeter by centimeter, and then making roads to insert the pipe for nearly 55 to 57 meters is indeed a very impressive and courageous work. These people have shown exemplary example here. They're sitting here that how the conventional method, skilled laborers of India have made what the heavy giant mega globally known machines couldn't do. Nabila.
हाँ हाँ, ऐसा क्या है फिर उसमें तो मैं आ रही है। कौन है? 5 बजे तक बाहर। 5 बजे, 1 सवा 1 हो गए। तुक्का मत मारा करो भगुना जी, वो इसी को कहते हो ओवर। एक क्या, 1 सवा 1 हो गए। पीसी के आसार नहीं लग रहे हैं। स्टैंड बाय। Chris Cooper. Well, you heard Chris Cooper. He's a consultant, tunneling consultant for the SVJNL and RVNL. RVNL is exactly the company which is making the Rishikesh to Karnaprayag rail line. So he is an expert in the tunneling project, and we know the international experts were called here. And as we speak, Nabila, of course, there no one will be give you exact timeline because they have seen previously given the timeline exactly the operation had to be halted. So this is exactly the level of the excitement that it was on 24th. But as we speak, right behind me, what you see right in the front portal of the Silkyara tunnel, besides the science and technology and the endless efforts being done by the experts, there you see the international space, underground space and tunneling president Arnold Dix, the man who has been here, guiding and advising the team of drillers here, the team of rescuers here, and ever since he arrived, that's a different character that I've seen of Arnold Dix. It's been more than 40 minutes. He's offering prayer with the priest right exactly on the front portal, sitting near. And I remember when he said that I made a deal with Kali, and somehow I'll make sure that I get all these 41 trapped workers safely. Of course, not revealing much details technically about the operations and execution, but he has been saying one day that before Christmas they'll be out. And when I said Christmas is too far, it's on, it will be in the end of the December, I said the day they comes out, it will be a Christmas, even for those workers and everyone. And of course, it won't be less than a Diwali the day they all step out. So now the technically understand it's just a matter of 3 meters, and this is the safe parameter that they have decided that this could be between 3 to 5. Right after drilling the 3 meters, there will be a breakthrough, but it won't be immediate impacting on the evacuation because they need to insert a pipe.
स्टैंड बाय। अरे एक मुझे देख, मुझे तो जल्दी से खत्म से। पेट्रोल लेके आ गया, वो डीजल लेके आ गया, डीजल लेके आया ऊपर से, डीजल लेके आया ड्राइवर वापस। पता करो बैटरी मुझसे। तो पूछो उससे, तुम बात करो, मैं थोड़ी बात करूंगा, पूछो उससे। कैमरे का बैटरी जेब में नहीं रखते एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कैसे रखूँ, आपने बोला अभी आ जाना। हाँ तो अभी आना, तो बैटरी रखने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड। तो कौन सा कैमरामैन है जो बिना एक्स्ट्रा बैकअप के नीचे जाता है? बैकअप ट्राइपो, अब तो मूवमेंट शूट है, लेकिन बैकअप बैटरी कौन रखेगा जेब में? कैमरामैन तुम हो कि मैं हूँ? आ रही है, मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ पीसी, मैं सुन रहा हूँ पीसी, सुन रहा हूँ। स्टैंड बाय। लाइट चल रही। ये क्या है? ये वाला ये जो रख रहे हैं चॉकलेट, चॉकलेट क्या है? हटिया, हटिया है। मेरा 5 बजे तक सब एकाध दो को बाहर निकाल लेंगे। नहीं, आपका कितने बजे चलेगा? क्या तो चल ही रहे ना आपको? अब और कोई एक वो चाहिए ना मुझे। इसको, इसके लिए तुम्हें असाइनमेंट बात करना पड़ता है। वो मुझे फ्री कराएंगे, मैं ले लूँगा, मैं तो कभी दे दूँगा।
अभी दे दूं। अब क्या बैक टू बैक है? अब और कोई खबर नहीं है टीवी पे, दोनों चैनल पे यही चल रहा है। बैक टू बैक काम तो सो काम में जल्दी ले जाना पेट्रोल बैटरी है नहीं मेरे को बैटरी है निकाल हैं जल्दी है आगे फोन कर स्टैंड बाय, शॉट्स रिकॉर्ड करो ये। Well, looking at the action that what I see here, everything is moving so rapidly. There you see the SDRF worker. These are actually not the stretcher, but along with the beds also they are taking inside. And perhaps this is the last minute preparations as and when the workers are brought. Of course, the medical consultation will be the first thing to do. And that's the standard protocol because they have been living literally in anxiety for 17 days in a tunnel. The moment they are brought out one after one. So for the medical consultation, they are preparing certain beds 10 to 12. So of course after only consultation it will be. Now you see the ambulances are moving now. You see these ambulances are also being dispatched inside the tunnel. So 3 to 4 ambulances at a time will be sent inside, and once the rescue, the evacuation, not the rescue because the operation is underway, once the evacuation is done, they will be immediately, there are physio doctors, there are internal medicine experts, the chief medical officer of the district and all medical experts who are inside. Once they are evacuated, they will be asked about the situation. Their blood pressure and everything will be checked as and when, and whatever will be required as per their health condition, they will be dispatched to different places, including the local hospital and the special health facilities that have been made. So you see things are moving very rapidly, and right behind the ambulance there you see the men, the NDRF personnel. There you see the doctors. These are the special doctors team from the NDRF. You see they're carrying a lot of equipments. And subsequently the NDRF team have been now briefed about the operation. You heard the experts saying, the secretary saying there are standard operative procedures, and those operative procedures are that the personals from the NDRF who will be entering inside the tunnel will be in 6 numbers. So far as we have been told, they will be carrying the stretcher which are equipped with wheels to make a smooth slide inside the narrow gauge pipe in the 800 diameter of the pipe. Along with that, they will be carrying ropes, they will be carrying LED strip lights, and once these people will be entering in the tunnel, they will be pasting all the strip LED lights inside the tunnel to ensure adequate light, because inside there could be a claustrophobic kind of situation, and I have been trying, entering through these pipe for 6 meters, so that's really very difficult to not only carrying operation, but also during the evacuation, it may not be really so easy for these trapped workers once they are being taken through the 55, 50, 50 or the 60 meter of this narrow pipes. So all the safety mechanism, proper light, proper ventilation and the oxygen supply, the SCBA mask will also be going inside, and as we speak it looks like they are very close to the breakthrough, and had it not happened probably this kind of movement you would not see. So I count the number of ambulances, there are 3, one more I see is entering inside, the SDRF personnel with the beds have been sent inside, the medical team is inside, and at the front portal already we see the SDRF and other personnels who are put on standby. So this looks like a very last minute of the massive breakthrough on the 17th day. What I hear that it's just a matter of minutes if not hours that the final breakthrough will be achieved, but this is last minute of the preparation which is essentially required. Again I see this SDRF personnel, you'll see in a few seconds.
they're carrying beds inside, because that's what I was told about the standard operative procedures by the experts, that immediately after evacuation, because once the NDRF personnel enter inside, they'll be speaking to them about the condition, and then they will decide, because it will require one after another, so they will send one by one everyone, and on the stretcher, it is likely to take nearly 1.5 minutes for each trapped workers to evacuate them out of the tunnel. In the meanwhile, Professor Arnold is, you see, still sitting near the temple with the priest, and everyone, while the technology is being worked, while the endless efforts are being done, there are people also praying, not here only, not in Uttarkashi, not in Uttarakhand, but across the country, who are watching this entire rescue operation very closely. So now, once, as per the SOP, they'll be briefed, and after evacuation, the team of health experts who will be here, they'll be talking to them about their health condition, and whatever is required, whether require special health facilities, they'll be sent there. The Uttarkashi district hospital is put on standby. Subsequently, 35 kilometers away from this place, Chinyali Sort, there are special health facility has also been created. Now, another factor is, because inside the tunnel across the debris, there is a temperature is quite warm, and the moment they are exposed to out of the debris, there will be immediate change in the weather, and literally it will vary from 12 to 13 degree. As we speak, the temperature is nearly here 10 to 11 degree. But for now, you see, even the NDRF personnel are also equipping their ambulance with the essential requirement to deal with any possible health crisis of these workers, and be it the oxygen machine and everything that is required for these workers, and the health experts have been made available here. In last 17 days, the massive challenge was of logistics. In the difficult terrain, in the narrow roads, they have literally made everything available here. So once they are tested, they'll be sent to different health facilities, and their family members have also been asked to pack their bags, because this will be the time they have been eagerly waiting for last 17 days to meet them. They'll be immediately sent to those hospitals. As we speak, the nodal officers from different states, 41 workers are from different states who are trapped inside. Their nodal officers are here in Uttarkashi. They have been constantly, contacting the authorities who are in the rescue operation and mediating between the family members of the trapped workers. Now, you see, everything is now literally moving inside the tunnel from the front portal. So these are the officials from the state government, from the center, along with the rescuers. Massive layer of security has also been placed, because inside, the number of persons who could enter probably one side should be made limited because of the access. And again, what I see, the NDRF personals with the medical equipments are entering in the tunnel. So there are two personals from NDRF who are going with their equipments, with the essential requirements. They're trying to go inside. So this is exactly moving in a fast way. Looks like we are very close to the breakthrough. However, we have seen the similar situation on 24th, and exactly why. Again, I see near the ambulances, there are more and more health facilities are being brought here. In fact, as we speak, right across the ambulance, Nabila, there are also a makeshift hospital has been made. Here, the authorities are also using a drone. I can see a drone is also flying here, but here the health facility has been created here. That's nearly 20 to 22 beds for essential requirements. It is not only for the trap workers once they are evacuated, but also for the rescuers, because the temperature varies every day. Today it was, literally a rain which has dipped the temperature massively, and because the operation goes round the clock, so this is creating a kind of, this had literally made this entire operation extremely difficult. But now, since we are very close to the breakthrough, again you see the special beds, stretchers, everything is being taken inside by the SDRF. The police is making a green corridor for the smooth passage of the trapped workers. I see that's a very emotional moment. A police person I saw literally hugging a rescuer inside. So this looks like a very emotional for all of them. None of them have literally slept properly for the last 17 days. In the meanwhile, Professor Arnold, if I could close access to his expression, he literally looks very happy. Every day has been saying it may take time, but we will take them out very safely. They will be evacuated. But for now, what we are hearing that we are very close to the breakthrough. Special prayers being done here. Now you see the sweets are also being distributed to the police personnel right outside the front
portal of the tunnel. That's the security access gate, and you the properly helmet, because that's again the tunnel area. So you have to equip properly. Number of ambulances have been increased: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ambulances are already here. And let me tell you, 41 ambulances are on standby for last 1 week. Have been placed near around this project site where the operation is being carried out. While we speak, the vertical drilling operation wasn't suspended, but it was putting on hold, and they were very close to the breakthrough. Now, of course, they are literally distributing prasadam. There was a special prayer that they did with the special priest from the Uttarakhand and different places. They came here, and now you see it's just last leg of this rescue operation, and we are very close to the breakthrough on this 17th day of the operation. Short, 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 short. ठीक है। अरे बहुगुणा जी, हो गए हैं। लगा हुआ है और ऊपर मंदिर के पास अंदर बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। निकल जाएंगे, मैं करता हूँ। और कुछ है ये दशहरा है। ठीक है, मैं लाइव करवा रहा हूँ, करता हूँ। ठीक है, कुल मिलाकर के तमाम एजेंसी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। वहीं आस्था को लेकर के भी यहाँ पर तमाम चर्चाएं की हैं। हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम ही हिलते डुलते रहेंगे। पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। हम ही हिलते, आगे मत जाओ, इधर आ जाना। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आ रहे यार, ठीक है, ठीक है। चल, हाँ, आज मंगलवार है ना। रोल नहीं है, रिकॉर्ड लाइव है। मैं बस एक मैसेज का वेट कर रहा हूँ। मैसेज आया तो बस हो गया। पहला एम्बुलेंस अंदर जा रहा है। नहीं, अंदर जा रहा, लगा दिया ना। बैक में जाएंगे सर। बैक में। हाँ, फ्रेम में रखो, ऐसा रखना को दिखाई दे।
और यकीन मानिए जो पुरानी कहावत का ये इससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ना उन लोगों के लिए जो बचाव काम में लगे हैं, ना उन लोगों के लिए जो वहाँ अंदर फंसे हैं, सब ने कोशिश की। और मैं इसमें आपको पता है मेरे हाथ में फ़ोन क्यों है? दरअसल मैं एक इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। वो संभवतः वो खुशखबरी हमारे पास है, बस मैं उस पर एक औपचारिक कन्फर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। और आज मंगलवार को वो मंगल हो जाएगा। ये तस्वीरें दरअसल उस औपचारिक पुष्टि की ओर इशारा कर रही हैं, जिनको आप देख रहे हैं। एक के बाद 41 एम्बुलेंस की जानकारी हम देते आए हैं और ये एम्बुलेंस अब रिवर्स मोड में अंदर जा रही है। इसके पहले एसडीआरएफ जो पर्सनल थे वो चारपाई लेकर के गद्दे लेकर के गए और साथ में एनडीआरएफ की जो डॉक्टरों की टीम थी और जो सिविल डॉक्टरों की टीम थी वो अपने मेडिकल इक्विपमेंट लेकर के गए। ये दरअसल एक प्रोटोकॉल है। जैसे ही ब्रेक थ्रू मिलेगा, अगली पाइप लगे या ना लगे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो लोग हैं जिनको अंदर जाना है वो तुरंत उस पार चले जाएंगे। उस पार जाते ही ये देखा जाएगा क्या और पाइप जोड़ करके आगे भेजने की ज़रूरत, और अगर ऐसा नहीं है तो सबको जल्दी है इवैक्यूएशन की। उनकी सुरक्षा और वहाँ मलबे की हालत को देखते हुए एक एक करके उन्हें बाहर लाया जाएगा। देखिए, हम एक बार पूरा पैन करने की कोशिश करते हैं। इस समय जो कुछ भी यहाँ हो रहा है ये इशारा कर रहा है कि आज मंगलवार को मंगल हो जाएगा। 17 दिनों की ये कोशिश आज सफल हो जाएगी। यहाँ मिठाई बांटे हैं, पूजा हो रही है। प्रोफेसर आर्नोल्डिस कभी भी उस मंदिर के बाहर देखिए फोटो ले रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन आज बता रहा है कि आज वो घड़ी आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था। जब वो बाहर आएंगे तो एसओपी ये है कि सबसे पहले डॉक्टरों की टीम उन्हें वहां पर इसीलिए चारपाई ले गई है, लिटा करके उन्हें देखा जाएगा, उनके स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा किसी तरह की दिक्कत तकलीफ तो नहीं है। किसी को अगर ज्यादा दिक्कत है, एम्बुलेंस के जरिए उत्तरकाशी जिला अस्पताल को स्टैंड बाई रखा गया है। साथ ही चिन्याली सौड़ में एक स्पेशल हेल्थ फैसिलिटी बनाई गई है जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। जैसी आवश्यकता होगी हर एम्बुलेंस के साथ पुलिस की एस्कॉर्ट टीम होगी, तुरंत उन्हें जगह पर पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानकारी, हर राज्य के नोडल ऑफिसर यहाँ पर हैं। जिस राज्यों के मजदूर यहाँ फंसे हैं वो उन परिवारों के साथ हैं, तालमेल बनाए हुए हैं प्रशासन के साथ। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाएंगे ताकि हर मजदूर जैसे अस्पताल पहुंचे अपने परिवार के साथ मिल सके। ये उसके लिए दीपावली और छठ से कम का मौका नहीं होगा। एक बार फिर सीधे तस्वीरों के जरिए उस सुरंग के पहले मुहाने पर जहां बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी भी हैं, आईटीबीपी वहां पहरा दे रही है और इस जगहों से ही सबको अंदर जाना होता है। ये रणनीति दरअसल जो हमें जानकारी मिली है वो स्पेशल एस्कॉर्ट की है। किसी भी एम्बुलेंस के रास्ते में बाधा ना आए। यहाँ से लेकर के उत्तरकाशी से लेकर के चिन्याली सौड़ तक पहाड़ों के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, हर जगह कोई सड़क पर ना आए। जाहिर है जिस तरह हम जहाँ से आते जाते थे लोग हमसे पूछते थे सर क्या आज वो बाहर आ जाएंगे, हर कोई उत्सुक था। जाहिर है तालियों के साथ इनका स्वागत होगा और हर किसी के अंदर वो खुशी होगी। खासकर उन 41 लोग और उनके परिवारों की एम्बुलेंस अंदर गई है और अब जो भारी भरकम गाड़ियां जिनकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल इस ऑपरेशन में, उसे अंदर से निकाला जा रहा है। मसलन आप इसे देख रहे हैं, ये जो रोलर है जो सतह है उसको समतल करने का काम करती है। फ्रेम 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 पीछे रहो ताकि थोड़ा चलने की जगह मिले। पूरा नागिन डांस। हेलो 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 हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है। एक पाइप और जा रही है, वेल्ड हो रही है वो। आर पार पहुंच मिल गया होगा बट पाइप जाएगी उस पार।
ट्रक में दिखाई देगा क्या है? हाँ पीछे अपना में देखो तो सही। आ रही है। It is indeed, Nabila, and as we speak, I'm still constantly checking my phone because I'm waiting for an official confirmation of really a good news that everyone across the country, perhaps now since the entire world is watching on this rescue operation, I'm just waiting for an official confirmation. But given what is happening right behind me, this gives an idea that how close we are to the breakthrough. Now, of course, the last pipe of 6 meter long need to be sent inside, and this is a preventive step. In case you just breaching the debris side, you cannot start the evac operations because your forces are quite trained. NDRF, SDRF persons are trained to swiftly move their body from one to another. But those workers, those laborers could not be exactly the same same way trained, and having also seen they are trapped for last 17 days. Perhaps mind and body really doesn't work in a sync with each other. So that could be one physical and physiological, psychological factor. So that need to be considered. And also the safety is paramount. They cannot compromise with this evac operation. Also the life of the rescuers and the trapped workers. So now once this another pipe which is being welded, immediately it cools down. The auger machine will push inside, and that will not just only breach the debris, but also go at least certain a safe distance, which could be 1 to 2 or 3 meters. That will, when we see the NDRF and the SDRF personnel going inside, you see last minute picture session is happening. These are the NDRF and SDRF persons, and there are the number of workers fully equipped with a helmet, with a safety plug, safety couch, everything that they require for this evac operation, and they are being led by the commanding officers of the NDRF. This team is now literally chanting slogans. The NDRF and SDRF personals are now on their way with their machines, ropes, stretchers, lights. Everything is required for the evacuation operation. This is a big day, 17th day of this rescue operation. One of the biggest in the mountains and perhaps across the country for last 17 days. The world is watching. Experts from India and across the globe are here to guide and advise for this evacuation operation. Who's leading the team? The team is being led by the CEO of the NDRF, and there you see the workers. They are carrying lights. These are the wheel stretchers, stairs, ropes, adequate number of ropes. Every these stretchers will be roped from two sides, and these are the personnel from the state and NDRF. They will be entering 6 at a time. What I'm told, the 6 personnel will be entering in the tunnel. As per the standard operative procedures, the protocol is that you have to wear a safety helmet while entering in the tunnel. Now they are being briefed by the head of the team who's leading this team, who are entering inside the tunnel, and absolutely the josh is absolutely high. And I see Professor Arnold actually interacting with them, having some words, some communication. The man on the ground who flew all the way from Slovenia via Dubai landed to India, and now he's been advising the rescue operations in whatever capacity he could do. And for now, these are the men, these are the rescuers, we call them Devdoot, who will be entering in the tunnel and will complete the task of the evacuation. Now every individual, every trapped workers, one after one, they will be given us, they'll be crossing the 57 to 60 meter long but extremely narrow 800 diameter pipe for the evacuation. So there could be situation, of course, of, as we've been saying, claustrophobia or suffocation. Exactly why the oxygen cylinders, oxygen pipes are being made available. There will be adequate light, and of course their morale is high,
and it will be the day when they'll be coming out for the indefinite dark. Of course, been 17 days, but you literally feel no less than a trauma. Of course, the food was given. And remember, till there was no proper food, no proper water, they were only given the dry fruits, and along with that, the medicines and the supplements, adequate quantity of vitamin C, calcium, whatever would require for one to survive and be healthy. But there have been several complications, several medical conditions, so they were also being given medicine. But the day they were successfully able to make a breakthrough for another lifeline, which is 6-inch diameter pipe, they started supplying them food, packed food in a bottle, khichdi, protein, boiled egg, whatever was possible, everything was done. Of course, there have been, every time they made certain effort, end of the day, literally failed. Multiple options were explored. 6 multi-dimension approach from 6 sides were also started. In fact, another project for perpendicular drilling was to start today. But this is the day. All in the images I see, the Mr. Parichit is the senior official from BRO. So you need to see the agencies, number of persons are working, who all are here. We have the 201 Engineering Regiment here, we have the Army here, we have the BRO here, GREF working here, SDRF, NDRF, State Police, civilian doctors, and then workers from different companies, laborers, experts from different places who all are here. And it has been literally more than 2,000 workforce, working round the clock for this operation for last 17 days. Now, the team of the rescuers who will be going inside the tunnel, they have already gone inside. Those who are lined up outside, they'll be assisting from the another end of the tunnel, which is the front portal of Silkyara. So their job is to pull out the stretcher from the another end, which will be used by the persons across the debris. They'll pull them out through the stretcher. There will be, as per the SOP, there will be medical examination by the team of medical experts who have already gone inside. Beds have been placed inside, because immediately after the medical condition, they'll be seeing about their health situation, health condition, and as per their fitness and requirement, they'll be sent to different locations. What I know from my sources, the Uttarkashi district hospital is on standby. Adequate number of beds have been placed with all the necessary, health gadgets. Subsequently, another medical special facility have been created in 35 kilometers from this place, and we have seen that has been the base of airlifting of the logistics, Chinyali Sor. But the state police will play a major role here. The police, the traffic police have been asked to escort each such ambulances, and there shouldn't be any hurdle. And trust me, when they'll be passing through, there are 3 to 4 small towns, markets here, and everyone have been so curious, and they all are waiting eagerly for them all to walk out. There you see the nodal officer and the secretary who has been briefing the media about the rescue and evac operation. Looks like there will be another press conference just in about a minute, as Neeraj Kherwar, who's stepping out, just having another brief of the operations. And this gives literally, this is very important as well, very significant, because as we have the information, this helps not only for the people across the globe who are watching, but also very important for the family members of those 41 trapped workers. Minute by minute update is important. Neeraj Kherwar, he just entered and had a time with the officials. Looks like he'll be coming out, and we'll have a more and more briefing about the ongoing situation. But as we have been told that 55 meter have already been crossed, another pipe which will cross the 60 meters mark. But they will see the safe arena. Once you enter the pipe, it crosses 57, which is a breakthrough expected, anticipated by the measurement. Once it crosses the safe line, and they'll see that this could be the point of evacuation, whether it is 57, whether it is 58, 59, or even 60 meters. Then exactly when the evacuation will start in Silkyara tunnel. Everyone stand by. You see the ambulances lined up. Look at this.
Well, absolutely. This simply means because, you know, they're looking at the narrow scape where they have been working and these ambulances are lined up. What we are learning and hearing that breakthrough has already been achieved. They have made the breakthrough. They are able to see them. But until and unless they make a safe passage for these another pipe to go to other side, because this is exactly, you have to maintain certain distance from the debris and also the fragile structure which is suspending in the tunnel, because this could create another tragedy, not only for the workers, not only for the rescue or evac operation, but also for the rescuers. So the one set of personnel that you see, number of SDRF and NDRF, they will be entering inside the tunnel. Now, just to demonstrate that, imagine if this is the length of the tunnel, and from here, this is the front portal, they'll be literally crawling down inside, and this 60-meter pipe, they'll be reaching this side, just across side the debris, and they'll have some, imagine if this is the end of the debris side, this much at least you require 1 or 2 meter of the safe passage to carry out the operation. These persons will be going this side, they have the stretchers, and then one after one, of course it may take couple of hours, they'll be taken inside and on another side of the under person will pull out through the rope the stretchers. Immediately they walk out. Let me see again, another round of movement. I see another ambulance is being taken inside the tunnel. And then, as we say, as per the SOP, after the health consultation with the team of medical doctors, experts who are already inside, they will decide where exactly they'll be taken. So as we speak, since the personal evacuation will go inside, looks like we have achieved the breakthrough. Of course, the final confirmation announcement is yet to be made, but the breakthrough simply means they are able to penetrate the debris. Once it is done, immediately the first step will be to send the personnel, the rescuers, those who will evacuate. So all preparations I see is being made inside the tunnel. There have been close monitoring by the state and the center, the chief minister, the prime minister office, in fact the special secretary from prime minister office along with the OSD to the state government. They have been continuously monitoring all the options, not just one horizontal drilling, but the multiple plans that were being made with the consultation of the. Again, see, I see another round of these NDRF persons with these special stretchers. Look at these stretchers. They also have a special wheel. They have been lined with the wheel. So this will make a smooth passage in the narrow pipe, 800 dia pipe, because this will help them to ease out, to evac them, because 60-meter length, you cannot literally crawl or walk out. Anyone will exhaust unless it is trained. And you can really imagine the fitness and the mental and physical strength of those workers who are already trapped inside 17 days. Of course, the food is being given, but this is not exactly the diet that you have every day, not exactly you are exposed to the atmosphere that you are used to. For 17 days, this literally creates a trauma. So now that will be a major challenge for these rescuers. Of course, 17 days, cutting down the 60-meter length. In the images, I see Professor Arnold, okay, who was literally sitting near the temple for more than 55 to 60 minutes, is now coming down. It looks like he will also be going inside the tunnel along with the other agencies. So we have the experts from Slovenia, Professor Arnold. We have the expert from Australia, Chris Cooper, who is also a consultant in the mining and the underground space. And we have the experts who are also being consulted from Germany, from Thailand. One of the major crucial operation was in Thailand when several children were rescued. And now it's the final leg of this operation. And look at this, the line of the ambulances were totally lined up, are on standby. Immediately, right after the breakthrough, immediately once the evacuation starts from across the debris side, they all will immediately rush to the health center as in how it is advised. Now you see the Professor Arnold is yet again entering the tunnel. He'll be closely watching these evac operations. Nabila, the family workers cannot come at the tunnel side because, again, you see the narrow passage and the number of personnel are in the evac operation. What I've been told, the family members were, because every state whose workers are trapped here, they have sent their nodal officers, UP, Bihar, Jharkhand, they have their nodal officers here.
they are now with their family members. There are multiple places, multiple hotels and accommodations have been made. Immediately, as per the protocol and the SOP will be decided by health experts, they'll be taken to different health centers, and the family members will immediately be rushing to those shelters. Of course, they'll be meeting their loved ones who are trapped for nearly 17 days out of communication, totally incommunicative, except these few words that they could probably hear from just across a 60-meter long pipe. This will be first such meeting. They have been waiting to celebrate Diwali, they have been waiting to celebrate Chhat, and this will be no less than a festive day for all of them. So that will be the first time when will be they meeting their family members. Again, I see the persons from army has also gathered here. So all the agencies, all this workforce will ensure smooth evacuation, smooth rescue operation, smooth access to health facility, and safely sending them to health facilities. Many of these workers, I believe the Jharkhand is planning to airlift them with the special arrangements. There will be special buses to different places. So these nodal officers will coordinate with the district authorities, state authorities for further their transportation from Uttarkashi to their respective states. State and center is closely monitoring. All precautions have been taken in the rescue operation, and all advisories have been issued for further their logistics right after the evacuation. Anything and everything that is required will be made available. Yes, another factor is the temperature. Inside the tunnel, the temperature is absolutely warm, but with the moment you are out of those debris, out of that narrow pipe, there will be literally varying the temperature. Outside it's so cold, and because of the rain now also, and we are close to December, the temperature has dipped up to 10 degrees, even less than 10 degrees. So they will be exposed to extremely cold, and exactly why the blanket and other warm clothes have been arranged by the administration itself. Once they come out, immediately they'll be layered with the blankets and essential warm clothes, and then immediately rushed into the ambulances, because they don't want to be exposed them or exhaust them further by walking out, meeting the family or speaking to anyone. The first priority is the safe evacuation, and then their health. So these are the two priorities have been set as per the the SOP by the administration, by the rescuers, by the entire agencies who are working here for last 17 days. ये सब दिखाना ऊपर इस बार छतों पे दिख रहा है, ये सब मीडिया का जमावड़ा, ये सब जाएंगे। आगे आगे आओ, नज़दीक मत रखो, आगे रहो, खींचना नहीं चाहिए। Experts, absolutely, and the experts were called to assess their psychological condition. In fact, there was one drone and mechanism from Lucknow was also called yesterday to assess their psychological mental condition. And immediately when they were trapped, there was panic. But remember, they are the workers. They know what a tunnel is. They know the consequences of constructing a tunnel is, and they are very much aware about the possible threat. So they are very strong. Of course, they have been waiting to be evacuated, rescued, and every time they used to speak to their family. And when we used to speak to their family, they say, we have been asked that when this evacuation will take place, when they will be rescued. One and only question they have been asking, that when will we be rescued. They were getting food. That wasn't the issue. The issue was a matter of concern that how long this operation may take, and particularly when you hear that today by evening you'll be out, and then you hear some obstacle has literally halted the operation. But what is happening here, Nabila, I'll show you a glimpse of exactly how curious people are. They all have been waiting. This looks like entire city of Uttarkashi, Brahmakhal and the nearby areas. They all are here. From this rooftop to the national media, international media, people in a huge number have come here to see this final leg of this operation.
every place you see, the number of workforce, the laborers who are involved with the BRO to even cut down the mountains to make a passage for heavy machinery lifting to top of the mountain, to top of the hills for the vertical drilling. Even those laborers, along with the other workforce, all sitting right out there watching this last leg of operation. It's the day where they believe Mangal, as we say, Mangalwar ko Mangal hoga. This is the day finally it's going to happen. After achieving a breakthrough, a safe passage, a safety protocol is being followed. Remember on 17th, where debris literally fall towards the rescuers, there was another challenge to ensure safety of the rescuers first, because compromising their security, you cannot carry out a rescue operation. It literally took them from 17th to 21st of November to make a structure, a safe structure. Then solidification of the, the suspended materials over the tunnel where the cavity was being formed. So after ensuring the safety protocol for the rescuers, only they started operation. If you see those images of CM Dhami, VK Singh, everyone speaking to the trap workers, you see a concrete structure on top of them. That kind of safety protocol, or you called a micro tunnel, was made inside, literally 200 meter inside, wherever there was a threat of suspended material falling or the debris falling in. So once they ensured and secured the rescuers, only then they started or they resumed this operation yet again. And of course, there have been hurdles, obstructions. The mega machine, if I could say you just one image of that auger machine, so-called American, literally a giant machine. There was standby machine also airlifted from Indore. And you see these blades, the rotated blades, these are called hero blades. And this is what installed at nearly 45 meters from the auger machine. And right after drilling, the moment it reached to the heavy size metals, it literally broke down. And that led to the massive disappointment for all the rescuers. And it looked like that all their, the success and the expectation at the last leg failed. And right after disappointment, immediately this team made out a plan B. A plan B was vertical drilling. And in fact, in 48 hours, they made really halfway mark through. The plan was to dig 86 meters and they made 44. More than halfway through. But now, since we are expecting a final breakthrough, in fact, the breakthrough has been achieved, but the idea is to send an evacuation pipe or the safety tube across the debris at certain safe distance inside the tunnel. A lot of things moving right outside. Everyone is on standby, and the moment they hear that pipe has reached, we will hear the personals entering the tube, reaching other side, crawling inside a 800 dia pipe, and to reach, to make it 60 meters for NDRF personnel. They are physically absolutely fit. They're trained to walk in those terrain. It may take barely few minutes for them to cross other side. And once they do, after examining the condition of the suspended material, after examining the situation of those workers, examining the physical condition, they will immediately communicate with the team other side, and then one after one, using the wheeled, the wheel, a specialized wheel they made. In fact, these people, these NDRF personnel designed literally a stretcher with wheels to ensure smooth go through of these stretchers, because dragging inside a pipe will be extremely difficult, and when it comes to 60 meter of such drag. So they have to avoid friction, they have to make it smooth, and they exactly keeping the situation and the terrain in mind, they designed a stretcher with equipped with wheels. So if they have taken nearly 7 to 8 such wheels inside, and all these personnel will be sending, and there will be roped by two-way. One side they'll be pulling in, another side they'll be pulling out, and this is how the operation will take place. Now I see another ambulance is going inside. So the idea is that immediately, like in few seconds, few minutes of the consultation, they are out, they'll be sent in ambulances. Because they don't want them to be exposed with the temperature outside the tunnel, out of the front portal of this tunnel. It's extremely cold here. The weather is changing. There was rainfall this morning, and also expected on the higher altitudes. It could be even snowfall. And in that case, this will make extremely difficult, not for the rescuers, but of course for the workers. So everything is being considered. All machineries are here, everything is just on standby. We are just waiting for the day and for the moment and for the news break that we have been waiting for last 17 days.
you know, the experience comes with the over of years working, and not one. Globally, there have been several challenges where they had to take horizontal drilling or the vertical evacuation, and these people are expert, and the international agencies who are working in different nations and different situations, from Mexico to Chile to several to Thailand, there have been such you know, massive and very challenging, extremely difficult evacuation in extremely difficult physical conditions. There have been extremely rainfall or flood or the waterlogging. But despite all these expertise, every time in every operation, you see a different magnitude of challenges. And as far as Silkyara Tunnel is concerned, here the challenge was that there was no communication except one 4 inches dia pipe, and you know, you barely could speak 3 to 4 words, and 60 meter that voice could be heard from to the other side, and this was exactly doing by the same for the workers. So the communication was difficult. Then was challenge to ensure a communication line with these workers. That was done, and that took literally more than a week or nearly 10 days. After ensuring that, they started drilling. The plan for drilling was literally flailing on 17th November, and earlier there was a mild tremor on 17th, literally debris fall inside. Then there was another task to ensure a safety of the rescuers. And also imagine, do you see this structure, the terrain on the mountain? This is exactly how you have the passage and the roads. There have been all-weather road project. Because of this, you have a wider roads. But on the narrow lane, working in this extremely condition makes this operation extremely difficult, particularly for carrying out logistics support on this part of the tunnel site. So you have the narrow road, somewhere you have the landslide zone area, heavy machinery like literally bringing a drill, machines. So that was an uphill task for everyone. Air Force was roped into to prevent waste of time. So every logistics was being made available. So this is indeed what I see from start to end have been extremely challenging for all the agencies, be it the logistics, be it the operation, be it the dealing with the conditions and the threat that was inside the tunnel. But after all, the 17 days of the effort has gone well. Finally, we are close to the breakthrough. Once the safety pipe at certain distance reaches, we will have these workers coming out one after one. We will have these images from the front portal. Those who will be crossing the narrow tube will be the NDRF and SDRF personals, and essentially as per the plan that I heard from my sources was to send 6 people. And once they cross the other side, there will be proper
इसमें। अरे भागुना जी, ये कौन है जिनके बैच पे देखना क्या लिखा है? ये जो सफ़ेद कोट मैंने इनके बैच पे क्या लिखा देखना। हाँ, ये सफ़ेद जैकेट वाले हैं ना, मास्क और वो लगाया, ग्लव्स, इनके इनके पॉकेट पर क्या लिखा है? हाँ? रेड कलर का लोगो है रेड। ये अमित, चलो अच्छा है, अमित के पास फ्रंट पे से कोई लोड ही नहीं है। थैंक यू मेरे भाई। हाँ ले आओ। तुम ऐसे लेके बैठ जाओ, यहाँ रख दो। सुनो कितने पहुंचे? सुनो, ऐसे ही कैमरा लेके बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे ही लेके बैठ जाओ। हेलो नहीं गड्डी ला के जितने मर्जी टनल दिखा। हेलो चले गए थे दिल्ली पहुंचे। अरे यार, पानी गिरा दिया तुमने। Blue patched. रुको, उठो उठो। ऐसे बैठ जाओ, बस ऐसे करके, बस टनल दिखाना, फेस नहीं दिखाना है। हेलो, तो मैं और कहाँ था, वहीं तो था, काटा क्यों फिर? आ रही है। Yes, Nabila, yes. Can you repeat the question? Well, the challenges started first from the logistics, and you rightly said on the difficult terrain we have a narrow roads in the mountains at many places, and then landslide areas. So first the logistics on a heavy, the giant machines reaching here was the task. So somehow when they started working on plan A, plan B, plan C, that was extremely difficult. Immediately, once every logistics was arranged here, mega challenge was to complete this operation inside the tunnel. Every moment they started drilling, first they started with the auger machine that was by the Jal board of the state government. The auger machine collapsed in less than 28 hours. Immediately there was another need of to get another auger machine which was airlifted by, so that literally halted operation for nearly 28 hours. The expert, the NHIDLC, coordinated with the Ministry of Transport and Highways, and Air Force was roped in immediately, was pressed in, and the Air Force, airlifted the machine from Delhi,
which was brought here on the site. But again, the logistic, the challenges to bring it here was immediately the auger machine started working on 17th. There was more muck falling inside, the debris started falling inside the tunnel, and there was literally threat to the trapped workers because the machine creates a vibration, and if there is any loose or fragile debris suspended on the tunnel, this is clearly a risk. And to avoid that, that literally took more than 90 hours to first ensure the safety, the solidification of the suspended material, then making a scape tunnel. Of course, what scape tunnel should have earlier made in the tunnel, this situation wouldn't have arisen. But there was no scape tunnel at that time. Finally, they thought to make a scape tunnel and then alternative, a micro tunnel inside up to the working site, deep inside the 200 meters of the front portal that you are seeing in these images. But after doing all these things, there was vibrations. For vibrations, they had to use another technologies. One after another technology, they called up international. Gaurav, as we know, the breakthrough has been achieved, but you cannot risk the life of the rescuers and subsequently all these trapped workers. If they will coming closer to the debris, that will risk their life. So now, at the safer side, as you said, the another 6-meter pipe. अब आ रही है, चेक कीजिए, अब आ गई होगी, आ गई, चेक कीजिए, चेक 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 चेक। हेलो, अरे इंडिया टुडे पे ही हूँ भाई, पहले आपस में तो डिसाइड कर लो। आ रही है।
फ्रेम में आ रहा हूँ। Last leg of this operation in Gaurav. As we know, since the breakthrough has been made, another safe pipe need to be crossed the debris and at least maintaining a distance of 3 to 4 meter from exactly the end of the debris. And this is essentially required to prevent those trapped workers during the evacuation from the suspended particles or the suspended heavy machinery, bolts or the iron rods which could be inside the tunnel. So once you have a 3 to 4 meter of a safe distance, immediately we have seen those NDRF workers with the special stretchers have taken, which is wheeled, and the ropes, the oxygen cylinders, LED strip lights, everything has been taken inside. So as we see on the front portals, all the ambulances are being sent one after one inside the tunnel. And what will they do is, once the NDRF persons go inside, they will first assess the situation, look at the physical condition, and then they'll take one after them on a wheelchair, and the other side, just toward the other side, at the front portal that is visible on the screen, the NDRF person will be pulling out using a rope the stretcher out. Once they cross the length of 57 to 60 meter of the extremely narrow and as narrow as 800 dia pipe, there will be doctors, team of experts, team of medical experts. They have taken special beds inside. So immediately after giving them some rest, there will be condition, there will be evaluation of the physical and psychological condition. And depending on that, they will be also, Gaurav, remember it's extremely cold here since this morning there was rain and extremely cold. So they could be potentially exposed to the physical condition of the extremely cold. They'll be given blanket, there are special warm clothes have been sent inside. And now you see one after one these ambulances, because the distance inside is nearly 200 meter where exactly the evacuation, the drilling was taking place. So at least the idea is to send 5 to 10 ambulances at a time inside. So this process of evacuation and then sending them to health facility can be expedited. In fact, special the police or the Scott police have been made on standby outside, who will be escorting each ambulances to the health facilities. So they never stop on the way, because there are markets, there are villages on the way. So there will be a special green passage, a green corridor will be created for this, the fleet of the ambulances who will be taking these trapped workers. Now, after the evaluation, every state have sent their nodal officers, particularly the states, those who have their workers trapped inside the tunnel. They are coordinating with the state and district authorities. With their family members, they'll be reaching to the hospitals, and that will be, Gaurav, trust me, no less than a festival, no less than Diwali, when they will be meeting their family members inside the hospital. And then respectively, every state had made their arrangement for STEM. Well, there was no lack in endeavor or the efforts by both national, international agencies, experts. Everyone tried their best. But every morning coming with a hope and then evening going with a disappointment. Several people say there was a temple during this construction and project of the tunnel that was demolished for this essential and very crucial project of all-weather road connectivity for Char Dham Yatra. But then immediately on the consultation, the authorities decided to reinstall the temple. And you see the temple was actually taken outside the tunnel from the front portal, and they reinstalled it. And since then, the divine intervention was expected by everyone, be the local priest or every individual, I could say, Gaurav, going before inside the tunnel. Everyone used to go offer prayer, and no less than, in fact, Professor Arnold Dick himself, the person, international expert of underground space station, who flew all the way from Slovenia via Dubai to India. Every day before going inside the tunnel, he used to offer prayer. So be it General V.K. Singh, Chief Minister, authorities of the
the colonels and brigadiers and several top officials from BRO, the rank from NDRF, rank from Army, rank from GREF, State Police, everyone. So that was a divine intervention that was required. So since all machinery agencies working together, there was indeed, they were every day they used to offer prayer. And even today, you know, yesterday you rightly said it was Dev Deepavali, and today another auspicious day being Mangal. Everyone saying, Aaj Mangal hai, Aaj Mangal ho ke rahega. And that's exactly why we are, you know, very close to the Nabila, as we have been speaking to the health officials, there is no possibility of such situation that there could be hypoxia or they will not be able to breathe properly. However, this is just a preventive measure. You have the 108 ambulances, and these are high-tech ambulances equipped with every essential that is required in a health facility. So these ambulances work as a primary health clinic until the time of the transportation or till the time of transferring one person to specific health facility. So oxygen cylinder is essential, that is required. In fact, in the tunnel, the micro tunnel now we say, or they say evacuation tube of the 800 dia pipe, once the officials, the NDRF or rescuers go inside, transporting them even on a wheelchair, on the stretcher, which will have a wheels equipped on it, it may take more than a minute. And inside a narrow tape, in fact, today also, I tried to pass through a narrow passage of the similar type to get a demonstration. It could lead to a claustrophobia, and there could be oxygen issues inside the difficult terrain. So they are also planning to make at least some arrangements of proper oxygen supply in the tunnel. Each worker, while being rescued and evacuated from one end to another, हेलो, पहले उधर से कटवा तो दो, उधर से कटवा दिए, चलो काट दिया मैंने कॉल। अरे नहीं तो करते नहीं है ना, देखो उधर से कर लोगे क्या होता, फोन जेब में होता पता नहीं चलेगा, वो तो मैंने निकाला मैसेज करे तब देख लिया। आप लोग ये रास्ता छोड़ दीजिए, फिसला है, और यहाँ 2 दिन पहले एक आदमी गिर गया था नीचे, वो अस्पताल में। पीछे हो जाइए, आ रहे पीछे हो जाइए। आप लोग अंदर काम करते हैं? अच्छा, पहले काम करते, अभी आए हैं कहीं से? बाहर से आए हैं? हाँ, यहीं से शुरू में काम करते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, आप लोग को टीवी पे लेते हैं, आप लोग बताइए करना है। आपकी पहचान वाला है कोई अंदर? मतलब नाम वाम पता है आपको उनका? बहुत से यहाँ कई लोग मजदूर काम करते हैं, ये नहीं पता आप सब साथ में का नाम थोड़ी याद रखना, कुछ का है आप मतलब चेहरे से पहचान पाएंगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, 100 यहाँ काम कर रहे हैं, 100 वहाँ काम कर रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं इसमें एग्जैक्टली? आपका काम क्या होता है? क्या है? हाइड्रा किसे कहते हैं? क्रेन। मतलब ये जो ऊपर जिसमें वो लगा है, ये क्या करता है? अच्छा, छत पे सॉलिडिफिकेशन करने के लिए सीमेंट का जो स्प्रे होता है, सामान शिफ्टिंग करने के लिए भारी इक्विपमेंट होता है ना, इसको जितना सामान शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रा बोल सकते हैं, मिनी क्रेन बोल। फिर आप लोग आगे भैया, हो चुका है यहाँ, कांड मत करो ना तो हमें निपटा देगा। बहुत नहीं, आप सुनो,
हम आप सबसे बात करेंगे आज तो इससे बढ़िया दिन क्या होगा। आज मंगल है और आज मंगल हो जाएगा। नहीं अब आ जाएंगे, पाइप पहुंच गए उस पार, अब तो जोड़ के निकालना वाली बात है। हाँ ये बात सही है, रोज सुनते थे सुबह शाम को, हमें भी निराशा होती थी। आज हो जाएगा, आ जाओ, इन सब लोगों से बात करेंगे। जरा दिखाना, उनको ब्रीफ कर दें। ब्रेक थ्रू मिल गया, उस पार पाइप चली गई है, लेकिन वो जोड़ के एक्स्ट्रा भेज रहे हैं जहां से निकालेंगे। थोड़ा सा ये देखना, बात पीछे मत चले जाना, मुझे बस वो डर लग रहा है। एक आदमी गिर गया ना तो यहाँ रेस्क्यू कौन करेगा। मुझे आ रही है, मैं ये बता रहा हूँ, मेरे साथ ये वो मजदूर हैं जो यहाँ काम करते हैं प्रोजेक्ट पे। ये सब इंतजार कर उन लोगों के बाहर आने का। ये सब यहीं के मजदूर हैं, इन्हीं के साथी लोग हैं जो अंदर हैं, तो हम उन्हें ले सकते हैं। सौरभ आगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इनसे बात करनी है कि नहीं इन लोगों से? ठीक है, 3 मिनट माहौल तुम, ठीक है, तुम मुझे कमांड दे देना, मैं थोड़ा सा किनारा, इसको फेंक दो ना, टाक उस साइड कर दो, किसी के पैर में लग वग ना जाए, फेंक दो उस पे, चलो कोई है ना कीला है, गड़ जाए, कुछ हो जाए, फेंक दो इसको पीछे की तरफ फेंक दो। आप लोग के इसी सामान से तो हमने यहाँ सुरंग बनाई हुई थी। अरे नीचे नहीं, अरे चलेगा वायर पे, अरे अगर हमें जरूरत पड़ सकती है। मुझ पे ही रखना है मोस्टली, जाना है तुरंत आना है, लंबे देर तक शॉर्ट्स पे नहीं। शॉर्ट्स हमारे पास कट रहे हैं दूसरे विंडो से, 2 एंकर शो है तो उस हिसाब से रखना। सईद, विक्ट्री साइन का मतलब ही है कि जीत मिल चुकी है। जीत वो ब्रेक थ्रू यानी मलबे के उस पार देखा जा चुका है, पाइप पहुंच चुकी है, लेकिन रिवैक्यूएशन में जो जटिलताएं हैं वो हैं, उसके चलते एहतियात के तौर पर दरअसल 5 मीटर एक और पाइप जो वेल्ड हो रही है उसे आगे डाला जाएगा, ताकि जहां पर वो मलबा खत्म होता है उसके ऊपर कोई पार्टिकल नीचे ना गिरे, कुछ टुकड़ा ना गिरे। बस अब समझिए कि कल देव दीपावली थी, वो इन परिवारों ने 41 मजदूर और देश भर में उनके अलग अलग राज्यों में जहां वो रहते हैं उनके परिवारों ने न दीपावली मनाई न छठ, और आज किसी भी लम्हा वो शुभ घड़ी आएगी। आज मंगलवार है और आज मंगल होगा। हम इसी कामना और इस उम्मीद के साथ यहाँ जो जमावड़ा आप सुरंग के पहले मुहाने पर देख रहे हैं, देश भर की जितनी एजेंसियां हो सकती थी, अगर मैं कहूं कि इस दशक का सबसे बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। हमने बाढ़ की आपदाएं देखी हैं, भूकंप देखी हैं, नेपाल से लेकर टर्की तक हर जगह इवैक्यूएशन हुआ है, लेकिन इस तरह की जटिलता याद अगर किसी को आती है तो वो कभी रानीगंज में हुई थी, या फिर ऐसी एक जटिलता दिखाई देती है बिलासपुर में जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला। लेकिन 17 दिन तक ऑपरेशन और उसमें एक के बाद एक बाधाएं, हर दिन नई कोशिश, हर शाम को निराशा, हर दिन कोशिश उम्मीद, हर शाम निराशा, लेकिन आखिर कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये पूरा जमावड़ा आप देख रहे हैं, जो एम्बुलेंस से एक लाइन से 41 एम्बुलेंस लगा दी गई हैं। एक तरफ दुनिया भर की एजेंसियां, देश भर की एजेंसियां काम कर रही हैं, तो बगल में आराध्य की पूजा भी हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है, घंटियां बजाई जा रही हैं, ईश्वर से प्रार्थना के साथ धन्यवाद भी दिया जा रहा है कि आखिर इन तमाम कोशिशों के बाद सफलता मिली है। जिस समय मैं बात कर रहा हूं, मेरे पीछे सुरंग में काम करने वाले, इस टनल में काम करने वाले वो मजदूर हैं जिनके अपने वहां फंसे, और इसीलिए उत्सुकता पूर्व अपनी उन निगाहों से वो इंतजार कर रहे हैं एक झलक पाने का, जब इस सुरंग के मुहाने से एक एक करके एम्बुलेंस निकलेंगे। संभवतः झलक देख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल ये है कि जैसे ही सुरंग के उस पार पाइप गई, 5 मीटर की दूरी और कवर हुई, यानी मलबा जहां खत्म होता है वहां से सुरक्षित दूरी पर जैसे आप जाते हैं तो तुरंत एनडीआरएफ के लोग अंदर जाएंगे। उनकी वहां की जो स्थिति होगी उस स्थिति को देखते हुए ट्रॉली पर उन्हें बाहर लाना, बाहर लाते ही जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं उसकी एक टुकड़ी अंदर मौजूद है,
बेड भेजे गए हैं, उन्हें बाकायदा जांच पड़ताल की जाएगी, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जाना जाएगा और उसी हिसाब से एम्बुलेंस को भेजा जाएगा उस गंतव्य पर, वो चाहे उत्तरकाशी का जिला अस्पताल हो या यहाँ से 35 किलोमीटर दूर चिन्यालीस रोड पर विशेष हेल्थ फैसिलिटी बनाई गई है। वहां जाने के लिए कोई बाधा ना आए। रास्ते में कई गांव हैं, कई चौराहे हैं, कई बाजार हैं और हर कोई इस समय टेलीविजन पर इंतजार कर रहा है उस खुशखबरी का कि ये बाहर कब आएंगे। कहीं खुशी में बाधा, जो खुशियां हैं वो राह को ना रोकें, कहीं ट्रैफिक स्लो ना हो, एस्कॉर्ट करके उन्हें वहां पहुंचाया जाएगा। दूसरी अच्छी खबर, वो परिवार जो देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, उन राज्यों के नोडल ऑफिसर उनके साथ संपर्क में हैं और सीधे अस्पताल जाएंगे ताकि आज वो अपनों को देख पाए। उनकी दीपावली, उनका छठ, उनका सारा जो त्योहार है वो आज हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, सुरंग के भीतर तापमान इतना है कि संभवतः आपको इतने मोटे जैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे वो मुहाने पर अंदर आते हैं, अभी देखिए भास्कर खुलबे, वीके सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर जनरल, पूर्व महानिदेशक, ये अधिकारियों की वो टीम है जो लगातार यहाँ जनरल सिंह उद्घोष करते हुए गए थे उस मुहाने पर जहां रोज वो सुबह ड्रिल करते थे, प्रैक्टिस करते थे, उनकी नफरी खड़ी होती थी तैयारियों में। आज उनकी वो तैयारियों को अमली जामा पहनाने का दिन है और मुझे याद है जब वो निकले थे, जोश ऊंचा था, जयकारे लगाते हुए, नारे लगाते हुए उनकी टुकड़ी आगे बढ़ी। हाथों में क्या था? हाथों में रस्सा था, कटर था, ऑक्सीजन मास्क थे, SCBA मास्क थे और उसके साथ साथ स्पेशल व्हील चेयर थे। जब हम देख पा रहे हैं जनरल वीके सिंह, साथ ही जो इंजीनियरिंग चीफ थे पहले, वो तमाम लोग, भास्कर खुलबे जो राज्य सरकार के एडवाइजर हैं, अब वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही तस्वीरों में आप देख रहे हैं क्रिस कूपर को, ये ऑस्ट्रेलियन अंडरग्राउंड स्पेस के एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ है, वो भी टनल में जा रहे हैं। हर कोई जो अंदर से निकल रहा है, देखिए चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, चेहरे पर प्रसन्नता है, साथ ही एक उम्मीद है कि 17 दिनों तक चला ये महा मिशन आज पूरा होने के कगार पे है कुछ ही क्षणों में। और यही नहीं, यहाँ का जितने गांव हैं आसपास पहाड़ों में, जो भी आबादी है वो सब घरों से बाहर निकली है। जितना भी इलाका आप देख लें, ये जो इमारत देख रहे हैं, इमारत की छतों पर बैठे हुए लोग, ये इमारत बनकर नहीं तैयार, दरअसल ये प्रोजेक्ट साइट है। छतों पर, कच्ची दीवारों पर, खंभों पर चढ़ करके लोग उत्सुकता पूर्वक देख रहे हैं उस घड़ी को, उस तस्वीर को और ये सोच रहे हैं कि 17 दिनों के इंतजार के बाद आखिर इनके अपने ही थे। ये तमाम लोग यहाँ इन गाँव में आसपास रहते हैं, तो इनमें बहुत सारे वो मजदूर, कारीगर, वर्कर हैं जो यहाँ काम करते थे। उनके अपने जब फंसे तो हर किसी को निराशा थी, ये उम्मीद थी कि वो बाहर आएंगे और आज भी बहुत सारे मजदूर यहाँ पर हैं। हालांकि हमने कई गब्बर सिंह नेगी है। अब आप इस तरफ आ जाएंगे। स्टैंड बाय। भास्कर खुल ये पूरा टेरेन यहाँ से लेकर के उस पर जितने खड़े हैं सब फिर यहाँ तक आएंगे।
पायलट कार आई, किसी के सीएम आया शायद। सीएम के शॉट मार, सीधा क्लोज मार देना। सईद मुख्यमंत्री धामी हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। दरअसल जनरल वीके सिंह जो एमओएस मंत्री हैं वो यहाँ पर थे और अब जो है मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। और दरअसल पिछले 72 घंटों में उनकी सक्रियता यहाँ काफ़ी ज़्यादा रही है। दरअसल वो यहाँ पर मौजूद और उनके साथ साथ कुछ अधिकारियों को हम देख पा रहे हैं और उनके साथ ये पुष्कर सिंह धामी हैं, सूबे के मुख्यमंत्री। दरअसल कई बार वो गए वहाँ, उन्होंने खुद मजदूरों से बात की है। सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत आप देख रहे हैं उनको हेलमेट भी दिया जा रहा है और अभी लोगों से मिल रहे हैं और सबके चेहरे पर जो खुशी, जो प्रसन्नता है, जो हाव भाव दिख रहे हैं, ये इशारा और इंगित करता है कि आखिर पिछले 17 दिनों के बाद आप नीरज खैरवार को देख रहे हैं, वहाँ ब्रीफ कर रहे हैं स्थिति के बारे में और संभवतः मुख्यमंत्री खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे बताते हुए कि आखिर इस ऑपरेशन के बाद कैसे ब्रेक थ्रू मिला, कैसे वहाँ तक पहुँचा गया और यहाँ से कोशिश की जाएगी अंदर जाने की। हाँ देखिए, अभी भी उन दोनों के बीच बातचीत हो रही है और ये देख रहे हैं कि वो कहाँ तक सीएम खुद जाना चाहेंगे, क्योंकि ये जो वक्त है इसका इंतजार हर किसी को था, राज्य सरकार को भी था। उनकी भी धड़कनें तेज तो थी ही कि उनके राज्य में ऐसी घटना हुई थी। 41 भैया आप लोग ये जगह छोड़ने की किनारा, यहाँ से चलने के लिए वीडियो को जो भी होगा हम देख लेंगे। आप ये जगह खाली छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पीछे हो जाए 2 कदम और देखिए पीछे सरिया वरिया का कैजुअलिटी हम आप तो अपनी रिपोर्ट दे रहे हो। हाँ तो हमें चलने के लिए जगह चाहिए, यहाँ 17 दिन से यही करते हैं। कोई नहीं, करो करो भाई। कौन सी टीवी है आपकी? जीएनटी करते रहो आप करते रहो। और अब मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ और जो प्रोजेक्ट पे नोडल ऑफिसर तैनात किए गए थे राहत बचाव के लिए, हर कोई अंदर जा चुका है और पूरी नफरी आप समझिए कि प्रशासन की अंदर जा रही है। एसपी भी हैं उसमें, जिलाध्यक्ष भी हैं, वो सब हर कोई यहाँ पर मौजूद है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ। तो अब ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव पर, बस ये समझिए कि मंगलवार को जिस मंगल खबर का हम इंतजार कर रहे थे, ब्रेक थ्रू मिलने के बाद अब पहली झलक का इंतजार है। ये ज़रूर हो सकता है सईद कि यहाँ जब वो बाहर निकले तो शायद उन मजदूरों का चेहरा ऐसे ना दिखाई दे, क्योंकि एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा तापमान का। सुरंग के भीतर गर्मी होती है, वहाँ पर जो तापमान है वो वार्म है। जब वो बाहर निकलेंगे 200 मीटर के ही मुहाने पर सही, लेकिन तापमान अभी समय समझिए कि 10 से 11 डिग्री है और अंदर जो तापमान होगा वो 30 से ज़्यादा है। 20 डिग्री का वेरिएशन प्रभाव न करे उनके शरीर को, इसलिए गर्म कपड़े भेजे गए हैं। एम्बुलेंस साथ में, एम्बुलेंस में जो ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं वो हर चीज़ मौजूद है, गर्म कपड़े, कंबल, सब कुछ है। तुरंत उन्हें वहाँ से कोशिश ये जाएगी कि जैसे वो बाहर निकलते हैं ट्यूब से, देखिए ये भी आप सोच रहे होंगे कि 60 मीटर वो आखिर पाइप में से निकलेंगे, एनडीआरएफ की टीम उन्हें निकालेगी। व्हील चेयर जो स्ट्रेचर लगाए गए उनमें पहिए हैं, तो पहियों से उनको ड्रिल करना जो है, बाहर खींचना बहुत आसान हो जाएगा। संभवतः 1 मिनट के भीतर भीतर उन्हें निकाल लिया जाएगा और 3-4 एक बार में कोशिश करेंगे। स्ट्रेचर 7 से 8 गए अंदर तो निकाला जाए। निकालने के बाद डॉक्टरों की टीम उनसे यह समझने की कोशिश करेगी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है और तब उन्हें अस्पतालों में भेजा जाएगा। लेकिन आज का जो मौका ऐसा है, पहले आपने वीके सिंह को देखा, वीके सिंह अंदर गए, उसके बाद मुख्यमंत्री अंदर गए हैं। वो सारा अमला यहाँ पर मौजूद है जो इस रेस्क्यू अभियान से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ था। डन, ठीक है, डन। इंडिया टुडे स्टैंड बाय।
Well, I believe, Gaurav, it shouldn't be taking more than 100 minutes. Yes, we are talking about minutes after 17 days, no, not hours. We could say just it's a matter of minutes now since the breakthrough has been attained. The Chief Minister himself has gone inside. And you know, we see this protocol only happens when there is really a breakthrough, because every day starting with a new hope, by evening it turned into disappointment. But today we see a moment of breakthrough, really a day when they all will be stepping out. But I'll quickly bring you to these images that I see here. This explains the curiosity of the people from the adjoining areas, from this hilly difficult terrain. They have been living here, they have been seeing this project happening, they have been seeing the rescue operation closely. Everyone have lined up here. Wherever place they found, they're just sitting here for hours now, waiting to see a glimpse of these workers when the fleet of the ambulances will be coming out. It may not be possible physically for all of us to see them when they'll be taking in the ambulances, but they have been working together. There are many laborers from different states in different departments. You know, few work with the excavator, few work with the another JCB, different machineries. Not yet, but if that happens, we will have right behind me from this top angle of the camera. Immediately, we'll have the first glimpse of any of the family members of those trapped workers are called. Earlier, you know, while I have been speaking to the officials, the plan was to have the family members with their respective state nodal officers, and those family members will be sent to the concerned hospital where these workers will be taken. Health facility, medical facility, or the hospital. Wherever they will be taking, the family members will be asked to head straight to that place. But if there is a change of plan, probably it would have been decided at the last moment, because there will be ambulances along with the medical team. There are only 2 or 3 members from each family, those who are here. So probably they will be going to those family members. But unless they come here, we will have the first images right here on the stretch when they come to this place. But as far as evacuation is concerned, so far the information is only about the breakthrough and insertion of the pipe, the auger machine still pushing that pipe to a safer, to a safer distance from the inside of the debris. Because as I've been saying, there could be suspended structure. और जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, आखिर उनके साथ कोई जिम्मेवार अधिकारी क्यों नहीं रहा उसने? ह्यूम पाइप क्यों नहीं डालेंगे? 850 करोड़ का जो ये टनल बन रहा है, इसको तो 2022 में बनना था, पेनल्टी पर ये बराबर चल रहा था। क्या आगे पेनल्टी लगाई जाएगी? कंपनी की जो सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्या जांच के विषय ये भी रहेंगे? जांच में क्या निकल के आएगा? ये सरकार फिर कंपनी के साथ लेपापूर्ति करके जांच को भी कहीं गुमराह तो नहीं किया जाएगा? है तुम सारा ले आए? मैंने कहा मंगवा लूँ अब। नहीं, मैंने भी कहा दिया, मैंने तो मंत्री को भी कहते अंकल जी को, मैं कहा मेरे को नहीं ऐसी नौकरी चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कहा मैं तो आन के बताऊंगा तुमको। क्या हुआ? बंदे को अरे बंदा नहीं मैं अरे लड़ो मत यार। अरे ठीक है, लड़ो मत, छोड़ो ना। कहाँ मत खोलो, मत खोलो। विल बी ओनली हैंड मूविंग, सिर्फ मूव करना है, ट्राइपॉड नहीं। वो तो उसका लगा हुआ अमित का, डोंट वरी अबाउट। मैं एक हैंडी करूँगा। हाँ है, हाँ उसके भरोसे मत रहना। विल बी ओनली डूइंग नागिन डांस। ओके ओके ओके। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ठीक है यार। हाँ बस गला जिन। हेलो आ जाओ। हाँ हरी।
अरे जला दो यार, धुआं मत करो, चिल्लाते समय गले में लग रहा है ये। ऐसे तो ठीक है, चिल्लाते समय गले में लग रहा है ना, बोलते हुए हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हंसी आ रही है। नहीं नहीं बैठ नहीं तो पकड़ना है। कौन है वो? कौन है? ये तुम यार, ये तो पवन जी को तो मैं चालू है। ये कहना चाहिए प्रधान जी, तुम हमारे कंबल खा गए, वो कब मिलेंगे? जरूर दिलाएंगे आपको। फिर वो कुरियर कर देना सबके ना, पूरी को दिल्ली मिलेंगे फिर तो। कुरियर कर देना, कुरियर करेंगे तो मजा बोल है मैं संजय फुल करे क्या भाई एंड अब एक 2-3 लीटर खत्म हो गया। चलो एक 2-3 घंटे में यहाँ से खत्म। सर कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, इसका बर्थडे हेलो बर्थडे बॉय है ये। गजब भाई, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आया हमें मिल गया पूरा। मैं बैठता नहीं। तो वही कर रहा था, इसलिए मैं यही खड़ा हो गया। अभी यही से निकलने बोल रहे हैं, मैं भी दिल्ली से आया हूँ। नहीं आप वही कर रहे हैं यार, आपको छोड़ दिया मैं ये तो, लेकिन यहाँ से भी निकलने तो मोबाइल से करता हूँ मैं। We are only hearing that, Gaurav, but only because immediately that won't take more than 5 minutes. The first is, since the Chief Minister himself is inside, immediate the evacuation takes place, the CM himself will be meeting them, because entire agencies, all the state machinery was waiting for this operation to succeed. And exactly from the front portals, we are waiting for that moment, because as and when they come out, immediately the first protocol is for the health team workers, the medical officials to examine their physical condition. And yes, for last 17 days, remember, initial week has been very challenging, because they could, from as narrow as a 4-inch dia pipe, they could only send dry fruits, and that couldn't be possible to survive for really a long time. So there have been complications, medical situation, and then the doctors had to give them medicines. But now what we see, they succeeded to make another breakthrough by sending a wider pipe, nearly a 6-inch dia. I see some people now literally going inside the tunnel. Are they the family members? We'll get a closer shot and then could probably get to know. There are few people are coming with their baggage and other things. If they are the family members, we'll soon identify them, will soon get their glimpse, but they are coming this way. And as and when they are coming out, remember, not only physical condition, the psychological condition was another challenging. So I believe and I know from my sources that there was a team, and in fact the workers from different states, one who speaks Odia, that worker was also called in to speak to them. And you know the difficulties, the level of difficulties for earlier the communication was, imagine this pipe has literally a 60 meter of length. One used to speak from this end, another from this end. You could barely speak more than 2 to 3 words, and that was audible and probably clear to hear, until they were able to send communication device, a loudspeaker and a microphone, and that was extremely at the last leg of these operations. But cutting with these images right here, so far we haven't been able to see the family members inside, because I remember the earlier officials told me that the protocol they have designed in a way that family members should meet these workers only in the hospital, so at least they could spend enough time together, because getting them inside the tunnel,
unless the safety is ensured, because that's extremely narrow passage, and inside there are only debris and debris all side, and only the machinery, heavy equipment, the blades, the harrow blades, the auger machines, other drilling machines, a lot of stuffs are inside, along with the ambulances which are just sent inside. And now the government officials who have been sent, including the chief minister, they'll be welcoming these workers once they start being evacuated. So we all are waiting for that moment, but for now, since the breakthrough is achieved, every minute is crucial. चाय का जब देखना मिले तो इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। संदीप थोड़ा केबल और देना, केबल थोड़ा और देना। इधर लगाओ, इस वाली होगी क्या आगे? उधर भी जगह है। सर जरा चेयर हटाएंगे क्या? मुझे कैमरा ले जाना उस पार, आपको उस पार। ये रही जगह। मीडिया मिल रहा है, मैं बजाज लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। उतारो उतारो, उस पे उतारो, मूवमेंट के लिए रहो। Stand by. Absolutely, multi-agencies, and you cannot even list them out. THDC,
ONGC, SGVNL, SVNL, RVNL, BRO, Army, of course Air Force, which airlifted all these machinery, and there are private companies, private Squadron, and then another expert from Lucknow. So if you count the number of agency, this says that probably there wasn't such operation, and particularly involving both the public sector and private sector, the government agencies in last 1 decade. Such operations we have seen, the operations of rescue and evacuation in Turkey. We have seen in Nepal. We have seen several floods, which is the expertise of army and the NDRF, which are often sent for the relief for the rescue and evacuation operation. But when it comes to difficulties and terrain like this, where you have extremely narrow passage, where are totally incommunicado, and when you establish a communication line literally without anything, then the logistic supplies in this terrain mountain at the more than 6,000 feet of the altitude, you have the narrow passages, you have the landslide areas, then the giant machines which used to come here were literally on obstructions. Multiple agencies were also used into ensure transportation. And as we speak, looks like General VK Singh has come back here, and he was here since morning along with other officials who is constantly monitoring the situation, and representative as a union government, and also the Minister of State for concerned Ministry Highway and Transport, General VK Singh has been taking a close talk. Yes, it's General VK Singh, and this is the former DG of Border Road Organization and the former Chief of Engineering, are now entering in the tunnel. He's speaking to the local officials, and now they both are entering tunnel. So that will be a moment when the both representatives from state, of course the head of the government in Uttarakhand, and of course the representative from the union government, General VK Singh, is entering inside the tunnel. They both will be welcoming these workers and keep their morale high. They have constantly establishing communication with whatever mean available. And the moment there was a breakthrough by sending a 6-inch dia pipe the other side, that was the moment there were proper communication, and that also helped those workers to keep them charged, keep their morale high, and keep their hope alive. And remember, Gaurav, in this kind of operation, you have to at least keep the hope alive that there are efforts being done, endless efforts being done, and they will be rescued. And that was a challenging task. General VK Singh wearing a safety gear, a helmet, which is of course the SOP while entering in the tunnel. This was to ensure the workers were, if one worker who speaks Udia, the other colleague Udia workers were sent in to speak to them from different languages, different states. This was to ensure proper communication channel, and almost every day or the other day, they used to get an opportunity to speak to their family members. You heard relative of Gabbar Singh Negi who's trapped inside. There are several such families, came from Uttar Pradesh, came from Jharkhand, from Bihar, from Odisha, who got an opportunity to speak to. Well, Nabila, the emotions and the commotion that I'm anticipating here, the world will not be just hope, but it will be a festival, not less than a festival. They did not celebrate Deepavali, they did not celebrate Chhat. It will be a celebration, a festive day, the moment they will be meeting their family members, be it the 41 workers or their family members, whether the meeting happens here inside the ambulance or inside the hospital. That really be a moment when they'll see literally collapsing every day. When they used to come here, they here get to know that operations being done is in last scales and last leg, and by evening, by tomorrow, by day after, they'll be out. But then by evening, going back to their accommodations arranged here, they were only
really taking back was the disappointment. In fact, every day we used to cover from different dimensions, different areas, to speaking to the experts, and everything that could anticipate that it is just matter of hours, if not days. But then, be it on 17th of November, be it on 21st of November, be it on 24th of November, every evening or so, virtually it was leading to a disappointment. And whenever there was massive situation, one could only anticipate that now this operation is little gone for all. And trust me, the day when this machine, the auger blades, I'll take you to these images of the hero blades of this auger machine. This is the standby American auger machine, was airlifted from Indore. The day we heard that these giant machine have literally collapsed against the drilling when there was a metal surface. That was the disappointment, and there was literally a pin drop silence. Several family members were literally crying, they were emotional, and they literally left in hope. But immediately, just was matter of hours, all the agencies, international, national experts decided, forget about these machines. We're gonna, take multiple approaches. Vertical drilling, multiple drilling, perpendicular, even from the other end near Barcode. But besides that, there was also discussion happening. And then now we need to cut out the muck, we need to cut out and remove the structures, the parts of the hero blades of the auger machine. And then they decided now it is the time to go conventional. The traditional method, of course, in the rat miners. And they were called from different companies, from different places who have the expertise. And when you have seen all efforts literally fail, shots. But Gaurav, India is known for winning several battles, which was always said that we the lost. So we are expert in winning the lost battles, and this is exactly what has happened. When this massive technology, everything that failed, the people, the manpower, the ordinary people who did extraordinary work, going inside the narrow tunnel. Imagine this is the hard surface. I'm walking so freely on this structure. Digging out such kind of structure is easier. But when you have a rock solid, literally boulders, metal structures, iron rods, when the machine failed to clear it out, to cut it out, to drill it out, it was the people, the team of the 12 people, the miners. In fact, imagine when this kind of operation is banned in India, it was a rescue operation when these extraordinary people were called in, and they were so confident. There one of the such person is named Munna, and India feel proud of Munna and his team who did this exemplary work, extraordinary work. Machine failed, these people by their hand, conventional. To imagine, the drilling machine, the very ordinary hilting machine. We do the drilling in our home when there is a RCC structure to drill out and to put out pasting. This kind of machine, very ordinary machine, they use inside the tunnel. Normal gas cutter, they cut down the material, clear the muck manually. Just imagine these kind of small plate, collecting the muck and then by a rope pulling it out. So this kind of operational, very conventional method, when every technology failed, every machine failed, the people with that courage. In fact, I asked Munna, and I am sure this message goes to the family of Munna, that there will be no oxygen inside. 60 meter depth, probably you will not be able to breathe. He said, I don't need anything. My brothers are inside, I'll go inside, I'll take them out, whatever it takes.
That was the message, and that gave me one moment of courage that finally it will happen. The breakthrough will happen. If not today, maybe tomorrow. It may take time, but finally it happened. Taking you to these images, a moment of wait. Perhaps they have waited for 17 days, and now every minute is crucial. They are waiting for this moment when the ambulances will come out. General V.K. Singh, along with the officials, carrying nearly 41 garlands, which will be, of course, it's going to be a special welcome for all of these workers who have literally had a race against time in the tunnel when there was no end to the level of difficulties, facing hardship, barely some light in the tunnel, you know, surviving only on dry fruits, then whatever food packed, sent. Workers from different states, they speak different language, but there was something keeping them united was the difficult situation, and these difficulties, they were united, they were together. One of them used to come to the pipe, and I cannot find literally that pipe here to demonstrate the level of difficulties. We are able to communicate through the satellite communication, through a mobile phone, but the first pipe that was already inside, even the debris fell down in the tunnel, that was one pipe. When everyone on the day this happened, most of these workers literally stepped out of this front portal from the tunnel. Those were strapped, and when they started finding where are the other people, they are going literally untraceable. Then the first sound that few of these workers heard from a very narrow pipe near the front portal. Then they started responding to that pipe extremely thin, nearly 4 inches of the dia. They started hearing some sound, and that was the courage and morale. They knew that someone would come to us, maybe in an hour or maybe in a day. Someone will hear to us. They were constantly sending out signals, and the signal was nothing but just a voice wave which was traveling a 60 meter in a very narrow pipe. And because of that wave that was followed, that was immediately informed to the NHIDLC. We are hearing some voices from inside, and that was the first channel established between them. 60 meter length of a pipe, and only they could hear 1 or 2 words, and that was a wave of the voice. And because of that, बैटरी चार्ज लगा के आया, बैटरी चार्ज लगा के आया। Well, at the moment, Nabila, every official, probably even our sources to get some inside information, they are engaged with this rescue operation and the evac operations. For now, what is happening is these number of the, these doctors that you're seeing in these images will be going in different ambulances. Of course, the primary checks will be done inside the tunnel, where you already have a team of medical experts inside, along with the, of course, the state government head. You have V.K. Singh, you have
Pushkar Dhami, the Chief Minister. So these people will take them in ambulance to the nearest health facility as and when it is required. So that is of course being lined up here in this difficult terrain. You see the number of, there are nearly 41 to 42 ambulances called up from all districts of Uttarakhand. And the doctors, those who have gone inside, will do the primary examinations of their health and the psychological condition. Few officials have already come out, and we are waiting for some official words about not just breakthrough, but the success of so far that they have been able to make. But for now, we are waiting for an official word while the the head of the governments and all senior officials inside. We are just waiting for one glimpse of the ambulance stepping out. So this is all a preventive steps. These are the preparedness, showing the preparedness of the state government, the administration, the authorities, that how ready they are to deal with any possible crisis. However, that shouldn't arrive at this situation at this moment, that we know the last leg is almost over and it is just waiting for those images of evacuation. And as we see, probably it is underway, but we need official words and those images what awaited. And there you see the people having literally patience at this time for last 70 days have been difficult. हाथ में उठाओ, इसको हटाओ, जल्दी से वॉक करेंगे पूरा। इसको हटाओ, हाथ में निकालो, इसको बाहर करो, पहले पूरा वॉक करना है चल के। हेलो, हाँ नेटवर्क चला गया था। हाँ, अरे गोदियाल जी, एक सेकेंड। संदीप, शॉर्ट्स पे जाना। ये जो काला बैग लेके खड़े हैं ना, जरा यहाँ से जाके पता करना ये कौन लोग हैं जो खड़े हैं यहाँ पे। अरे वहाँ से पता चल जाएगा ना कौन गए, कौन है, परिवार वाले हैं क्या उनके, गले में पट्टा भी है उनके। यहाँ भसूड़ी नहीं है, वाइट करने की।
मेरे उसमें टनल भी आता है क्या एक फ्रेम में? उधर रख के देखो जरा, टनल और मैं दोनों आ रहे हैं क्या एक फ्रेम में? क्लोज ला के देखो, कैमरा लेके जाओ, वाइड रखो, कैमरा लेके नजदीक आओ। ज़्यादा उधर है ना, ऊपर चढ़ोगे तो फिर ऊपर आप आ जाता है। ऊपर तो जाना है। उधर पीछे वाले स्पॉट पे चले, आगे चले, आगे है जगह। यहाँ से पहाड़ी बीच में आ रही है। आगे लाओ, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा। यहाँ ले आओ, अब तो लाइट भी चाहिए, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा। ये रहा, आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ और आगे लाओ, बस बस और आगे लाओ। अब ये रहा, अब मिट्टी कटी ना। अब चेहरे पर लाइट भी आएगी, दिखाना फ्रेम एक बार। बेसिकली बैकड्रॉप में टनल भी दिखे। वाइड खोलो, आ तो गया टनल। हाँ तो क्या है उतना, थोड़ा और क्लोज जाओ, थोड़ा और क्लोज जाओ, थोड़ा और, जितना बेस्ट पॉसिबल, और थोड़ा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये दें। इस वाले में लाना, इस वाले मैसेज में। इस वाले में लाना, इस पैसेज में, यहाँ यहाँ ला के देखते हैं। हाँ ये हो जाएगा, इधर लाओ यहाँ पे, क्योंकि लाइट चेंज होगी तब चाहिए होगा। हमारा मेन
हाँ 3 लोग. साहब मेरे पे लाना शॉट. Evacuation. Rescue mission was limited to cut down the debris, clear the muck and send the pipe inside. Now is the evacuation. However, you know, having known the expertise, Gaurav, of NDRF and how capable they are, the evacuation will not be really a big task because, of course, the length is quite 60 meters. But the accessories, the gears, which are totally prepared for the evacuation, and each individual out of 14, one may require maximum 75 to 80 seconds as far as evacuation is concerned, because they will be not dragging literally. There will be no friction between the surface of the 800 dia pipe and the stretcher, but there is a wheel, as we have been saying. It is a wheeled one, so there will velocity and the speed of evacuation will be quite high. In fact, as we speak, I was just trying to get a word from the officials of Navayuga. That's these are other two officials, Mr. Nair and his colleagues, and they were ones sending all the machines vertically, horizontally for the drilling process. They just came out and signaled me and asked him, how much time, sir? He literally, indicated that way. We are done. There was no victory number, we are done. I asked him how much time. He said, just wait for some time. So it is just matter of some time. All indications are, coming. And Chief Minister himself has announced that not just breakthrough, but the pipe has already been seen. And as we speak, we can anticipate probably the evacuation is underway. Probably the NDRF personnel would be going inside, and while the evacuation underway, this is a quite time-consuming, time-taking evacuation, medical examinations, and the interaction between the officials, including the Chief Minister, the Union Minister of State, because of course they'll be greeting. They have literally spent 17 days, having one of the worst and most difficult time of their lives. Perhaps one could never even imagine that this day could ever come. Trapped and literally losing hope. But then, as you have been asking, Gaurav, what was keeping the morale high? It was the communication. It was giving them a hope that we are here for you. We are doing everything possible. Look, the experts from India and across the world are coming here. We're getting the machineries airlifted.
all the agencies, Air Force is lifting the machines, everything is being done to ensure your safety and evacuation. But the safety was paramount. They never wanted to compromise the safety. Otherwise, you know, I remember there was a day when the local workers of the site and the locals from the near areas, they were so angry. They wanted to drill this and mark out manually. They all came in a huge number. Said, we'll mark out, we'll take out all of them, and that was literally law and order situation as well. It was difficult for them to make them understand, look, this is a very technical operation. They require absolute and a precise decision taking, as well as while this operating technically, because this is not a matter of logistics challenges, it was matter of challenges inside the debris, the physical condition, and also the fragile structure of the mountain. There was cavity inside. Well, this was one major concern immediately the day I landed here. I was asking the officials, because there is clearly no air going from this side and even another side remains blocked. How would they survive without oxygen? I was told, and then it was quite physically, having the understand the physics inside, it was possible. Remember, beyond the debris, which is some 200 meters from the front portal, the depth of the debris is 60 meters. Where these workers are across the debris side, from them to the another end where barcode, which is of course sealed, there is a distance of nearly 2 kilometers. My apologies, I thought I am hearing some slogans or chanting. This could be probably as a message of victory, but that doesn't happen. Of course, it's a curiosity. So because of the distance that they had right behind them was more than 2 kilometers, and these kind of situation, you have enough amount of oxygen for the survival of 41 workers, that how they could survive. But less than 48 hours through, because there was one pipe available for communication that was used for ventilation, and suppress oxygen machine were used to pump them out, pump them some more amount of oxygen. So that wasn't really very critical or crucial condition as far as oxygen situation in the tunnel is concerned, because 41 workers, even taking oxygen, breathing CO2 will not really impact in a such kind of huge tunnel size where you have a 2 kilometer of the space. In fact, even on the other side there were several vehicles, because that's a tunnel, that's a huge project. You have everything on the other side, but the challenge was to send your message out. This नायर साहब बाहर आ गए। 8 बजे इंडिया टुडे पे नायर साहब को 8 बजे इंडिया टुडे। संदीप, थोड़ा सा मदद करो, ये जो संतरे वाले जैकेट वाले, इनको यहाँ ले आओ ना इंडिया टुडे पे लाइव। ये छोड़ देंगे वो इनको? हाँ, छोड़ देंगे पहले वो। अरे बहुत सारे हैं वहाँ। हाँ, नीचे दीपक नीचे तो है। नहीं, उनका खत्म हो गया, उनको खाली इशारा करो ना सर, इंडिया टुडे पे लाइव है आज तक पे, तो आ जाएंगे यहाँ पे। खाली यार वहीं से मैसेज कर दो ना, इधर इशारा कर दो, मैं बुला लूँगा, आ जाएंगे। एक तो साला डीजल की हवा नाक में जा रही है। अब इधर ले आओ, इधर ट्राइपॉड इधर ले आओ ना, क्योंकि
हेलो, पहले वहां से लाइन तो ड्रॉप करा लो। नहीं ड्रॉप नहीं हुआ, मैं पैच था, मैं काट फोन बजा तो मैंने उठा लिया। काट आ रही है, ठीक है। आप समझिए कि उनके परिवार वालों से मिलते थे श्वेता, तो भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। और अगर आपने यहाँ 15 दिन बिता लिए हो तो ऐसा लगता है कि हम यहीं के होकर के रह गए हैं। तो हर दिन सुबह एक उम्मीद से आना और हर शाम को उस उम्मीद को तोड़ते हुए देखना। 24 तारीख को भी ऐसी ही जिज्ञासा हुई और उम्मीद जग गई और लगा कि बस अब सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 2:30-3 बजे होते 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 सूर्यास्त के पहले जो उम्मीदें टूट गईं। लेकिन फिर देखिए हौसला कि जब सारी तकनीक, सारी मशीन, सब धराशायी हो गया तो वो माइनर, हालांकि इस तरह की माइनिंग हिंदुस्तान में बैन है, रैट माइनिंग नहीं होती है, रैट होल माइनिंग, जो काम बैन है उस विशेषज्ञों को बुलाया गया, उन 12 लोगों की टोली, और उनमें से एक नाम मुन्ना याद है। हिंदुस्तान को फक्र है मुन्ना और उसकी टोली पर। उसने कहा था सर कुछ भी हो जाए, कितना भी पतली पाइप हो, कितना भी रास्ता हो, मैं जाऊंगा, सब काट के अपने भाइयों को निकालूंगा। ये संदेश मुन्ना के परिवार के नाम पे। अंदर वो तैयारियां हो रही हैं और अभिवादन 41 मालाएं वीके सिंह अपने साथ लेकर के गए हैं, क्योंकि वो किसी युद्ध से कम नहीं है। 17 दिन अंधी सुरंग में इस इंतजार में रहना कि आज बच जाएंगे, कल बच जाएंगे, हर शाम वो उम्मीदें टूट जाना और फिर लगना, कई बार गुस्सा भी आना, परिवार वालों से पूछते, बात करते, ये पूछना कि हम निकालेंगे कब, हमारे साथ कुछ होगा भी कि नहीं, हमें बचाया जाएगा भी कि नहीं। परिवार वालों की वो निराशा कि यहाँ कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है कि आज बचाएंगे तब बचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच रविवार से लेकर के शनिवार, सोमवार बीतते रहे और आज जब मंगलवार आया है तो मंगल घड़ी, मंगल खबर लेकर के आया है। मालाएं गई हैं स्वागत के लिए। एनडीआरएफ के कर्मी, हमें जो जानकारी मिल रही है वो कि वो उस पार पहुंच चुके हैं, लेकिन इवैक्यूएशन के लिए श्वेता कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। वो ये कि जहां मलबा है वहां से आप अंदर नहीं घुसा सकते, आपको पाइप मलबे के कम से कम 2 से 3 मीटर आगे ले जाना होगा, क्योंकि संभव है जो कैविटी बनी है सुरंग के ऊपर वहां से कुछ चीजें लटक रही हों, वो धातु हो सकती है, पत्थर हो सकता है, वो कहीं नुकसान ना पहुंचाए और रेस्क्यू कर्मियों को भी नुकसान ना पहुंचाए। जब वो सुरक्षा पूरी होगी, इवैक्यूएशन होगा। इवैक्यूएशन में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, पहिए लगे हुए हैं, ड्रिल उस मशीन पे, स्ट्रेचर पे फटाफट खींच लिया जाएगा। 65 से 70 सेकंड में हर आदमी बाहर आएगा, मालाओं के साथ स्वागत होगा। युद्ध जीत कर आए हैं ये विजेता हैं, इस सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहे थे। उन्होंने दिवाली नहीं मनाई, उनके परिवार ने दिवाली छठ नहीं मनाया, तो क्यों ना कहें कि आज उनके लिए दिवाली और छठ से कम भी कोई पर्व नहीं है। परिवार वालों को हर राज्य के नोडल ऑफिसर के साथ रखा गया है। कोशिश की जा रही है क्या उन्हें एम्बुलेंस में रास्ता दे करके साथ भेजा जा सकता है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मेरे पास थी उसके मुताबिक इन सबको अस्पताल भेजा जाएगा प्राथमिक जांच के बाद, जैसी उनकी स्थिति है, और वहीं पर वो मिलाप 17 दिनों के बाद होगा अपने परिजनों से, कई बार जिनको लेकर के चिंता दोनों तरफ थी। आप समझिए कि ऐसी स्थिति जहां आप 4 इंच पाइप में आवाज डाल के ये कह रहे हैं कोई सुन रहा है। मुझे जानकारी पता चली थी
जब ये मलबा गिरा लोग सुरंग के मुहाने से भाग गए, उन्हें ये नहीं पता था अंदर लोग फंसे हुए हैं। लेकिन घंटा 2 घंटे बाद जब गिनती होने लगी तो लगा कि मजदूर तो कम है, कहाँ हैं सारे लोग। तब लोग मुहाने पर गए देखने की क्या हो रहा है, और तब बाहर एक ऐसी पाइप पड़ी हुई थी और उस पाइप से कुछ आवाजें आ रही थी। ये ऐसी 4 इंच की ऐसी ही पाइप अंदर जो पड़ी थी हिस्से में मलबे में दब गई, टूटी नहीं, और ये पाइप लाइफलाइन बन गई कम्युनिकेशन की, जिसके अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। जब वो आवाज मजदूरों ने सुनी तो NHIDLC के लोगों को बताया, नवयुगा को बताया जो कंपनी ये निर्माण कर रही थी, कि हमें अंदर से आवाजें आ रही हैं। और उन आवाजों ने इस पतली 4 इंच की पाइपलाइन उनकी लाइफलाइन बन गई। पता चला कि लोग जिंदा हैं। शब्दों में फर्क होने लगा, जो आवाज गूंजती है उसकी वेव्स कानों तक पड़ने लगी कि हाँ अंदर जिंदा है, हम बचाएंगे, हम कोशिश करेंगे। 24 घंटे में खुदाई का काम शुरू हुआ। पहली मशीन देहरादून से आई, कोलैप्स कर गई, और उसके बाद आप देखिए वो जो आपको मशीनों भी दिखाऊं बाहर रखी हुई हैं, ये इस तरह की मशीन सबसे पहले दिल्ली से एयरलिफ्ट की गई। एयरफोर्स आ गई, NDRF आ गई, SDRF आ गई, दुनिया की एजेंसियां ONGC, SGNL, RVNL, हर किसी को बुलाया गया। एयरलिफ्ट करके मशीनें आई, लेकिन ब्लेड जब जाने लगी तो रास्ते में पत्थर आने लगे, बाधाएं आने लगी। इन मशीनों को पहाड़ के सकरे रास्तों पे, सकरे मोड़ पर, लैंडस्लाइड के बीच यहां तक लाना अपने आप में चुनौती थी। उन चुनौतियों बाधाओं को पार करते करते जब सामग्री यहां पहुंची तो मलबा टकराने लगा। 17 तारीख को ऐसा कंपन हुआ, एक छोटा रिक्टर अर्थक्वेक आया, मलबा नीचे गिरने लगा। जान का खतरा उन लोगों पर बनाई जो लोग जान बचाने के लिए वहां गए थे। तब चुनौती थी कि सबसे पहले रेस्क्यूअर्स की जान बचानी है, और तब बड़े बड़े इस तरह सीमेंट के ब्लॉकेट, इस तरह के स्ट्रक्चर उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से मंगाए जाने लगे। एक 60-70 मीटर लंबी माइक्रो टनल बनाई गई, और वो तस्वीरें आप देख पाएंगे जब धामी उन लोगों से बात करते हैं। जिस बक्से में बैठे हैं वो बक्सा नहीं, दरअसल इस तरह का 2x2 का ये सीमेंट का कंक्रीट ब्लॉक है। जब यह सुरक्षा सुनिश्चित हुई तब ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। हर उम्मीद बधी कि 5 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, और ऐसे जाते जाते एक मुहाना, एक पड़ाव वो भी आया 24 तारीख को, जब 48.9 मीटर पर जाने के बाद ऑगर मशीन ने जवाब दे दिया। उसके ब्लेड तारों के जंजाल में, जो जालियां हैं, तार हैं, रॉड है, उसमें इस तरह फंसे कि हेरो ब्लेड जो है उसकी टूट गई। दुनिया की सबसे ताकतवर खुदाई की मशीन इस सुरंग के भीतर जंग हार गई, और तब लोगों की जो कोशिशें थी, उम्मीदें थी, वो भी टूटने लगी, हारने लगी। और तब यह तय किया गया कि अब रास्ता निकालेंगे। पहाड़ के ऊपर सीना चीरने की कोशिश की गई। ONGC, SVGNL, RVNL को 24 घंटे में यहां बुला लिया गया। उनकी मशीनरी 48 घंटे में यहां पहुंच गई। BRO ने 48 घंटे में रिकॉर्ड तोड़कर 1100 मीटर का लंबा पैसेज पहाड़ की ऊंचाई पर इस कदर बनाया कि 86 मीटर ड्रिलिंग शुरू होगी। 48 घंटों के भीतर 44 मीटर काट दिया गया, लेकिन योजना ये थी कि अगर ऑगर मशीन नहीं गई, हम सबसे नजदीक है, 10 मीटर दूरी है, क्या कुछ नहीं किया जा सकता। तो उस टोली को बुलाई गई थी जिसका काम अब कहीं होता नहीं है। माइनिंग में सबसे सकरे इलाकों में जाना, कन्वेंशनल मेथड, कोई ऑगर नहीं, हेक्सा ब्लेड, ऑक्सीजन कटर, और वो मशीनें जिससे वो काम करते हैं सामान्य कंस्ट्रक्शन में, वो मशीनें लेकर के गए। 10 घंटों के अंदर सारा, 12 घंटों के अंदर ब्लेड निकाल दिया। जो रास्ते में सरिया आए काट दिया, पत्थर आए उसको ड्रिल कर दिया, हिल्टी मशीन से ड्रिल कर दिया। और उनकी मेहनत, उन 12 लोगों की मेहनत देखिए कि उस कन्वेंशनल पारंपरिक तरीके से जो दशकों से इस देश में होती आ रही थी। संदीप, किसी एक परिवार वाले को पकड़ लाओ यार। यहीं नीचे, यही नहीं, सब यहीं खड़े हैं, किसी को पकड़ लाओ। ये जो ढलाव है ना, यहाँ नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, वहाँ ढलाव पे से किसी को पकड़ लाओ। ये जो औरतें खड़ी उस पर नीचे ढलाव पे सब खड़े, किसी एक को ले आओ ना, भाई, भतीजा, चाचा, कोई हो।
को पकड़ लाओ ना नीचे से मेरे लिए, किसी परिवार वाले को पकड़ लाओ ना मेरे लिए। कौन है वो? कैसे पता परिवार वाले हैं? और कंफर्म है? ये सारे इकट्ठे हैं यहाँ पे, परिवार वाले कहीं जा पाए। ऐसा हो सकता है सर, एम्बुलेंस पक्का परिवार वाले हैं? सब अंदर गए परिवार वाले। कौन है? वो बैठे सब वही है ना? इनका पता क्या हुआ? परिवार वाले वही जाएंगे, वहाँ कोई नहीं, नीचे वही है। अगर चाय होगी, देखो चाय या कुछ ला रहा, थोड़ा देर में मेरा गला चोक हो गया चिल्ला के। एक मजदूर तो आगे बाहर, एक मजदूर नहीं पता, है, यहीं घूम रहा है हमारे पास। वो पीछे कोई ला रहा है, चाय पानी कुछ दे दो यार। मैं ये बता सकता हूँ कि कई सारे ऐसे लोग थे श्वेता जो रात रात सोते नहीं थे। एक और मजदूर जो थे उड़ीसा के, वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक उनका एक काम था, जितने लोग काम कर रहे हैं उन तक खाना पहुंचाना, और अपने उन मजदूरों के लिए जब लाइफलाइन पहुंच गई 6 इंच की पाइप तो खाना कौन जाए, उन्होंने कहा मैं पहुंचाऊंगा। सुबह 7 से लेकर रात के 1 बजे तक ड्यूटी, और वो ये कोशिश करते थे कि बस मैं खाना, महापात्रा जी थे वो सब ले जाते थे टिफिन के, वहाँ पहुँच जाए, बोतलें उस पार चली जाए। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो जानकारी मिली है, और अब मैं इसको औपचारिक रूप से कन्फर्म कर सकता हूँ कि उनके जितने भी परिवारजन हैं 41 मजदूरों के, उनके अपने यहाँ पहुँच चुके हैं। ये आप उनकी तस्वीरें देख रहे हैं, अपने सामान के साथ, अपनी पूरी चीज़ों के साथ उनको यहाँ बुला दिया गया था। हर राज्य ने जिनके मजदूर यहाँ फंसे हैं अपने नोडल ऑफिसर भेजे थे, और उन नोडल ऑफिसर्स ने यही किया कि प्रशासन के साथ ये समन्वय करते हुए जब ज़रूरत पड़े परिवारजनों से बात की जाए, क्योंकि बातचीत, अपनों से बात किए बिना, अपनों से बोले बिना आप हौसला कैसे लाएंगे, हिम्मत कैसे लाएंगे। अपना और परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है, और आज इनके लिए भी वही बेचैनी है, तो उतना ही इंतज़ार उन मजदूरों के लिए भी है जब वो कम से कम बाहर ये रोशनी देखेंगे, अंदर के अंधेरे से निकल करके। जिस 2 किलोमीटर का आपने जिक्र किया श्वेता, वही 2 किलोमीटर उनकी लाइफलाइन थी। अगर वो 2 किलोमीटर का दायरा नहीं होता तो संभवतः शुरू के 48 घंटे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती। जब वो काम करते थे, मजदूर हैं, वो इस टेरेन से अच्छी तरह जानते हैं, इन परिस्थितियों को जानते हैं, उनका शरीर ढला हुआ है। 2 किलोमीटर अंदर खाली स्पेस होने की वजह से अंदर इतनी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी कि वो हफ्ता 10 दिन सर्वाइव कर सकते थे अगर बाहर से भी पंप नहीं किया जाता, प्रेस नहीं किया जाता ऑक्सीजन। लेकिन जब पहली आवाज़ उनकी आई तब कोशिश की गई पहले ऑक्सीजन दिया जाए। ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, मूंगफली, कुरमुरे से आखिर आप कितने दिन जिएंगे, लेकिन हफ्ता भर वो जीते रहे। उसी के साथ उनको फिर विटामिन डी देने की कोशिश की गई, कैल्शियम देना शुरू किया गया, वो सप्लीमेंट, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे। और जब खाना मिलने लगा तो उन्हें कहा गया आप अंदर गाइए, गुनगुनाइए, थोड़ा टहलिए, प्राणायाम कीजिए, थोड़ा चलिए, कुछ योगासन ऐसे करें जिससे आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। शरीर कई सारी तकलीफें झेल लेता है। हमने और आपने उन परिस्थितियों में जाकर के काम किया है, कवरेज की है, जहां सामान्य स्थिति आदमी शायद न जा पाए। मजदूर एक टेरेन को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बंद हो जाना, कैद हो जाना, जान पर खतरा होकर के लंबा समय बिताना वो मुश्किल नहीं था। हौसला चाहिए था, और उस हौसले के लिए उनसे लगातार बातचीत की जा रही थी, और शरीर के साथ साथ कोशिश ये थी कि उनका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहे, क्योंकि अगर वो कमज़ोर पड़ा तो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता था। मैं आपको बताऊं
कई मजदूर ये कहते रहे साहब आप बोलो हम इधर से खोदना शुरू करते हैं। ये संभव भी था उनके लिए कि 1-2 मीटर खोद भी डालते, लेकिन मलबे के ऊपर जो कैविटी बनी थी अगर वो और गिर जाती, जब मशीनें चली तो गिरी, उनकी तरफ गिरता तो न जाने क्या इतना बड़ा हादसा हो जाता। इसीलिए हर कदम फूंक कर रखा गया और अब इंतजार उन परिवारों को है जो इन गाड़ियों के पास रुके हैं। जैसे जैसे एम्बुलेंस में उनके अपने निकलेंगे उनमें से हर परिवार के सदस्य को साथ भेजा जाएगा कि जाइए अब ये पल आपका है, यहाँ से जिंदगी आपकी है, अपने आप के साथ हैं, अब त्योहार मनाइए, खुशियाँ मनाइए, घर जाइए। हालांकि हमें जानकारी मैं भी आपको बता दूं सबका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन की व्यवस्था दरअसल उस पाइप में ऐसी की गई है जिसको वेंटिलेशन कहते हैं और क्रॉस वेंटिलेशन, जिस मुहाने पर पाइप है वहाँ बाहर ऐसा ब्लोवर लगा है कि हवा निकलती रहे, क्योंकि जब आप 60 मीटर पाइप के भीतर जाएंगे तो ये चिंता थी कि सांस कैसे लिया जाएगा, तो उसमें सांस लेने की व्यवस्था की गई है। दूसरा, अंधेरे के चलते क्या क्लास्ट्रोफोबिया हो सकता है। मैंने आज सुबह फिर उस पाइप में एक 6 मीटर जो लंबी पाइप थी उसमें जा करके समझने की कोशिश की कि जब आप स्ट्रेचर के साथ ड्रिल करेंगे तो कितनी दिक्कत हो सकती है। तो LED की पतली पतली स्ट्रिप लाइट है जो पूरी पाइपलाइन में लगाई जा रही है ताकि पर्याप्त रोशनी रहे और उनको जो समय लगेगा, हमने जब स्ट्रेचर को 6 में खींचा था, जब उसमें पहिए नहीं थे तो थोड़ा समय लगा, लेकिन जब व्हील्स लगी हैं, दोनों तरफ रोप लगी हैं और स्ट्रेचर पर बेल्ट होते हैं हार्नेस की तरह जो आपको टाई कर देंगे, तब उनको जल्दी भी अगर निकालना हो तो 70-75 सेकेंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा उनके इवैक्यूएशन प्रोसेस में। यानी NDRF कर्मियों को उस पार पहुंचने में, यानी 60 मीटर की दूरी तय करने में जो समय 3 से 4 मिनट लग सकता है, क्योंकि उन्हें क्रॉल करके जाना है, फिर अपना सारा सामान खींचेंगे, रस्सियां अंदर खींचेंगे, लाइट, कटर, हर जरूरी सामान। जब वो पहुंचेगा उसके बाद असेसमेंट करके, और संभव है कि जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जानकारियां साझा कर रहा हूं, ये देखिए एक और तस्वीर हम देख रहे हैं, फिर हलचल बढ़ी है। कुछ और लोग हैं जो अब सुरंग के भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्थानीय प्रतिनिधि भी हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई इस ऑपरेशन को करीब से देख रहा था, हर कोई ये प्रार्थना कर रहा था। एक तरफ भारी भरकम जो है मशीनरी काम कर रही थी, तकनीक काम कर रही थी, तो ठीक सुरंग के मुहाने पर जो है एक मंदिर भी बना दिया गया था, क्योंकि सबको ये था कि अब कम से कम ईश्वर के प्रति आस्था और ईश्वर का आशीर्वाद कोई ना कोई करिश्मा कर सकता है। और एक दिलचस्प बात बताता हूँ श्वेता, जहाँ ये मंदिर बना है वहाँ ठीक पीछे दरअसल पानी का एक स्रोत फूट गया और वहाँ एक आकृति बन गई। कल सबने ये मान लिया कि देखिए साक्षात शिव शंकर की आकृति यहाँ पर हुई है। आस्था हमारे बहुत चीज़ें मानती हैं और हम जब मानते हैं, मान्यता रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो विश्वास की जीत भी हो सकती है। वो भगवान शंकर की आकृति हूबहू थी या नहीं थी, लेकिन लोगों का ये विश्वास था और तब से कल से कहने लगे, पूजा पाठ होने लगी कि अब तो साक्षात शंकर प्रकट हुए हैं तो ये आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, और वो प्रार्थनाएं काम भी आई, बारिश हुई नहीं। 2.5 से 2 मिनट में वो बहुत हल्की फुल्की बरसात, उसने थोड़ी ठंड ज़रूर बढ़ा दी, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं। अब आस्था 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को ही नहीं, जो स्लोवेनिया से वो विशेषज्ञ आए थे, जो इंटरनेशनल और अंडरग्राउंड टनलिंग स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ जब उनकी मदद मांगी गई थी, सबसे पहले हमने ये जानकारी दी थी कि अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ इसमें शामिल हो रही हैं, और प्रोफेसर आर्नोल्ड ने मुझसे स्लोवेनिया से संपर्क साधा था। वो एक शख्स को देख करके एक अजीब सी अनुभूति होती है। वो जब से ये मंदिर यहाँ स्थापना हुई थी, हर बार प्रोफेसर आर्नोल्ड अंदर जाने के पहले, बाहर आने के बाद, दिन में चाहे 4 बार जाएं,
वो पहले उस मंदिर पे जाते थे, माथा टिकाते थे। बाबा भौकनाथ के साथ वहाँ माता काली की भी एक तस्वीर रखी हुई है। और प्रोफेसर आर्नोल्ड ने मुझसे 6 दिन पहले रात में संदेश भेजा था, जब मैंने उनसे पूछ रहा था कि हो क्या रहा है, क्या होगा। उन्होंने कहा ये हिमालय है, ये पहाड़ है, उसने अपनी संरक्षण में लोगों को रखा है और हिमालय उन्हें कब सौंपेगा ये हिमालय ही जानता है। बहुत जिस तरह की बातें थी उनकी, उस आध्यात्म की तरह मैंने उनसे पूछा तो आप करेंगे क्या, आपकी विशेषज्ञता, आप विशेषज्ञ हैं, आपकी निपुणता है इस चीज़ में, इस तरह के ऑपरेशन को देखने में अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ। उन्होंने कहा मैंने माँ काली से एक डील की है। अब वो उसके बारे में नहीं पता, मैं चाहूँगा कि जब ये ख़त्म हो मैं उनसे मिलूं कि आखिर वो डील क्या थी। लेकिन वो जब वो प्रार्थना करने यहाँ जाते थे, पूरे यहाँ के लोग, चाहे कारीगर हो, पुलिसकर्मी हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन, सूबा, जितने लोग हों, हम सबकी नज़र पड़ती थी कि ये भी एक आस्था है। वो किसी और धर्म के हैं, वो किसी और देवता को मानते हैं, लेकिन आज किसी और देवता को देख करके भी उसके सामने माथा टेकते हैं, अपनी आस्था रखते हैं। और आज देखिए कि जितने लोग थे, प्रोफेसर आर्नोल्ड ने जो शुरू की, आज वो परिपाटी हर किसी ने उसका पालन किया। और जब भी जाते थे, जब भी कोई जाता था चित्रा, हर कोई उस बाबा भौकनाथ और माँ काली की प्रतिमा के आगे, उनकी मूर्तियों के आगे माथा टेकता था। आज भी 3 पुजारी वहाँ बैठे हैं और उन्होंने तो प्रण लिया है जब तक बाहर नहीं निकलेंगे वो यहाँ से हटेंगे नहीं। सुबह शाम वहाँ ज्योति जलाई जाती है, हर कोई अब माथा टेकता है। जो भी विशेषज्ञ, वीके सिंह हो, मुख्यमंत्री हो, जब भी आते जाते हैं वहाँ माथा टेकते हैं। कोशिशों के साथ भगवान का आशीर्वाद, ये हमारी परंपरा रही है, हमारी प्रथा रही है, ये हमारा धर्म भी कहता है, और आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मंगलवार को बस मंगल खबर आने ही वाली है। पानी देखो कहीं मिल जाए तो, किसी के पास है उधर पूछना। फ्रेम लॉक करके छोड़ दो, देखो पानी मिले नहीं तो। बंद, इंटरनेट बंद कर दिया ताकि फोटो वोटो शेयर ना हो। I can't hear, मेरे कान में आगे आ जाओ चाहिए तो, और आगे आ जाओ चाहिए, तुम्हारे से टकरा के गर्म हवा, और ले आओ, आगे ले आओ, मेरे पास है जगह, आगे ले आओ कैमरा। क्या ग्राफिक्स काट रहे हैं कि वो देखना, में ऊपर भी दिखाना है, वो महिला हाथ में उतार लो, हाथ में उतार लो, अब घूमेंगे। अरे वायर कहाँ खींचना, यही करना, कहीं जाना थोड़ी ना है। कभी भी केबल करना हो तो केबल के क्रॉस रखते हैं, ऐसे रखते हैं पैर, केबल को बीच में, ताकि पैर में ना आए। केबल क्रॉस करो एक पैर, उसे क्रॉस नहीं होगा। ये वाला पैर केबल के उस पार करो, हाँ अब नहीं आएगा बीच में। थोड़ा नज़दीक आ जाओ, थोड़ा नज़दीक आओ। वो जनरेटर का वो आ रहा है ना, डीजल।
अरे डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। गुंडा। बाइट चल रही है, ले आओ जल्दी से बाइट चल रही है। हटा दो मैनुअली। अरुण जी क्या खबर? क्या खबर? अरे अरुण जी, आशुतोष मिश्रा बोल रहा हूँ, क्या खबर अब तक? परिवार वाले कहाँ हैं? साइड पे है ना, साइड पे। अच्छा, ये जो एम्बुलेंस के साथ खड़े वही लोग हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको फ़ोन करूँगा, मैं करता हूँ। 1 इंच इधर होना, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इधर। एक पैर नीचे रख लो ना, इस साइड। हाँ बस। हाँ हाँ, लाइन पे हूँ मैं। एक्चुअली कॉल ब्रेक कर रहा था किसी से बात करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। फ्रेम दिखाना है। टनल के आगे बता, इसीलिए कॉल आया। क्या हुआ? टनल के आगे बता। तो और हल्का सा इधर कर दो टनल को। हाँ,
जानकारी के मुताबिक 6 एनडीआरएफ और 2 एसडीआरएफ के कर्मचारी, लगभग 8 लोगों की टोली है। दरअसल इस समय यहाँ जानकारी जुटाना सूत्रों के मुताबिक मुश्किल हो रहा है, इंटरनेट ही लगभग ना के बराबर चल रहा है। तो हम जो नॉर्मली हमें जो संदेश हम कई बार होता है कि रिपोर्टिंग करते हैं और संदेश के जरिए आपको खबर पहुंचाने लगते हैं, इंटरनेट ही पूरे इलाके में कोलैप्स हो गया। ज़्यादातर लोग कोई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्थानीय लोग लाइव कर, लेकिन हाँ ये जानकारी कंफर्म हो चुकी है कि लगभग 8 लोग उस मुहाने पर पहुंच गए हैं जहां मजदूर हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म, हालांकि जो पाइप थी वो मलबे से लगभग 2 मीटर आगे ले जाई गई है, वो इसलिए कि 2 मीटर की दूरी ठीक होती है, मलबा कोई ऊपर से और न गिरे, नुकसान ना हो। अब ये रैंप क्या है, दरअसल पाइप मलबे में एकदम नीचे नहीं है, वो थोड़ी ऊंचाई पर है, मजदूर नीचे हैं। तो रैंप का मतलब है कि मिट्टी, वहां मौजूद पत्थर, उन चीज़ों से एक ऐसी सीढ़ी नुमा चीज़ या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे वो चलकर पाइप पर जा सके, प्लस स्ट्रेचर को भी उतारना है। अब उनको स्ट्रेचर पर लिटाना होगा। जो ऑरेंज कलर का स्ट्रेचर है उसमें नीचे पहिए हैं और उसके दोनों मुहाने पर, पहला और दूसरे मुहाने पर हार्नेस लगी हुई एक बेल्ट है। दरअसल उसमें लेटने के बाद ऐसा ना हो कि बीच में स्लिप करे या जो है स्ट्रेचर जो है पतली टनल में जब जाएगी, माइक्रो टनल में, तो हिले डुले ना, तो उनको बाकायदा रोप कर दिया जाएगा ताकि वो फिक्स रहें। स्थिर अवस्था में उनको हिम्मत देना कि बस अब 2 मिनट की बात है, 3 मिनट का समय दरअसल ये पूरा हो सकता है। उनको उठाना, उठा करके पाइप के अंदर पहुंचाना, और दोनों जो आप समझिए जो स्ट्रेचर है उसके एक हिस्से पर भी रस्सी है, दूसरे हिस्से पर भी रस्सी है। जैसे आपने एक को डाला, दूसरे छिरे पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग हैं वो फटाफट रोप को खींचने का काम करेंगे। पाइप में अंधेरे के चलते क्लस्ट्रोफोबिया ना हो तो स्ट्रिप की एलईडी स्ट्रिप लाइट चिपकाते हुए गए हैं ताकि पर्याप्त रोशनी हो। लगभग 57 से 58 मीटर की दूरी है जो उन्हें जो अंधेरे में बितानी होगी, और उस 57 मीटर में 70 से 75 सेकंड का ही अधिकतम समय लगेगा, क्योंकि जो खींचेंगे वो जल्दी खींच लेंगे, इतनी हिम्मत उन्हें दी गई है। और उन मजदूरों को भी तो इंतजार है निकलने का, तो रैंप बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और मुझे जहां तक याद है, जब ये कहा गया था कि 5 बजे संभवतः आज जो पहली तस्वीर देखेंगे, शायद 50 मिनट का समय बचा है, हो सकता है उससे कम समय में। अंदर व्यवस्था ये की गई है कि जब वो बाहर आएंगे, अंदर का तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच में रहता है, क्योंकि वहां पर खुली हवा, वेंटिलेशन नहीं है। लेकिन जब वो बाहर आएंगे तब, इस समय तापमान यहाँ 10 डिग्री के नीचे है, कब कड़कड़ाती हुई यहाँ पर सर्द है, इसलिए मल्टीपल लेयर हमें पहननी पड़ रही हैं। जब वो बाहर आएंगे तुरंत उन्हें जो है ऊनी कपड़े और गर्म कपड़े दिए जाएंगे, कंबल की व्यवस्था की गई है। जिस अस्पताल का आपने जिक्र किया कि जो बनाया गया टेम्पररी, वो अस्थायी इसलिए बनाया गया है कि उनका परीक्षण होना जरूरी है, मानसिक परीक्षण, शारीरिक परीक्षण, कि क्या उन्हें किसी तरह की तकलीफ है। सबसे बड़ी बात, 41 मालाएं अंदर गई हैं जिन्होंने वक्त के खिलाफ जंग लड़ी है। उन योद्धाओं का स्वागत तो होगा, और स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से राज्य मंत्री वीके सिंह अंदर मौजूद हैं। स्वागत सत्कार होगा। परिवार यहाँ पर दूर खड़ा, मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाता हूँ उस परिवार की। हर परिवार के सदस्य यहाँ पर, उनको बाकायदा आईडी दिया गया है, वो यहाँ खड़े, उनकी तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, वो यहाँ खड़े हैं। एम्बुलेंस से सीधे उस मेडिकल सेंटर ले जाया जाएगा चिन्याली सौड़ में, जहाँ पर विशेष हेल्थ फैसिलिटी बनाई गई है। और आज अपनों से अपनों का मिलन होगा, उनका मिलना, इंतजार खत्म होगा, त्योहार शुरू होगा। सीधे आओ। जरा आज तक लाइव लगाना, आज तक लाइव लगाना जल्दी से, मुझे स्क्रीन दिखाना जल्दी से। अरे नॉर्मल यूट्यूब पे खोल दो, ऐप पे दिखाना। इंटरनेट बंद कर दिया क्या? नहीं नहीं, बहुत तेज चल रहा था। कैमरा हैंडी उतार लो, हम पैन करेंगे 360, वो ऊपर जो दिखाना महिलाओं को। स्टैंड बाय, स्टैंड। सुरंग के भीतर जो तैयारियां हैं ये बताती हैं कि बस सब कुछ
एक लम्हे का मोहताज है। वो लम्हा होगा जब वो इवैक्यूएशन होगा। आपने सुरंग के भीतर की तस्वीर दिखाई, मैं आपको बाहर एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा चित्रा, जो ये बताता है कि पूरा देश के साथ साथ उत्तरकाशी, ये पूरा जिला, स्थानीय लोग इन पहाड़ों में बसे, न जाने कितने गांव के लोग 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आ गए हैं। जितने छत मकान हैं, ढर्रे हैं, घर हैं, छत हैं, लोग वहाँ बैठ गए हैं। दरअसल पहाड़ी के उस टीले पर जहाँ जगह भी नहीं हो, वहाँ भी ये देखिए महिलाएं बैठ गई हैं। और ये सब इस मेरे पास आओ, वापस आओ। मार्च करें, मूव करें। और इस इवैक्यूएशन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस अब ये लगता है कि इवैक्यूएशन मुश्किल होगा। सबसे बड़ी मुश्किल थी उन तक पहुंचना, ब्रेक थ्रू बनाना, मलबे को काटना, जिस मलबे ने सबकी हिम्मत तोड़ दी थी, मशीनें तोड़ दी थी, विशेषज्ञों के अनुभव को धराशायी कर दिया था। लेकिन 12 वो कारीगर, कुशल कारीगर, जो रैट होल माइनिंग एकदम जो है देश में बंद है, उसकी अनुमति नहीं है, लेकिन जिसका काम बंद है, उनकी कुशलता ने, वो 12 लोगों ने जाकर के वो कर दिया, वो चमत्कार कर दिया, जिसके सामने तमाम तकनीक, सारी दक्षता, सारी मशीनें, पूरे दुनिया के विशेषज्ञ फेल हो गए। और ये उन्हीं की बदौलत है, ये उन 12 लोगों की बदौलत है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, दरअसल ये विशेषज्ञ हैं, जिसको आप ग्रीन जैकेट में देख रहे हैं। दरअसल ये नवयुगा, NHIDLC और साथ में जो लाइट है, पर्याप्त व्यवस्था बिजली की गई है, वो इसलिए सुरंग के भीतर की तस्वीरों के साथ साथ हम आपको बताया कि आप देख क्या रहे हैं। दरअसल ये जो देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि आखिर अंदर कैसे जाना है। जो आप ग्रीन जैकेट में देख रहे हैं, दरअसल ये वो NHIDLC और नवयुगा के लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। साथ में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, बिजली के साथ साथ स्कैनिंग की व्यवस्था है, मशीनों की व्यवस्था है। इसके साथ साथ वो पाइप दिखाई दे रही है, जहां पर आप देख रहे हैं कि हाथों का सपोर्ट लेकर के लोग खड़े हैं, ये वो स्क्यूब टनल है। इसके साथ ये जो पहला, जिस लड़के के सर पर आप पीली टोपी देख रहे हैं, ये उन 12 लोगों में से, अगर हम वापस उस लड़के की तस्वीर दिखा पाए जिसके सर पर पीली टोपी थी। इस पे रख दो, यहाँ रख दो। ये मेरे लिए प्लाज्मा का काम करेगी, रख दो। बस अब जरूरी नहीं है पैन करने। चलाओ ना, चला के छोड़ दो वहीं पे। ले आओ यार, इधर मेरे को मेरा गला तर करना, जल्दी दे दो भाई। ये क्या कर रहा है ये?
महिलाएं आ रही हैं यार, कर रहा था। चाचा हाथ धुला दो जल्दी से, हाथ धुला दो, हाथ धुला दो थोड़ा सा। हाँ हाथ हाथ थोड़ा सा आपको किनारे में। एक सेकेंड। भाई धुआं मत होने देना, बोलने में गला फट जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। कोशिश रखना कि आग लपट रहे, धुएं से बोला नहीं जाएगा। आज हरप्रीत रात में गाड़ी चलाएगा। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। अरे वो जॉन अब्राहम वाली फिल्म का नाम क्या था जिसमें पोखरण परमाणु परीक्षण किया था? पोखरण था, पक्का देखो नाम चेक करना। तुम्हारा नहीं नहीं फोन चलने दो, वो क्लास में है, म्यूजियम का काम करेगा। चेक करना जरा गूगल पे क्या नाम था। ऑनलाइन फोन देना तो मैं प्रोड्यूसर को चला जाता, फट से गाना निकाल के मोन्टाज में मार देगा। अरे वो आपके इंडिया वाले कहाँ बोलो रेडियो में सुनने के लिए यार। कुछ आ रहा है कि नहीं रेडियो पे? आपका सीओ बाहर आ परमाणु देखा मैं क्या, बस ठीक है। मैं तो कल से ही छुट्टी पे 10 तारीख मैंने 4 से मांगा तो बोले
यही काम करते हो? यहीं पे बिहारों से हो? अरे यार आओ हमारे, आप भी बिहारों से हो? आओ आओ हमारे साथ बात करो। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, 48 घंटे में सड़क काट के साला मुंह बना दिया। अबे राजा भाई चाय ना लाए क्या? चाय नहीं अभी जब मैं बोलना शुरू करूँगा इनको दौड़ा देना सब हिलो यार। आना, हम भी मैं बोलूँगा ना, जब बकबक करूँगा तो आ जाना उधर। तो नहीं इसके लिए बोल देना ना कोई एक हाँ ये भी लगता है पहले निकल के आया। ये भी लगता है मंगलसूत्र को हटा दे, मंगलसूत्र हटा, मंगलसूत्र हटा दे। चीनू हेलीकॉप्टर आ गया। ऐसे खबर तो जल्दी बल्दी कुछ होगी। कहाँ जाएंगे ये? दिल्ली हो सकता है, दिल्ली एम्स हॉस्पिटल सीधा एयरपोर्ट वहाँ दूर पड़ेगा ना, यहाँ वही आसपास है। अरे यार अपने हरिद्वार में है इतना जाने गए ऐसे तो रेसी कैसे आएगा? हाँ ये पास पड़ेगा, यहाँ भी पास पड़ेगा। चीनू के हेलीकॉप्टर से कल सबको ले जा रहे हैं। हम यहाँ रुकेंगे नहीं, चिन्याली सौड़ जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ वो ले जा रहे चिन्याली सौड़ सबको, यहाँ कोई नहीं रहेगा। नहीं, यहाँ से तो हम लोग हट चलेंगे चिन्याली सौड़, कर बस कर दिया जाए। सामान बांध के सीधा चिन्याली सौड़ में होटल, और सुबह उनको जाने का। सुबह हेलीकॉप्टर से गए सब देहरादून। के पास ही रहना यार, ये किराना अभी 3 पॉइंट बैटरी कितनी है? बॉल आया होगा ना तुम्हारा दूसरा यूनिट वाला, उससे ही लूँगा। लूँगा मतलब मैं तुम्हें बोला था ना दूसरी यूनिट आ रही है, मंगा लो। वो तो दीपक सर के लिए लेके आए। दीपक का छोड़ो, तो अपने लिए तुमने क्यों नहीं मंगाया? आपने तो बोला था जाना है, लेकिन ये बोला था अब मुझे लूंगा ना, लेके तो आए होंगे वो। बेसिक कॉमन सेंस अरे यार लूंगा ना। अरे फिर कोई बात मंगाया है। अरे मैंने नहीं मंगाया कुछ भी, मुझे आपने बोला उनको पूछ लो। मुझे आपने कहा था कि जाना मैंने बोला हमें जाना, लेकिन पहले ही बोला था दूसरी टीम आएगी मंगा लेना उसको बैटरी। इवन जब दीपक आ रहा था तब भी कहा था दूसरी यूनिट आ रही है मंगा लो। तब तो मुझे बताया ही नहीं किसी ने। ये बैटरी खत्म हो रही कौन बताएगा? ये खत्म दीपक जब आ रहा था सत्या, ये कौन बताएगा कि बैटरी खत्म हो रही है हमें मंगाना चाहिए? ले तुमने मंगाया था दीपक से, क्यों? मैंने बताया था एक और टीम आ रही है, अमित भारद्वाज और ये आ रहे हैं। मैंने नहीं बताया था तुम्हें कि एक और टीम आ रही है मंगा लो? वो पता है ये केयरलेसनेस है, सीधा लापरवाही है ये सीधे लापरवाही है। तो अमित भारद्वाज वो अगर वो नहीं देगा तब तुमने मुझे बताया था सिर्फ 2 सेट है। किसका ये जो फोटो चल रही है विंडो में, इस फोटो में एक लड़का है जो एक पाइप है, पाइप के लेफ्ट साइड बैठा है, उसकी टोपी येलो कलर की है। इसका नाम है मुन्ना, ये है रैट माइनर। बता देंगे तो इसको हम सर्कल कर सकते हैं। इसी की टीम थी जो गई है खोदने।
Stand by. नहीं निकाल तो लेंगे। वो एक्चुअली चिनूक का टाइम खत्म हो गया ना, 4:30 टेक ऑफ करना था, 4:30 हो गया। तो कह रहे हैं आराम से लाओ, अस्पताल में रखो, सुबह 7 बजे उड़ा देंगे चिनूक 6:30। अच्छा है, तो हो सकता है सुबह भी हो जाए, मतलब नहीं निकाल। एक्चुअली वर्कर तो चले गए उस पार, पाइप में तो घुस गए हैं। एनडीआरएफ और 2 एसडीआरएफ के घुस गए हैं उस पार। 8 लोग गए हैं, 8 लोग गए हैं। मुतने को आगे चूतिया
दरअसल जो जानकारी अभी एनडीएमए की ओर से दी गई है चित्रा, हम लगातार 2 बजे से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वो मुश्किलें आखिर कहां हैं। रैट माइनर्स ने पूरा खोद दिया, उस पार चीजें दिखने लगी, मजदूरों से संपर्क स्थापित हो गया, यहां तक कि 8 लोगों की टीम भी चली गई। लेकिन हम ये बता रहे थे कि जहां मलबा खत्म होता है पाइप वहां नहीं रोकी जाएगी, क्योंकि अगर आप वहां पाइप रोकते हैं, छत के ऊपर जो सुरंग का हिस्सा वहां कैविटी है, वहां लोहा हो सकता है, वहां गार्डर हो सकता है, जो मेटल आर्च से टनल बनाई जाती है वो लटका हो सकता है, और अगर वो गिर गया तो आप समझ सकते हैं किस तरह की अनहोनी हो सकती है। तो तरीका क्या है, मान लीजिए अगर ये मुहाना है जी,
थोड़ा उधर होना भाई साहब, उधर होना पड़ेगा। इधर आओ, इधर इधर इधर, बस यहीं पे रुको, यहीं पे। हाँ, आगे आ जाओ, आगे जितना मर्जी हो। हाँ, आगे आगे इधर हो जाओ सर, बस थोड़ा सा, बस यही यही पे मार्क बना लो अब, यही पे थोड़ा थोड़ा सा इधर हल्का सा, बस। एक बढ़िया फोटो लो, ऐसे बढ़िया फोटो लो उधर से, ऐसे ऐसा लेना, सुनो ना, वो भी दिखाई दे जाए। उधर से देखो ना बना करके, डू दिस फोटो, नो फ्रॉम हियर। क्यों? तो इधर उधर आएगा, फ्रॉम दैट, या फ्रॉम दैट साइड ऑफ द टू ओबी, दैट साइड ऑफ द ओबी, और पीछे, और पीछे, अब आएगा। अच्छा फिर ऐसे ले लो मेरा टनल के साथ इधर से। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। फ्रेम दिखाना। ऐसा करिए ना, उनको कॉल करके या मुझे नंबर भेज दीजिए, मैं उनको बोलता हूँ ऊपर ही मुझे वो पकड़ा जाए बैटरी चार्जर, तो मैं यहाँ लगा के देख लेता हूँ। सब चालू नहीं हुआ आपका लाइट? अरे वो एक ऑफिसर जुड़ गया लाइन पे। अच्छा ये लोग आकर मुझे ब्रेक मिलता है ना? मैडम को भी फ्री कर दो सर, मैडम बार बार अरे यार एक फोटो सर लगा जल्दी अब ये ऐसा
स्ट्रेट लुक देना जरा मुझे एक बार, थोड़ा आगे आओ, आगे किस साइड, थोड़ा आगे किस साइड, थोड़ा और, बस मैं अरे वो सेंट्रल फ्रेम में होता है, जब विंडो कटता है तो टनल नहीं दिखता। दिखाना मुझे अरे सब दिख फ्रेम, दिखाओ विंडो। मुझे सब, बस यही तो मुझे मार्क लगाने दो बस। इस पे थोड़ी न खड़ा होना, जहाँ मार्क इसको कहते हैं। वो दिखेगा नहीं, उसको मत, मेरे को दिखेगा, मुझे दिखेगा। वो मेरा सही, खड़ा हो जाऊं उस पे? मैं समझाऊंगा ना कैसे खड़े होगे। इधर हो, अपना फ्रेम तो तुमसे बनता नहीं है। अभी विंडो कटेगा, जरा देखना लाइव करके कैसा दिखेगा। अच्छा, फिर ग्राफिक्स के लिए बोला होगा। ग्राफिक्स के लिए नहीं बोला, कॉल आया है, हाँ, की ग्राफिक्स के लिए बोला। ग्राफिक नहीं, हमारा विंडो दिखनी चाहिए, कोई की ग्राफिक नहीं। विंडो ही काट दो, मैं फ्रेम से ही हट जाता हूँ आगे, मेरे को तो और अच्छा है। राजेश, राजेश, मेरा फ़ोन का ईयरबड दे दो, मेरे फ़ोन का ये वो दे दो, चार्जर भी लाके ना, चार्जर इसमें लगाना, इस वाले में, और ये फ़ोन डाल दो, तब तक ये भी बैकअप आ जाए। उसकी बैटरी हो गई होगी ठीक ठाक। चार्जर निकाल लो, पूरा निकाल लो, चार्जर भी निकाल लो, उसको मत खोल, अरे उसको रख, पूरा तो सुनो, इसको ले आओ, दे दो मुझे, चार्जर भी निकाल लो, चार्जर इसमें लगा दो और फिर फ़ोन लगाना है। निकालो चार्जर, मल्टी कमांड तुम लोग। हाँ, अब इसमें डाल दो, इसका पावर ज़्यादा तेज़ है। ये लो, लगा के कैमरा बैग पे रख दो, टच मत करना, फ़ोन कट जाएगा। Absolutely, absolutely. And we have been reporting that the other options were halted for a while considering the main focus area, but those operations were never suspended. In fact, on 28th of November, there was a plan of a perpendicular to the tunnel, a side drift which was measured up to 180-meter length. In fact, all preparations were done. Even as we speak, there are team on the top of the hill exactly where the vertical drilling was taking place. It was halted considering the breakthrough which was very close today, and when the manual drilling started, and it went very successfully, very smoothly, because there were no major obstruction. Of course, at the end when there was 2 meters left, there was a metal pipe, 3 to 4 pipes were there, and they were cut down by the the gas cutter and the conventional method these the rat hole miners use. So clearly, the major challenge at the moment is not any major obstruction. Everything has been cleared out, but sending a particular rat hole miner in a narrow passage is easier, but you have to use a narrow passage escape tunnel, a mini tunnel, micro tunnel in the debris for the evacuation. So exactly at the end of the debris, you cannot restrict it and you cannot start evacuation. Because remember, there could be suspended heavy metals like rod, iron pieces, metal arch, and if that falls down, this will not only be a potential threat for those trapped workers, but also for the rescuers of the NDRF and SDRF who are on the across side. So the idea is, let the pipe, they have already welded the last pipe, they have already breached the mark, they have already made a breakthrough. Now the idea is to push the pipe at least 3 to 4 meters from the safe zone, from the threat zone, which is exactly the borderline, because now you have the debris actually in a slopey way. Now crossing 3 to 4 way, the auger machine, because there is no blade, you have to push it through the machine, and very carefully, because if there is any bend in the pipe, this will potentially jeopardize the so far all these efforts. So very carefully
taking time with precision. Slowly they are pushing the pipe, and maybe in an hour or so they will be able to go beyond the end of the debris line, 3 to 4 meter, and then the platform is already being made. Once they made a platform, it will be easy to them to rope with that belt with that stretcher equipped and wheel equipped with wheels, and then the evacuation will take place. Every personnel may not take more than 70 to 75 seconds, as it has been measured during the mock drill shift. हेलो, तो तो बैटरी, अब ये बताओ, फ़ोन और उसको बैटरी चाहिए। मैं सुबह 8 बजे से पिल रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कोई कहेगा कि आज खाने का, आप तो खाना खाया ही नहीं है, नाश्ता किया नहीं है, और इस ब्रेक में क्या होगा। देखो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ख़त्म हो जल्दी, बट लाइव के लिए आपको फ़ोन में तो बैटरी चाहिए ना, फ़ोन में, ईयरपीस में तो बैटरी चाहिए। अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो क्या करेंगे, क्योंकि ये 2-3 घंटे और लग सकता है। अरे तो मुझे फ़ोन निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई, फ़ोन निकालना तो पड़ेगा। अरे यार सब एग्जॉस्ट हो गया, सुबह 8 बजे से लाइव हूँ मैं। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे। या कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, कितने घंटे हो? I don't think more than 120 minutes. And I call you saying कि 120 minutes. यहाँ पे सबसे अच्छा नेटवर्क कहाँ आता है यार?
मुझे लगता है 120 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए और दिक्कतें नहीं है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और वो तमाम लोग जो इस समय देख रहे हैं, उनके परिवारजन भी जो चिंतित है कि आखिर आप क्यों समय लग रहा है, ये समझिए कि बस ये एक आखिरी घड़ी है। आज शुभ खबर मिल चुकी है, ब्रेक थ्रू हो चुका है। कई सारे विशेषज्ञ आपको समझा रहे थे और इसीलिए बहुत आसान शब्दों में चित्रा कि हम मलबे के जिस पार हैं, दरअसल अगर इसको मान ले कि ये एंड सिरा है और ये वो एस्केप टनल है, जहां मलबा खत्म है वहां से इवैक्यूएशन नहीं कर सकते। आपने रास्ता बना दिया, पाइप पहुंच गई, लेकिन उसको कम से कम जहां मलबा खत्म होता उसके 3 से 4 मीटर आपको आगे ले जाना होगा। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जहां मलबा गिरा है वो स्लोपी अवस्था में है, उसके ऊपर ही सुरंग टूटी है, वहीं से तो टूट के नीचे गिरा है, सब कुछ नीचे नहीं आया है। कैविटी बनी है, उसमें लोहे का सरिया हो सकता है। जिस आर्च से टनल बनाई जाती है, सुरंग बनाई जाती है, वो बहुत मजबूत कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है। अगर इतना वजन था उस पहाड़ में और इतना कमजोर कर दिया तो बहुत कुछ और टूट सकता है। ऐसे में न सिर्फ 41 वो लोग बल्कि 8 एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग जो बचाने जाएंगे, उनकी जान पे भी खतरा हो सकता है। इसीलिए जो थ्रेट लाइन है मलबे की, मलबे के पार जाकर के 4 मीटर की एक सुरक्षित दूरी बनाना, वहां की स्थिति को देखना, ऐसी स्थिति की क्या इवैक्यूएशन संभव है, एनडीआरएफ के लोगों को उसमें दक्षता हासिल है। फिर वहां बनाया जाएगा एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो पाइप जा रही है वो एक सर्टेन डिग्री ऑफ इंक्लाइन पर है, वो पूरी तरह से 100 मतलब पैरेलल टू अर्थ है, पैरेलल टू सरफेस है, लेकिन थोड़ी इंक्लाइन पर है और थोड़ी ऊंचाई पर है। तो आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। स्ट्रेचर लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट जला। देखिए अभी पर्याप्त रोशनी है और मैं बताऊं जितनी एजेंसियां उन सब ने व्यवस्था कर रखी है। मसलन सुरंग के मुहाने पर यहां है बिजली, उसके अंदर तक 200 मीटर का जो हिस्सा जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां बिजली की पूरी व्यवस्था है। ये इतना ही नहीं, वहां पर स्केप टनल और सेफ रूट भी बनाया गया है जहां से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जहां से ड्रिलिंग हो रही है दरअसल वहां भी बिजली और वहां भी सेफ। मतलब देखिए सबसे पहले जरूरत क्या था, आप इवैक्यूएशन रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन जो इस मिशन में है उनकी जान को खतरा नहीं पहुंचा सकते, वरना पूरा ऑपरेशन ठप हो जाएगा और संख्या जो होगी बचाने वालों की, जिनको बचाने की जरूरत ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये कोशिश है कि जैसे इस पार के लोग सुरक्षित हैं, उस पार पाइप पहले सुरक्षित ठिकाने तक पहुंच जाए, जो एक सेफ मार्क होगा। सेफ मार्क के बाद फिर एक एक करके उन मजदूरों को जो स्ट्रेचर भेजा गया है उस पर रखा जाएगा। और आप सिर्फ रख के ऐसे धक्का नहीं दे सकते, उन स्ट्रेचर पर आगे और पिछले हिस्से पर बेल्ट लगी हुई है, उस बेल्ट से उनको हल्का सा बांधा जाए ताकि वो स्थिर रहें। क्योंकि आपको 67 से लेकर के 60 मीटर, लगभग 57 से लेकर के 60 मीटर की दूरी तय करनी है, तो उनको कम से कम इतनी हिम्मत देना कि बस अब कुछ सेकंड की बात है, आप चले जाएंगे। अमूमन समय 2 मिनट कहा जा रहा है कि लग सकता है, लेकिन उस स्ट्रेचर में फ्रिक्शन नहीं है, उसमें पहिए लगे हैं, बेरिंग लगी है छोटी छोटी, जो आराम से आपको एक स्मूथ राइड देगी। दोनों सिरों पर रस्सी बंधी है, जैसे आपने उसको पाइप में डाला, मजदूर को आपने उसमें लेटाया, हमारे भाई जैसे उसमें लेटेंगे, उसके बाद दूसरे हिस्से से उसे खींचा जाएगा। इतना खींचा जाए कि झटका भी ना लगे और जल्दी निकल जाए ताकि उनको क्लास्ट्रोफोबिया ना हो। जो पाइप है उसके अंदर बिजली की भी व्यवस्था की गई है, एलईडी स्ट्रिप लाइट लगाते कुछ दूरी पर गए हैं ताकि कम से कम घुटन महसूस ना हो। और इस मुहिम में देखिए, अब जो सैयद जना असनैन बता रहे थे कि दरअसल वो 3 मिनट का समय है, लेकिन जो मैंने वो ड्रिल देखी थी, उन लोगों से मिला था, उन्होंने कहा देखिए 75-80 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, तब सिर्फ 60 मीटर रह जाएगा, इंक्लाइन पर वो आएंगे और खींचा जाएगा और ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। 120 मिनट मुझे लगता है हमें और देना चाहिए। Source come out and then throughout video streaming. I don't do TT, byte or PC. क्या ये मतलब है? TT doesn't go ठंडी हो गई।
exactly the net what. So those kind of this helps people in our view to understand. Instead of doing random bite, they keep, they talk about this vertical, this horizontal, this latitude, this longitude. Who cares about it? भाई दर्शक को आप अपनी तरीके से तो बताएंगे. You shivering. No, I'm not shivering. I'm just like I like it. बेटा मुझे कुछ गरम गरम खाना है जाग के. Or they are making pakoras, I heard, just to celebrate this. These people, just to celebrate this. बेचारे And this calls for a celebration. Yeah, this calls for a celebration. They are very much emotionally attached with this operation. I don't know Even about the others, but I locals. am, because every day I come with a hope, bringing a smile, and then going back home, you feel a sense of disappointment. And you don't feel like eating out. Then, but again, because we see a lot of things every day, कुछ याद रहता है, फिर कुछ घंटों में भूल जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं, फिर तो होप चलो आज तो हो जाएगा. बहुत immune. Stretcher पे आएंगे ना? Stretcher पे आएंगे ना? There is no other way. They can't crawl for 60 meters. They'll collapse. Because of claustrophobia, the narrow pipe I did in 700 Daya. It is impossible. अच्छा? This is what it. हटी तो नहीं तुम्हारी? No. What do you mean हटी नहीं तुम्हारी? That's a genius, right? कुछ भी बोल रही है लड़की. है भी चल रहा है. हाँ लगातार है 9 साढ़े 9 तक. बस यहीं पे रहना, यहीं पे. कौन शंख बजा रहा है? वो तो नहीं है, वो पूजा कर रहे हैं वहाँ पे. बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब. शुभ दिन आयर. ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे. थोड़ा सा ये पैर अंदर कर लो. कह रहे हैं लाइट बंद करो, लाइट बंद करके कुछ नहीं दिखा. अपर्चर खोल के, क्योंकि हमें वो दिखाना है बाहर किस तरह का अंधेरा दिखाना. और मैक्स. थोड़ा सा लाइट जलाओ, हल्का सा डिस्टेंस रखना है ताकि वो ना हो, पीछे की चीज़ें बर्न हो रही हैं, इसलिए कम कर दो हल्का लाइट इतना ही काम है. दिखाना. लाइट एकदम लो है, लो पे है लाइट. दिखाना एक बार, हल्का सा फ्रेम दिखाना. कपड़ों में बाल में धूल भरी. आगे आ जाओ एक कदम. बस 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 बस. इसको 1/4 कदम कहते हैं.
ज़्यादा पतला लाइट मत करो, वाइड रखो। फेस से ज़्यादा लाइट नहीं, हल्का अंधेरा दिखाना है, वो तभी तो मैंने लाइट बंद कराई थी, बोला गया था। हाँ ये ठीक है। हाँ वही, अब चेहरे पर लाइट फोकस आ रही है, फोकस हटाओ, वाइड करो। नहीं नहीं, इसका वाइड ज़्यादा करो, इसका फोकस जो फेस पर आ रहा है उसको वाइड कर दो। प्लेट खोल दो, प्लेट खोल दो। हाँ इसको खोल दो। हाँ येलो लाइट है क्या इसमें? हाँ अरे बाप रे, थोड़ा सा लाइट कम करो, शार्पनेस बहुत ज़्यादा शार्प है, हल्का कम करो, हल्का सा कम करो, कम। ठीक है ठीक है, अब दिखाना फ्रेम। कम करने पे ये आएगा, फिर ये देखो, रुको जरा, यही पे रुकना। ये देखो, जितना आपसे कम करूँगा पीछे वाला उतना कम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा लो हल्का सा, एक अपर्चर बढ़ा लो थोड़ा सा। रुको, ये देखो, क्योंकि पीछे वाला ब्लैक होगा धीरे धीरे। वो तो ब्लैक हो ही जाएगा वैसे भी। ये है, और डीबी भी 18 पे है। बैटरी लगा दिया चार्जिंग पे? अच्छा पावर। बैटरी डायरेक्ट है, बैटरी होती नहीं इस पे चार्ज। 1 इंच अपने राइट पे जाना, 1 इंच। दर्द हो रहा है यार। नहीं नहीं,
लाइट थोड़ा स्लो करो, बहुत तेज़ है। ये सबसे कम है। येलो वाला डालना, आप दिखाना फ्रेम। वाइट वाला डाल के देखना। वाइट वाला सही आ रहा है, ये देखो। हाँ यार लाइटें क्यों बंद कर रहे हो? पिछली लाइट भी बंद कर दी है, ये देखना। लाइट क्यों बंद कर रहे हैं? लाइट कम कर रहे हैं। अंदर वाली भी कम की है उन्होंने अभी। थोड़ा इधर आना अपने, इस साइड थोड़ा सा और। इधर 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 थोड़ा थोड़ा बस। दिखाना जरा टनल का फ्रेम। टनल नहीं, कुछ भी नहीं है, ये देखना। इधर देखो, कुछ भी नहीं हाँ है। बता देना, फ़ोन आएगा तो। रुकना 2 मिनट, 1 मिनट। ये आर्नोल्ड डी का नाम किसी ने अनिरुद्ध दीक्षित लिख दिया है। आर्नोल्ड अनुराग दीक्षित। वो शिवजी की परछाई में आ रही है। हाँ फ्रेम दिखाना, ठंड ज़्यादा है ना, ठंड तो है ही। जैकेट की जिप लगा लो साथ में। ज़्यादा नैरो हो जाएगा, हल्का सा खुला रख लेते हैं ताकि एक बार हल्का दिखाना, मैं हल्का वो कर लेता हूँ ना, करना। फ्रेम खोलना थोड़ा मेरी ओर, डिस्प्ले। पसीना बहुत हो रहा है, मेरा चेहरा ऑयली हो गया, इतना धूल चला गया ना कि पूरा मुंह में धूल धूल आ रही है। आ गए हैं शायद, पीछे बाहर आ गए। सीएम है। लाइट मारना, मुझ पे आना। सीएम है, कर लो। शॉर्ट्स पे जाना, शॉर्ट्स पे।
मुख्यमंत्री धामी जो है अंजना अभी जस्ट सुरंग से बाहर निकले हैं और ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम धामी और जनरल वीके सिंह अपने तमाम अधिकारियों के साथ सुरंग के अंदर गए थे जहां से इवैक होना था और अब वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां से। क्या वो बात करेंगे मीडिया से, कोई औपचारिक जानकारी देंगे, हमें इंतजार करना होगा क्योंकि तकरीबन 2 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट करके कहा था कि ब्रेक थ्रू मिल गया है, उस पार दिखने लगा। और हमें फिर ये भी जानकारी मिली कि चूंकि अब उस पार मुहाना मिल गया है, दूसरा हिस्सा मिल गया है, लेकिन पाइप उसमें पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी और अभी मुख्यमंत्री यहां से निकले हुए हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी की जो टीम है वो सब कुछ यहाँ स्टैंड बाई है। मेडिकल यूनिट, एम्बुलेंस, अंदर एनडीआरएफ के कर्मचारी जो रेस्क्यू करेंगे, एनएचआई, डीएलसी और वो तमाम एजेंसियों के लोग अभी भी सुरंग के भीतर हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले लाइट काफ़ी कम हो गई थी तो हमें लगा ये आखिर क्यों है, लेकिन उसके बाद तुरंत अब लाइट जली और फिर अंदर से काफ़ी जगह आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। जो अभी शोर था मशीनों का वो भी लगभग थम गया है, हमें देखना होगा। हालांकि ये सूत्रों ने बताया था कि 120 मिनट लग सकता है क्योंकि आखिरी हिस्से में दरअसल मलबे के ठीक पास वहां से इवैक नहीं होगा। पाइप जो थी जो स्केप टनल बनाई गई है 800 डाया की, वो दरअसल मलबे से कम 3 से 4 मीटर आगे ले जाना है ताकि इवैक्यूएशन हो सके। जिस समय हम बात कर रहे हैं अंदर जो भी एजेंसियां हैं, चाहे वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिनका काम है वहां से रेस्क्यू करके निकालना, उनको स्ट्रेचर पर लेकर के आना, वो अंदर हैं। आपने पहले ही बताया कि अंदर जो है जानकारी दी है कि एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था कर दी गई, इतनी कि जब वो बाहर आएंगे, इस समय यकीन मानिए यहाँ इतनी ठंड है और अंदर जब वो मलबे के दूसरी तरफ के हिस्से में थे तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा था। अचानक आप 10 डिग्री से भी नीचे 6 और 8 डिग्री तापमान में आएंगे। वो एक्सपोजर से बचाने के लिए गर्म कपड़े, कंबल, हर चीज़ की व्यवस्था है। उनके परिवारजन भी सुरंग का जो मुहाना है आप देख पा रहे हैं उससे ठीक बगल में, दरअसल अंधेरी की वजह से वहाँ देखना मुश्किल होगा, वो वहाँ पर आ चुके हैं। उनके लिए अलाव की व्यवस्था की गई कि वहाँ पर रहें और एम्बुलेंस में ही रवानगी उनकी होगी चिन्याली सौड़ के लिए। अपडेटेड जानकारी हम पहले दे चुके हैं कि जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पहुँचा है, लेकिन अंधेरे में वो उड़ नहीं सकता। तो अब व्यवस्था दरअसल ये है कि इस चिन्याली सौड़ के हेल्थ केयर सेंटर में उनको वहां रखा जाए और सुबह फिर तड़के उन्हें ऋषिकेश एम्स ले जाने की तैयारी है। दरअसल 2 योजनाएं थी, पहले क्या उन्हें देहरादून ले जाया गया, लेकिन फिर बताया गया कि ऋषिकेश में प्रॉपर उनकी देखभाल होगी। दरअसल शारीरिक चुनौती से ज़्यादा मानसिक चुनौती को, जो उनकी मानसिक स्थिति है उसको स्टेबल करना ज़रूरी है, उसको स्थिर करना ज़रूरी है। रायशुमारी, परामर्श, बातचीत और उनको स्टेबल करना कि अब सब कुछ ठीक है, वो ट्रॉमा से निकल पाएँ, उसके बाद ही वो अपने परिवार के साथ वो तमाम खुशियाँ जी सकेंगे जो पिछले 17 दिनों में उन्होंने मिस किए। इन 17 दिनों में जो कुछ उनके ऊपर बीती है उसको फिर से मानसिक स्थिति को स्थिर भी करना होगा। लेकिन मुझे लगता है अभी 120 मिनट का इंतजार जो बताया गया था वो चल रहा है क्योंकि आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है। इंतजार है उस शुभ समाचार का कि अभी इवैक्यूएशन शुरू हो गया है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। उस पार ले चलो कैमरा लगाने ताकि इधर थोड़ा आग की भी गर्मी मिलती रहे। देखो दिख तो रहा ही है, अब टनल टनल नहीं, ये साइड तो दिखेगी। बिल्कुल ब्लैक आएगा। तो ब्लैक तो ऑलरेडी है ही। आप चले जाना, आप आ जाना, माइक बंद रखना, बस माइक ऑफ कर, जैसे आओगे ऑन कर।
जाएगा। अब 7 बजे ये पर्दा क्यों लगा दिया यार इन लोगों ने, कुछ दिखाई ना दे। ये क्या पर्दा सुबह लगाया था इन्होंने। नहीं नहीं अभी लगा, मैंने देखा पर्दा। नहीं नहीं दोपहर में लगा, मैंने देखा पर्दा यहाँ खींच के तो ढक दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों कुछ दिखाई ना दे। पर्दे को शॉर्ट्स पे जाएंगे। ठीक है। ओके हाँ हाँ बोलिए। ठंड ठंड तब समझो तुम साइड पे खड़े आँख रुक, आपके मुंह से धुआं निकल लगा, समझो ठंड है। वो तो धुआं तब निकलेगा जब कोहरा होगा। ठंड बढ़ेगी, आपका पेट का टेम्परेचर। पर्दा क्यों लगा दिया इन लोगों ने? पर्दा लगा दिया है। हाँ देखो ना ये के अंदर कुछ दिखाई ना दे। बड़ा तो है भाई। पर्दा है, बाहर निकाल दिया भाई। बाहर भी हो, पर्दा क्यों लगाना साला? हम देख रहे हैं तो उसे देखने तो। अरे बाहर तो निकल ही रहे हैं, पर वो है कि थोड़ा और वो एक आध निपट ना गया। दिक्कत आई है ना। रखेंगे एम्स में ऐसी जानकारी यार, इसका मतलब मोदी जी आएंगे मिलने। घर नहीं जाने दिया जाएगा। यहीं कहीं रखा होगा सुरक्षित। और बाकी आपका माइक थोड़ा और कुछ करो ताकि सेफ्टी रहेगी। लाइट ऑन, लाइट ऑन। Shiv, looking at the efficiency of these skilled workers who did it manually in a traditional way, the challenge is not actually the drilling anymore, looking at what they have been doing. The challenge is to actually ensure pushing those pipes, the escape tunnel, or you say the 800 dia pipe, exactly to the safer place from the end of those that debris area, because you do not want casualty for both the workers and the rescuers. So, because the machine is actually aligned on the auger machine, the machine is very much there, and this auger machine, what exactly it will do is the pushing the pipe inside the debris. So, for the safer area, the breakthrough has been achieved. They are able to see the workers on the other end, but you have to make a safe passage for the pipe. This is also reaching towards the debris end, but you require at least 2 to 3 meter safe passage for the pipe, because once the pipe is laid on a certain safe distance and making sure there is nothing falling from the top, from the cavity of the mountain which has collapsed inside, and once it is assured that people will be safe, only then the evac process can be completed, because you don't want to be jeopardizing the entire operation. So far there have been no casualty, no injury, nothing, so you don't want to risk the operation. What I feel a little strange, Shiv, that I see here right behind me in the tunnel, only if my camera can zoom inside and see that entire country is waiting for the first glimpse of this entire operation and the success of it. Somehow I see the authority in a very strange manner have put out a curtain.
literally blocking the view of what is happening inside. And in fact, at this time, in the light that is visible inside the tunnel, we were able to see exactly what is happening. So even if there is a evac taking place or anything taking place at 200-meter distance, from the camera we were able to see everything. So far there have been transparency. I really don't understand this strange approach of the authorities, literally putting out a sheet of curtain and blocking the view. If there is an operation happening which is already underway, just 5 minutes ago, Chief Minister Pushkar Singh Dhami was here. He went inside. General VK Singh went inside. They carried nearly 41 garlands, and of course there will be a grand welcome of those trapped workers. This was a race against time, literally for 17 days. But now, because more and more transparency you bring for the people, it is, of course, look at the people across the nation. Probably at the moment, entire world is watching. They want to see how this evac is taking place. Of course, they have been giving information. Sometimes there have been even communication blockade, because there have been, of course, sense of disappointment whenever every operation failed. So at this moment, any development that need to be shared with the people with regards to this evac operation, this is not some strategic operation or something. It is an evac operation. People wants to know. They have been waiting for this moment, and if this is the day, it is not going to be less than a festival for their people, for the family, for the everyone, those who are waiting for their safe evacuation. So as we know, the rescue ops and evacs is extremely at the crucial juncture. We are at the last leg, and any moment we could hear the good news. राइट, थोड़ा सा राइट होना।
हाँ Absolutely, Shivan. Exactly why we should pray that this shouldn't turn into another 24th of November. Exactly, late night disappointment. We all were waiting overnight to, to see the successful rescue and evac operation. And here we have decided we're gonna be here, stay overnight, and unless this operation is completed, until these evac operation takes place, until they come out, we all gonna be here only, not going to leave this space. We will be keeping a close tab on that. Yes, the last 2 meter, particularly on the certain degree of the incline, pushing that pipe is indeed challenging, because you can cut down the debris which is coming on the way of the 800 dia pipe, but across the area you also require at least 2 to 3 centimeter passage for say pushing of those pipe, and the rest 2 meter, because of course there have been debris, the metal structures, so unless you clear that passage area which requires cutting down, and those mining workers, those laborers with their conventional tool are exactly on this mission. And as we speak, since all preventive measures, preparedness has been done, it is just matter of a time. It could be few minutes, it could be few hours. And remember, they don't want to go in haste as far as this operation in the last leg is concerned. So far, very patiently, many attempts were failed, but finally when you are so close to success, any attempt to be in haste or literally showing hurry for the evacuation could jeopardize entire effort so far they have made in last 17 days. So clearly is the wait and watch. They're going very slow with absolute precision. At a certain degree, what they had decided to go exactly is now on track. In fact, Chief Minister Pushkar Singh Dhami, who was inside the tunnel, has gone to the meeting side, because various stakeholders, specialists from India and abroad, they often discuss certain plan of action. And as we say, there are multiple approaches, multi-dimension plan which was underway. None of these have been suspended. Was it halted? Yes, it is indeed halted. It is halted to ensure safety on the another end where the operation happening. But if
However, we are very sure that this is not going to fail since we are so close. In fact, we are able to see on the other side through those levers. It's just a matter of minutes or hours to push the pipe inside to a safer end and then start the evac process. The workers from the NDRF, the rescuer, those who have got inside the tunnel, they are still inside. Every day there have been drilling at least twice a day. Since all preparedness has been done, it will be matter of less than 30 minutes to complete this entire operation shift. शॉर्ट्स पे चले जाओ. मैंने शॉर्ट्स काट रखे हैं. अगर आपको शॉर्ट्स चाहिए तो शॉर्ट्स दे देता हूँ ना मैं. ये देखो मैंने शॉर्ट्स दे रखे हैं. लोग अंदर जा रहे हैं. ये देखो दिख रहा है. ये अंदर जा रहे हैं इसलिए मैंने शॉर्ट दे रखा है. बस ठीक है ठीक है ठीक है. नहीं लग रहा है. सब भाग के कहाँ जा रहे हैं एसडीआरएफ वाले? सब भाग के जा रहे हैं भाई अंदर. अरे देखो सारे भाग रहे हैं. जरा रेडी रखना. देखो सारे भाग रहे हैं उधर से निकल के. बिल्कुल शॉट्स पे ध्यान दो. देखो सारे भाग रहे हैं दौड़ के अंदर उधर से. उस पार से निकल के सब जा रहे हैं. एनडीआर वाला भी दौड़ रहा है कर्नल. हाँ ठीक है संदीप भैया. शॉर्ट्स क्लोज जाओ. अंधेरा आएगा ज़्यादा. हाँ इधर आओ देखो. लाइट जलाना. जाओ क्लोज जाओ. कुछ हो रहा है शायद. फैमिली वाले और बाकी एसडीआरएफ वाले सब अंदर जा रहे हैं टनल के. एसडीआरएफ वाले लोग अंदर जा. Yes, all of a sudden I see a high voltage action here. The number of SDRF persons who were kept in reserve on outside, they all just entered 30 seconds ago, at least 50 to 60 such persons, and immediately they started going inside. In fact, still there is a literally quite attention mode. There are medical doctors who are now have reached near the barricades. Ambulance I can see have switched on the engine, and other side the number of personnel have gone inside. Looks like something is happening inside. There could be one development. In fact, the commanding officer of the NDRF was here. He also rushed to DOC. These personnel are now literally going inside the tunnel. So literally the calm that was here for last 45 minutes, all of a sudden I see a lot of movements happening from the front portal of Silkyara tunnel. Personnels, the medical experts, everyone have started rushing inside. And in fact, one person that I see from the NDRF started running literally from that side. So this explains there is something happening, and we'll just catch a glimpse of the personnel because this indicates some significance. You see the personnel like literally running inside the tunnel, and one vehicle is coming out. What is it? I'll have to find out what vehicle is this. So one vehicle has just stepped outside. I don't see someone sitting inside except the driver and the assistant. There are some equipments in that. So the one vehicle is stepping out,
And it is the pilot car of the Chief Minister. Look like we are very close to hear the good news. The pilot car of the Chief Minister is now yet again coming to the front portal, and CM Pushkar Singh Dhami yet again rushing to the tunnel. So, you know, looks like what we have been waiting for. These all signals indicates a breakthrough which are already made, but this could be the moment of time that to hear what we were waiting for the last 17 days. The first car is where in which the Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, and the car has just reached to the front portal of the tunnel, and he's deboarding the car. Safety gear already taken on standby by the personals. CM will be wearing a safety helmet, and the way he is entering, like, it is very fast, rapidly. I remember when he came last time, it was quite slow, interacting with people, talking to them, and all of them, his security personnel member and all the personals and the assistants were around. Like, in a second, they just got their helmets on, the safety mode on, and now the Chief Minister entering in the tunnel with the security fleet. They all are going inside. And I'm really hopeful, Shiv, for last 17 days it has been really so much tension, emotions, commotion, stress, anxiety. Any expression, you know, one human being could suffer through has been with almost everyone, be it the trapped workers or the rescuers, their family members, everyone part of this operation. Those who are literally drilling it out or maintaining law and order situation or even maintaining the situation outside for smooth access of logistics. Everyone have been, you know, literally haven't slept properly. Like sleepless nights it has been. In fact, several times there was a case we had to spend night here on this vertical point. Now we see, since the personnel rushing in, any moment I think we also need to keep a tab on the X handle account, social media account of also the Chief Minister, because he was the one who posted out the picture, and I see a lot of movements. The ambulance have their literally turned their engines on. One after one, the ambulances are turning their engines on, putting the signal, because this is the escort signal, and of course the clear passage, the green corridor has been created. So ambulances are also making way through and literally lining up, and the special police escort vehicle is also being placed. Yet again, see the number of people now going inside. So these are the local representatives, and they all are going inside. In fact, the family members who came out, came to the front portal with the luggage, they are being made to wait at one particular place. And it's extremely cold. The temperature as we talk, Shiv, is nearly 8 degrees Celsius. So you see the people are literally rushing inside. A lot of emotions, commotions, you say, what they have been waiting for. This is a breakthrough, this is the day. And finally, so, you know, the ambulances turning their engines on, the lights and everything, every signal, every optics I read out here is giving indeed a signal of success. You see another vehicle is coming out, because there have been heavy duty vehicles for the construction work inside. They are clearing the passage, and this simply means that this will be the time of evacuation. And if evacuation is completed, the next हेलो हेलो, पहले वहां से कटवा तो दिया करो भाई। आपसे मुझसे आओ, फिर जाएंगे। थोड़ा साइड पे रहना, साइड पे बस 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 बस, मूवमेंट है बहुत तेज। थोड़ा और इधर इधर, थोड़ा बस 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 बस।
लगभग 35 मिनट का सन्नाटा जब फैला था ना इस मुहाने पे चित्रा, तो यकीन मानिए फिर वही निराशा होने लगी थी। 24 तारीख को लगभग यही सब कुछ यहीं हो रहा था। पूरी रात हम यहाँ पर थे इंतजार में कि बस अब कुछ हो जाएगा, लेकिन अचानक से जैसे मैंने देखा कि जितने एसडीआरएफ के लोग थे, देखिए जैसे अभी भी लोग दौड़ते हुए अंदर जा रहे हैं, अचानक से जैसे एक रेस लगी और दौड़ते हुए सब जैसे सुरंग के भीतर जाने लगे, तब लगा कि शायद वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार 17 दिनों से 41 लोग, 2000 रेस्क्यू कर्मी, उनके परिवार और पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी। तो उसके तुरंत बाद जितने एम्बुलेंस हैं सबने अपने इंजन स्विच ऑन कर लिए, और जिस तरह के सिग्नल हम रीड कर रहे थे, 4 मिनट के भीतर अचानक कैवलकेड अंदर आया सीएम का, वो भी जब चले गए थे उस समय। अब बस समझिए कि अब ना कोई माइनिंग बची रह गई होगी, ना कोई ड्रिलिंग बची रह गई। ये वो फाइनल मोमेंट है। हालांकि यहाँ पर एक छोटा सा पर्दा मुहाने पर लगा दिया गया है, इसकी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया तस्वीर देखना चाहती है कि पर्दे के उस पार। देखिए रात में इतनी लाइट होती है कि दरअसल कैमरा 200 मीटर अंदर भी देख पा रहा था सब कुछ अच्छी तरह से। इसको नहीं लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय देख रही है कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन है। दशकों तक ऐसी चीज़ें कई दुनिया के बहुत कम देशों में इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, और अब इस मुश्किल दौर से, मुश्किल वक्त से, बहुत कठिन परिस्थितियों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है। अब उन्हें निकाला जाना है। तो ऐसे में देखिए सीएम अंदर गए हैं, उनके साथ जो विशेषज्ञों की टीम थी वो अंदर गई है, बड़ी संख्या में एसडीआरएफ वाले अंदर गए हैं, रास्ता क्लियर करा लिया गया है, और बड़ी संख्या में, मुझे नहीं पता कैमरा वहां तक उस अंधेरे में दिखा पाएगा, लेकिन जहां बैरिकेड लगा है फ्रंट पोर्टल के पास, पहले मुहाने के पास, वहां बड़ी संख्या में एनडीआरएफ के कर्मी तैनात हैं, उनके साथ एसडीआरएफ वाले भी हैं, और उसके साथ जो आप सफ़ेद जैकेट में देख पा रहे हैं, कोट में, वो पूरी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ है। वो जो मेडिकल स्टाफ है वो दरअसल ये कोशिश कर रहा है समझने के लिए। अब देखिए ये जो आप रेडियम की वजह से चमक पहचान पा रही है, एनडीआरएफ की ड्रेस है, और उसके ठीक आगे सफ़ेद जैकेट में दरअसल डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग असिस्टेंट है, मेडिकल असिस्टेंट हैं, और वो इसलिए हैं कि सब स्टैंड बाई पे हैं। जैसे ही पता चला कि अंदर से निकलना शुरू हो गया है, उसके तुरंत बाद ये सब अपने एम्बुलेंस में रवाना होंगे। एस्कॉर्ट गाड़ियाँ इनको तुरंत वहाँ चिन्याली सौड़ पहुंचाएंगी। चिनूक हम देख चुके हैं, पहले ही खड़ा है, संभवतः शायद कल ही उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा ऋषिकेश एम्स के लिए, क्योंकि मनोस्थिति और मनोचिकित्सक करेंगे। लेकिन आप समझिए बस अब कुछ मिनटों का इंतजार संभवतः ये लग रहा है चित्रा। देखिए ड्रिलिंग के दौरान जब आप हिस्से को काटते हैं, पाइप को दाएं बाएं ले जाते हैं, तो क्योंकि जो मलबा गिरा है, जो कैविटी बनी है, वो स्थिर नहीं है, उसमें अस्थिरता तो है ही। जरा सा कंपन या जरा सा आपने जब मशीन को, देखिए जब ड्रिलिंग हो रही थी तो धीरे धीरे पाइप जा रही थी, अब पाइप को मशीन दबा रही है अंदर, तो ये हिस्सा जरूर नुकसान होता है। लेकिन खतरा इसलिए नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जब 17 तारीख को हादसा हुआ था, मलबा गिरा था, तब अगले 4 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं पाया था। उन 4 दिनों में कोशिश की गई ऊपरी सतह को सीमेंट से मजबूत कर दिया जाए। मैं स्पीकर की आवाज़ सुन रहा हूं, और ये दरअसल वायरलेस पे काफ़ी कुछ बताया जा रहा है, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, जैसे कुछ स्पष्ट सुनूंगा मैं उसकी भी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मजबूत किया गया स्ट्रक्चर को, 2x2 के स्क्वायर बॉक्स उत्तरकाशी आसपास तमाम जिलों में कंस्ट्रक्शन साइट से लाए गए, और लंबा सेफ पैसेज बनाया गया था। तो खतरा नहीं है, कुछ मिनटों का इंतजार बस है। मारो मारो, एम्बुलेंस में मारो। एम्बुलेंस है सभी। पहला रेस्क्यूअर निकाल लिया गया। डन, आऊं आप पे? नहीं, अभी नहीं। इवैक्यूएशन शुरू।
उधर जा रही है। हाँ कहाँ? वो दूसरी वो मतलब तीसरी जा रही है, 2 ऑलरेडी अंदर है। नहीं अब क्या? अंधेरे में तो कुछ आएगा ही नहीं। क्या क्या? बोले मेरी फोटो दे दे। फोटो अभी? सर एम्बुलेंस यहाँ तो रही है ना सारी। हाँ हाँ, तो इसलिए कर रहे हैं। अब बिल्कुल वो फोटो नहीं आई। नहीं यार आपको जो अंधेरे में एम्बुलेंस नहीं आ रही है। तो ये बताओ रात को सर ने जो ये देखो शिवजी महाराज की फोटो भेजी थी। देखो मेरी वाइफ ने ये देखो ये रात की फोटो है। सर जब इधर से गुजरे थे ना विजुअल अमित के फ्रेम से शानदार दिख रहा है, कोई लोड नहीं है टनल दिखाने का। नहीं वो तो ठीक है बाबा, माइक ऑफ कर दो जरा। जी प्रभु। जी बताइए। अरे हम तो कहीं नहीं हो। सर मैं मृदुल बात कर रहा हूँ उत्तरकाशी से। सर ये मेरा फ्रेम रिकॉर्ड पे रखिएगा प्लीज़। जी सर जी प्लीज़। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा ठीक है। रोल रिकॉर्ड भी करना साथ। हाँ थोड़ा लेफ्ट 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 थोड़ा सा और लेफ्ट, थोड़ा सा और लेफ्ट। बस रेडी। हाँ।
बीती रात से शुरू हुआ जो ऑपरेशन और आखिरकार लगभग 7:30 बजे वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था 17 दिनों से। तमाम सारे लोग अंदर चले गए हैं सुरंग के मुहाने में। वीके सिंह, पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री और कई सारे एम्बुलेंस के बाद जिस तरह की हलचल है, पहली एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस अंदर हैं, एक एम्बुलेंस मुहाने पर तैनात कर दी गई है और हम करीब की तस्वीरों से जाकर के देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब लगभग जो कर्मी है इस समय एनडीआरएफ के और एसडीआरएफ के, उनको स्केप पाइप के जरिए मलबे के दूसरी तरफ भेज दिया है। यानी इस समय इवैक्यूएशन चल रहा है। इवैक्यूएशन का मतलब है 60 मीटर मलबे के दूर खड़े 17 दिन से फंसे हुए उन मजदूरों को अब एक स्केप ट्यूब से 800 मिलीमीटर चौड़े पाइप से निकालकर बाहर लाया जा रहा है। और जैसे जैसे निकलेंगे हम लगातार जानकारी आपको देते आए कि उनके बाद उनसे डॉक्टर्स मिलेंगे, मालाओं के साथ उनका स्वागत करेंगे राज्य मंत्री वीके सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ये जो एम्बुलेंस यहाँ तैनात की गई हैं, ये उन तमाम मजदूरों को लेकर के रवाना होंगी 35 किलोमीटर की दूरी पर शहर चिन्यालीसौड़ में, उत्तरकाशी जिले का एक बड़ा शहर जहां पर एक हेल्थ फैसिलिटी तैयार की गई है, बेड बनाए गए हैं। हालांकि हमें जानकारी के मुताबिक शारीरिक स्थिति इन तमाम लोगों की बेहद अच्छी है, लेकिन ज़रूरत है इस समय उनकी मनोदशा भी समझने की और साथ ही परिवार से मिलने की। परिवार मौजूद है, बैरिकेड के साथ की तस्वीरें दिखाते हुए बड़ी संख्या में एनडीआरएफ कर्मी और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो वहाँ पर इस समय खड़े हैं। ये खासकर नर्सिंग असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट हैं। डॉक्टर्स अंदर गए हैं, डॉक्टर्स एम्बुलेंस में भी मौजूद रहेंगे और उसी के साथ साथ जहाँ पर अलाव जल रहा है वहाँ खड़े हैं इन 41 मजदूरों के अपने, उनके परिवार के सदस्य जो इंतजार कर रहे थे 17 दिनों से उनका। और अब इस शुभ घड़ी में जो मंगल खबर मंगलवार को आई है, ये तमाम सारे लोग इस इंतजार में है कि आज अपनों को देखेंगे। दूर दराज उनका परिवार देश के अलग अलग राज्यों में उनका इंतजार कर रहा है, दुआएं कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है सकुशल वापसी के लिए। और अब जैसे ही वो घड़ी आई, लगभग 4 साढ़े 4 बजे ब्रेक थ्रू मिला, उस मलबे के उस पार मजदूरों को देख लिया गया। उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई पाइप को अंदर पहुंचाने की। 2 घंटे का समय एक अतिरिक्त 6 मीटर की पाइप को वेल्ड करके, ठंडा करके, मजबूती देकर अंदर धकेलने की। और जैसे ही पाइप मलबे के आगे 3 मीटर तक पहुंची है, यानी 60 मीटर की पूरी दूरी तय करने के बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ के कर्मी पतली सी पाइप के अंदर उस पार गए और जैसे वो उस पार पहुंचे हैं, उसके तुरंत बाद इवैक्यूएशन शुरू हो गया है। 1 मिनट का अधिकतम समय सीमा तय की गई है, खासकर जो उनको उस पतली पाइप के अंदर से खींचने की प्रक्रिया होगी। हालांकि उनको हार्नेस लगाना, उन्हें ये तैयार करना, ये बताना कि किस तरह से उनका इवैक्यूएशन होगा, उसमें समय लग सकता है। और बस अब कुछ मिनटों की देरी। और कुछ मैं हूं। आप जैसे आवाज देंगे ना सईद मुझे, मैं फ्रेम में आ जाऊंगा, मैं किनारे ही खड़ा हूं। सर कितना टाइम लगेगा सर? आधा घंटा। फिर आप भी वही चलोगे अस्पताल? आप भी? हमारे प्रधान हमारे प्रधान जी पहले जाना चाहिए अस्पताल, हम जाएंगे तो। कौन प्रधान? हम तो हमारे भागने वाले पौधा के सर जी, जैसे पहला बंदा बाहर आएगा आप बोल देना बाहर आ गया, पेपर फोन आ जाएगा। फोटो दिखा रहा है जल्दी। अरे यूट्यूब पे
जी सईद, आप बस समझिए कि घंटों का इंतजार मिनटों में आ चुका है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं क्लोज, ये दरअसल एम्बुलेंस की हैं। अचानक 8 मिनट पहले ऐसी हलचल हुई, जितने एसडीआरएफ कर्मी थे दौड़ करके सुरंग के भीतर भागने लगे। और ये आप जो देख रहे हैं इवैक्यूएशन प्रक्रिया कितनी जटिल थी। इतने भारी भरकम मलबे के बीच एक पाइप पहुंचाना, उसके आसपास आप जो मेटल गार्डर देख रहे हैं ये दरअसल हिफाजत के लिए बनाया गया था ताकि मलबा इस तरफ ना गिरे। और आप जिस तरफ देख रहे हैं कि 8 से 9 लोग जिस तरफ बैठे हुए हैं ये काम करेंगे। देखिए, जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये पहले जो तस्वीरों में बैठे हुए हैं, जो एक शख्स आपको सोता हुआ दिखाई दे रहा है, दरअसल ये मजदूर नहीं है, ये वो आदमी है जिसने इन मजदूरों को निकालने का काम किया है। इसका नाम है मुन्ना, और मुन्ना कुरैशी उन 12 लोगों में शामिल हैं जिनकी टीम आई थी और इस टीम ने इवैक्यूएशन के लिए रैट होल माइनिंग की थी। जब मशीनें, तकनीक, टेक्नोलॉजी सब कुछ धराशायी हो गया तो वो 12 देश के जांबाज रैट माइनर जो इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला। और सईद, मैं आपको बताऊं, मुन्ना जब यहाँ पर परसों आए थे, मुझे कहा सर हमको बुलाया गया है। मैंने कहा आपको डर नहीं लगेगा? उतनी पतली पाइप में यहाँ जितने सारे एक्सपर्ट हैं सब फेल हो गए, मशीनें टूट गई, कुछ नहीं हुआ। मुन्ना ने कहा सर जान भी चली जाए लेकिन अपने भाइयों को निकालूंगा, कुछ भी हो जाए मैं निकालूंगा। और उनके साथ जितने लोग थे सबका जोश पूरी तरह से ऊंचा था। उन्होंने कहा, मैंने कहा अंदर सांस नहीं ले पाएंगे आप 57 मीटर की दूरी पे। बोला सर हमें आदत है ऐसी जगहों पर काम करने की, सांस मिले या ना मिले कटर होगा जरूर और हम कुछ भी करेंगे लेकिन उनको निकालेंगे। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं अंदर दरअसल गर्म चाय भी भेजी गई है, यानी इवैक करके जिनको भी बाहर भेजा जाएगा कम से कम उन्हें आज एक गर्म चाय जरूर मिल जाए, गर्म खाना मिल जाए, कंबल मिल जाएंगे, कपड़े, उसके बाद दवाइयाँ, और डॉक्टर उनकी यथासंभव स्थिति देखेंगे। और अब आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, लगातार लोग अंदर जिस तरीके से भाग रहे थे और उससे पता चल गया था कि अंदर ऑपरेशन जो है लगभग अब पूरा होने को है। बगल की तस्वीर में आप एनडीआरएफ वालों को देख रहे हैं, रस्सियों के काफी बंडल ले जाए गए थे क्योंकि स्ट्रेचर साथ हैं, उन सबको एक से दूसरे मुहाने पर बांधना होगा। एसडीआरएफ के कर्मी हैं जो इस इवैक्यूएशन में मदद करेंगे। और दूसरी तरफ, बाईं तरफ जो लोगों को आप देख रहे हैं, ये वो टीम है जिसने खुदाई की है, यानी इनमें से ही एक एक शॉट पे जाओ, क्लोज। पूजा करने जा रहा है क्या? सईद, अभी जो आप देख रहे हैं ये वो मंदिर है, बाबा बौकनाथ का मंदिर, जिन्हें यहाँ स्थापित किया गया था। सीएम अपने तमाम अधिकारियों के साथ सुरंग के मुहाने पर आए हैं और इस समय मंत्रोच्चार हो रहा है, पूजा हो रहा है, भगवान का धन्यवाद दिया जा रहा है। ऊपर आगे मंदिर में दिया जल रहा है और मुख्यमंत्री खुद बाहर आ गए हैं। लगातार हम देख रहे थे कि जब तकनीक और सारी कोशिशें विफल हो रही थी तब ईश्वर का सहारा था और ये हमेशा होता रहा है। और उसी के बाद देखिए कि जैसे ही ऑपरेशन पूरा हुआ, देखिए मुख्यमंत्री खुद पूजा अर्चना कर रहे हैं, पंडित यहाँ खड़े हैं, मंत्रोच्चार किया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है जिसने 17 दिनों के इस ऑपरेशन में ये पूरी कोशिश मुमकिन की कि तमाम कोशिशें और उन कोशिशों के साथ भगवान का आशीर्वाद और ये आज अभियान पूरा हुआ, ये रेस्क्यू मिशन पूरा हुआ। यहाँ पर देखिए पंडित भी खड़े हैं, मुख्यमंत्री भी खड़े हैं और इसी जगह पर जब तक हर किसी की उम्मीदें यहाँ
थम जाती थी, जब रोज़ सुबह की कोशिशें शाम तक नाकामयाब होती थी, तो हर कोई अब ये चाहता है कि कम से कम अब जब मिशन पूरा हुआ है। और ये देखिए स्थानीय जो लोग भी थे, मैं आपको बताऊं इस कड़कड़ाती ठंड में भी, दरअसल कैमरा वहां तक देख भी नहीं पाएगा अंधेरे में, चारों ओर आसपास के जितने गांव हैं उनके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं दीवार, कहीं किसी की छत, कहीं पेड़ पर, जहां जिसको जगह मिली वो बैठा हुआ, और सबकी नजरें ये बस ताक लगाए बैठी हैं कि कब वो पहली तस्वीर देखेंगे उन मजदूरों की। हालांकि ये देखिए कि स्ट्रेचर अंदर भेजा गया है, इवैक्यूएशन शुरू हो चुका है, एक एक करके जब वो अंदर आने लगेंगे। और उसके बाद से, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर में, वो लोग भी हैं, थकान हर किसी को सुला देती है जो अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे होते हैं। और अब बस कुछ मिनटों की बात है। हमारे आज तक के रिपोर्टर हैं, हमारे सर संदीप भाई, आपकी क्या राय है? अंदर चले गए दोबारा, अंदर गए दोबारा। आप बताएं, मुझे बाइक चल रही है। हाँ जी, फाइनली खत्म हो रहा है। लेफ्ट 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 बस। निकल के भाई, मुझे दिखाते रहो इधर रख के। बाइक का फोन आएगा। इधर 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 रख दो। फोन आएगा इसका, अंदर से। फोन किसका? अंदर से कौन करेगा फोन? हाँ हाँ, अंदर का भी यार। थोड़ा सा लेफ्ट जाना, हल्का सा, बस। ये वो लोग थे जिन्होंने इस लगभग नामुमकिन और सबसे बेहद अभियान को अंजाम दिया है, उसको सफल किया है। दरअसल जिस समय हम बात कर रहे हैं सईद, अभी जो लोग आए थे बाहर बात करने, ये वो लोग थे जो ऑगर मशीन पर काम कर रहे थे। देखिए ऑगर मशीन के दो हिस्से थे, एक का काम था अरे आ जाओ फोन काट के। आगे आ रहा है। भाई इतना घर में तो इरिटेट हो जाऊं मैं। सर आपकी वीडियो बना लूं एक? बैटरी देखना, माइक की बैटरी चेंज करनी है, देखना। कैमरा चल रहा है तो आपका? हाँ भाई, ठीक। कैमरा चल रहा है?
बंद कर लो, मान लो मेरी बात, चल लगा लो फिर। एक ही बात सुन लो मुझसे। दावा बिल्कुल सही है। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं एक्सकेवेशन, आप समझ लिए कि इवैक्यूएशन चल रहा है, क्योंकि खुदाई पूरी हो गई, पाइप उस पार चले गए, एनडीआरएफ के कर्मी उस पार चले गए। दरअसल एक प्रोसीजर है एनडीआरएफ का भी या किसी तरह के इवैक्यूएशन का, सही वो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर का पालन करना। वो एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो ट्रेंड है, वो पतली पाइप से ऐसे रेंगते हुए निकल जाएंगे जल्दी से। लेकिन जो अंदर लोग हैं, वो 41 हमारे भाई, वो थके हुए होंगे, मानसिक रूप से भी थके होंगे, शारीरिक रूप से भी थके हुए होंगे। तो उनको स्ट्रेचर पर पहले अलाइन करने के बाद उस पर हार्नेस लगे हुए हैं, वहां उनको हल्का सा बांधा जाएगा, ताकि इसलिए कि बीच में अस्थिर ना हो जब उनकी 60 मीटर की यात्रा पाइप के अंदर से होगी। उसके बाद दूसरी तरफ की जो टीम है वो खींचेगी। तस्वीरों में जो आप दो तरफ देख रहे हैं, ढेर से 6 लोग लगभग खड़े हैं हरी पीली जैकेट में। वो दरअसल उस समय जब माइनर्स काम कर रहे थे उसका मलबा खींचने का काम कर रहे थे। 3 लोग अंदर होते हैं, 6 लोग बाहर होते हैं, और शिफ्ट में काम कर रहे थे। और जब ये पूरा हो गया, मलबा साफ हो गया पाइप का पूरी तरह से कि अब कोई खतरा नहीं है, और मलबे के अतिरिक्त 3 मीटर पाइप जब चली गई है, तब जो है एनडीआरएफ के और एसडीआरएफ के दोनों एजेंसियों के जो दक्ष लोग हैं, जो पूरी तरह से निपुण हैं, ट्रेंड हैं, वो अंदर गए हैं। और अब एक एक करके, यानी जिस समय हम बात कर रहे हैं, मेरे पीछे सिलक्यारा की उस सुरंग में आज 17वें दिन सिर्फ रेस्क्यू नहीं, अरे कहाँ गए फोन लेके, घर पे बोल दो बाद में करूंगा फोन। एक इंच राइट 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 थोड़ा सा राइट 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 राइट। हाँ बस 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 हाँ विजुअल पे जाओ, जाओ जाओ, एम्बुलेंस जा रही है अंदर। खुजा भी लूँ इसी बहाने, बेंचन खुजली तो कीड़ा काट गया मेरे को अंदर, शिट, अजीब सी खुजली हो रही है। हेलो, नंबर ट्राई कर लेना, नंबर ट्राई कर लेना। फैमिली मेंबर जा रहे हैं अंदर, फैमिली मेंबर हाँ हाँ वहाँ से रुक, चलने दो, छूना मत। पक्का जा रहे हैं, दिख नहीं रहे। एक भाई, एक गए 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 सारे गए, ये देख
कार्ड क्यों है गले में? फैमिली नहीं है, फैमिली नहीं है। हाँ, कार्ड उनको दिया है, वही है। अच्छा फैमिली है, ठीक है। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अरे कौन परेशान है यार आज इतना? हेलो, हाँ जी भाई, हेलो, 5 ठीक है, 5 आ गए। 5 आउट। कंबल कपड़े लेके गए हैं और बैग बड़े बड़े। 5 बंदे बाहर आ गए। हेलो, अच्छा 5 ही आए हैं अभी? अंदर गया बाहर आए? बाहर आए हैं 5। हाँ। अभी कितने हैं अंदर? कितने गए टनल के हैं? अंदर? एनडीआरएफ वाले कितने गए हैं अंदर? अंदर कितने गए अंदर? एनडीआरएफ वाले, एनडीआरएफ कितने गई अंदर? अच्छा 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 अच्छा, 5 वर्कर निकल के आए हैं। हाँ। 3 टीम गई अंदर। 3 टीम। हाँ। Yes. Yes, Shiv. As we speak, 5 workers have been evacuated by NDRF and the SDRF personals, and 3 teams of NDRF have gone inside. That is just across the debris, crossing that 59 meters of the length, literally, crawling in the tunnel. And these 3 teams of NDRF went inside, and just in a minutes of time, as I told you, that the process will not be really very long, because just safety is paramount. They cannot compromise the safety during the evacuation, and it is taking barely 75 to 80 minutes for evacuation each, minus the time that it is, it is taking to get them on stretcher and then fix them on with the alignment. Now only the drilling, only the evacuation process through the escape pipe, through the narrow escape, is taking nearly 75 to 80 seconds. As we speak, 5 workers have been evacuated. They are now at the front portal of the Silkyara tunnel. Of course, in images what you see, nearly 200 meters away. Subsequently, the family members of these trapped workers have been also called inside, and they are carrying warm clothes, even the blankets. Also, this all been arranged by the local administration, because they will be exposed to the temperature here. Inside it was quite warm, more than 30 degrees Celsius. But the moment they are coming out, they'll be exposed to the temperature as low as 8, 9 to 10 degrees inside the tunnel. You see these the images of the rat mine workers who have literally worked manually, using conventional method, and now they have made the success to made a breakthrough. They ensured that 800 dia pipe reaches on the other side, and finally the evacuation process begins. We have 5 reports of 5 workers who have been evacuated so far, and this is General VK Singh, Chief Minister Pushkar Singh Dhami, welcoming them, garlanding them, and immediately after medical consultation at the team which is available inside, a temporary medical camp has been set up inside with consultation and analyzing their physical and mental condition, the psychological condition. The first priority will be to, because they are just exposed to the outside temperature after 17 days, so give them a warm clothes, a layer of blanket, and then immediately rush to the nearest health facility, which is nearly 35 to 37 kilometer from here. These ambulances outside are totally lined up. The special police squad has been arranged throughout Chinyalis, the entire stretch has been sanitized. There will be a green corridor yet again. Rest of the family members. So there is one person from the administration who's actually coordinating with each of them. So earlier I saw 7 of them gone inside. So that was the report when I heard 5 of them evacuated. More persons are going inside. This simply means there is a coordination between the rescuers who are on the other side and who are on this side. So they know exactly who's coming and when they are coming. हेलो,
क्या 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 फिर से बोलिए, क्या करें? क्या एक निकला है? क्या कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, और ठीक है, ठीक। एक बिल्कुल बाहर आएगा, 3 के अंदर है। ठीक है। राइट जाना आपने, थोड़ा सा राइट जाना आपने। बस बस, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट, बस। Well, Rahul, this is the day. The evening, I'm not disappointed. Every morning, I used to come here with a very high hope that this will be the day that they will make a breakthrough, some good news. But by end, it was only dissatisfaction and perhaps sense of disappointment. But today, I really feel happy seeing everyone around. If I could say, all these villages in this difficult terrain of literally in the deserted area, they all are here watching this operation. Everyone just keeping their eye closed, intact here. What is happening, and as we speak, getting minute by minute details how this lengthy, one of the probably unprecedented rescue and evacuation operation has been carried out. And look at the agencies, number of agencies, domestic expert, Indian experts, global experts, agencies like different ministries, NDRF, SDRF, police, army, BRO, Air Force, everyone, the way they are pressed in for this operation, and that has made the success. And the most importantly, the credit also goes to the unsung heroes like Munna Qureshi and others, his team, the rat hole miners who made this mission possible, Rahul. When all the machinery, every technology failed, the conventional, their smallest equipment like hill-tree drills, cutter, gas cutter, and those personal round the clock working, putting all their best efforts, just ignoring all the challenges, and that they promised us they will bring them out, they will make the way for the evacuation. They did it. No, literally they deserve a credit for this entire, all these machinery, all these people who are all boost. जयकारे की आवाज़ है इधर से। Jayakare lage hain, Rahul, Jayakare. Literally, they have chanted a victory slogan inside. Trust me, I could hear that sound. Jayakare lage hain 200-meter tunnel ke andar. And look at these ambulances. All they have turned their engines on. They all on standby. 4 ambulances gone inside. Personal, and these again, everything that is required are being sent in. Literally a makeshift camp. And of course, as you talk about rat hole miners. Rahul, we are exactly on the top of the other side of the mountain to get the closest picture potentially, because this is where exactly you see every moment that is coming, be it from someone going in the tunnel or coming out. So this is exactly the perfect place we have made to get every images, whatever happening at the front portal and also to other areas. So in the top angle, the images you see, all these ambulances are literally, the engines have started, and this is the signal and these indication that how the rescue is almost going to be completed. And we have been giving you every details that the evacuation will not be really a lengthy process. Just the SOP following the standard operative procedure of NDRF. I believe one ambulance is coming from the front portal. We'll have to confirm whether it is carrying one of the rescued worker. There is one ambulance stepping out. Immediately that reaches to the another barricade, we'll get a clear picture. But from here I see, if I could see someone inside,
But for now, this is one ambulance is stepping out. There are 3 more still inside. There will be a green corridor made by the administration. And as we speak, the evacuation process has literally expedited. It's going as fast as possible with the men, Devdoot, who call them NDRF and SDRF. And yes, there is one person. Yes, there. Have a look. Close जाओ. है सबसे क्लोज अप है. अंदर है कोई बेड? देखो बेड है, अंदर है कोई? हाँ. है. खाली है. खाली है. उसको कोई बैठा हुआ है? नहीं खाली है. खाली है वो. खाली है वो खाली. जकरा फिर हुआ है. जकरा फिर हुआ है. मैसेज कर रहा है अंदर से. क्या? 3 तो बिल्कुल बाहर आ गए. और बोलो मैसेज करते रहो. बोलो एक वीडियो भेजना छोटा. एक फोटो एक फोटो जल्दी से बोलो. एक फोटो कोई भी रैंडम. यहीं खड़े होकर चिल्लाना जोर से. पर लेकिन पहले फोटो बोलो. जल्दी एक फोटो भेजे अंदर से. हाँ 5 हमारी खबर सही थी. बोलो जल्दी फोटो भेजने को. सेल देखते रहे ना, सेल चेंज करते रहे. बोलो फोटो जल्दी से. शॉट दिखाना उनके जो जा रहे हैं अंदर. और फैमिली में जा रहे हैं 3. आप आए ना. भाई ये पकड़ना वाला है. लेकिन तुम स्टेबल कर पाओगे? जूम पे नहीं होगा स्टेबल. आया? अभी खचेगा. बोलो एक फोटो कोई भी भेज दे जल्दी से. दिख रहा है कुछ का नहीं रहा है. जल्दी से फोटो भेजो फटाफट. बोलो एक कोई भी रंडा कुछ भी खींच दे यार. मैं उधर ही हूँ यार जूम पे. अंदर ही है अकेले. फोटो 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 आगे आगे आगे. दिखाओ दिखाओ. खोलो कुर्सी पर है. खोलो. ये रहा. ये कुर्सी पर. मुझे व्हाट्सएप करो जल्दी से. कर दे. कुर्सी पर बैठा है. नहीं आया. आ गया. कुर्सी बैठा है. हाँ कर दिया. दिखाने ड्रॉप करना पड़ेगा. किस चीज़ का है? मजदूर का. ये हाँ. नहीं आई फोटो. भेज दी. इस नंबर पे. आपका नेट. ये नंबर है ये. तुम खोल दो फोटो खोल दो. मैं इसी दिखा दूंगा. ब्राइटनेस फुल कर दो. ब्राइटनेस फुल कर दो. ब्राइटनेस फुल कर दे बस. फुल है. फ्लाइट मोड में डाल देना, फोन ना आ जाए. ना है. भाई फोन करोगे फोटो कैसे दिखाओ? मेरे पास फोटो है. मेरा पास फोटो है. फोटो तुम फोन काटो तब तो डाउनलोड करूं. फोटो है ये रहा. इसका फोटो दिखाओ स्क्रीन पे. दिखाओ पकड़ के दिखाओ. और इसका लाइट मत बुझने देना. अरे यार क्या बेकार है जियो नेटवर्क साला. रिकॉर्ड कर ले. कर हाँ हाँ कूड़ा है यार. क्या है जब भी जरूरत पड़ती है तो. इसके वाईफाई से कनेक्ट करो. किससे? या मुझे भेज दे, मैं ग्रुप में डाल देता. नहीं नहीं वो जब तक भेजेगा. अभी नहीं खोलते रहना लाइव. लाइट ना बंद हो जाए. फोटो लाइट मत बंद करना.
फोटो काट लो लाइव में, फोटो डाउनलोड नहीं हो रहा यार, नेट चला गया है, काट लो यार। तुम लोग देखते नहीं हो, फ्रेम नहीं देखते हो, फ्रेम नहीं देखते हो। मैं ब्रेक कर रहा हूँ, फ्रेम तो देख लेते एक आदमी। कुर्सी पे बैठा है। जूम नहीं करना कोई, ऐसे रुको मैं थोड़ा पीछे ले जाओ, ज्यादा फोन पीछे कर लो। मेरे मेरा दामी में दामी। दामी कर रहा था। अंजना, खुशी में मेरे हाथ कांप रहे हैं इस समय। ये मेरे हाथ में एक फ़ोन है, ये जो पहला मजदूर आप देख रहे हैं जिसके हाथ में टोपी है, येलो कलर की टी शर्ट, ये वो पहला मजदूर है जिसे निकाला गया था, कुर्सी पे बिठाया गया है। मेडिकल टीम और जो कर्मी है अंदर वो उससे बात कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आज तक के पास मौजूद है जो हमें अंदर से मिली है, और ये वो पहला मजदूर है जिसे निकाला गया था। 5 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है और अंदर जयकारे लग रहे हैं। मैं इस समय आपसे खड़ा हुआ, समझिए कि रोंगटे खड़े होने वाला ये मौका है, ये लम्हा है। 17 दिनों का इंतजार, और जब लोग उम्मीद खो चुके थे, हौसला खो चुके थे, और इसमें जब एक उम्मीद दिखाई पड़ी। आतिशबाजी हो रही, कैमरा लाइए मृदुल, यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है। बहुत सारे लोग आए थे, पटाखे लेकर गए थे। कैमरा उतारिए ट्राइपॉड से, लाइए नीचे, दिखाते हैं। यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं। और अभी मैंने जो कहते हैं ना कि स्काई रॉकेट जो होता है वो छोड़ा गया था, और ये आप समझिए कि आज ही दिवाली है। यहाँ पर देव दिवाली बीत गई, मंगल। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर जमा है इस मौके को देखने के लिए, इस लम्हे का इंतजार करते हुए। और आखिरकार आपसे, और जब वो तस्वीर हमारे हाथ लगी है उस पहले मजदूर की, और हम चाहेंगे जल्दी से वो तस्वीर हम दिखा पाए तमाम लोगों को हाई डेफिनेशन में। लेकिन आप देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर रोशनी कर रही हैं, लोगों ने कई सारे अपने मोबाइल लाइट जला दिए हैं, और सुरंग के भीतर भी जो है हलचल काफी तेज है, एक एक करके। चलाना आज तक चली चली फोटो। मेरे छोटे वाले बैग से बैटरी निकालना कैमरा की। कैमरा बैग के अंदर जो काले वाला बैग है ना मेरा छोटा, आपका नेट तो बहुत ही स्लो है, मैसेज भी नहीं जाता उससे। हाँ जा रहा, मैं कर रहा था इस से ही। आप बात कर रहे हो शायद इसमें से। बस 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 बस, ये मेरी जेब में। मिस मत करना कुछ भी, मुझ पे आओ, मुझ पे आओ। रुको जरा, मैं चेंज करना। रुकना, रेडी हाँ रेडी, रेडी। बोलो और भेजे। मुझे भेज देना भाई। बाबा मुझे भेज देना फोटो, मैं आपके ग्रुप में डाल दूँगा। इधर बैकग्राउंड में दिए एम्बुलेंस लाना, इधर इधर आओ जी। नो बार आगे है, नो 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 बार आगे है।
बता दीजिए देश को अंजना, 9 लोग बाहर आ चुके हैं, मेरे पास खबर आ चुकी है, 9 लोग निकाले गए हैं अब तक, इतनी तेजी से 9 रेस्क्यू जी, 9 लोग निकाले गए। और आप समझिए कि हम जैसे दिया जलाते हैं ना, ये आज मुझे एम्बुलेंस की जो लाइट जल रही है ना, वैसे तो ये लाइफलाइन होती है, ये किसी दिए से कम नहीं लग रही। ऐसा लगता है कि जैसे रास्ता सजा दिया गया है जगमग करती रोशनी के साथ। भले इन मजदूरों को वो ले जाएगी स्वास्थ्य सेंटर पर, मेरी भावनाओं से कोई आहत ना हो, बिल्कुल महसूस करें कि मैंने 17 दिन जो देखा है उन परिवारों से मिलकर, उन पर जो आप बीती है, आज सब कुछ जगमगाता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। और ये लाइफलाइन जब इन्हें ले जाएगी, यहाँ आतिशबाजी हो रही है। एक और यही पे रुको दोनों बैकड्रॉप में। बिल्कुल अंजना, इस मौके के लिए तरस गया था मैं, ये खबर सुनाने के लिए देश भर को तरस गया था। हर रोज हर शाम जो निराशा होती थी ना, आज एनडीआरएफ वालों को अंदर बुला रहे हैं क्या? फर्स्ट आई एम टेकिंग योर बाइट। कौन है यार, कौन बोलता है ऐसा? जा रहे हैं एनडीआरएफ वाले। शॉर्ट पे जाना। फोटो बोलो, और फोटो भेजे यार, बोलो एक वीडियो चाहिए, एक वीडियो। अंजना फिर एक बार, जो कि देखिए जब इवैक ऑपरेशन होने लगा है और बड़ी संख्या में एनडीआरएफ कर्मियों को अंदर भेजा जा रहा है, बाहर एम्बुलेंस खड़ी हैं, 9 लोग बाहर आ चुके हैं, एक एक करके इन सबको निकाला जाएगा। और अब इंतजार खत्म हुआ, वो घड़ियां इंतजार की खत्म हुई हैं, और अब सिर्फ ये देखना है। तमाम जो विशेषज्ञ हैं बाहर आ रहे हैं, नॉर्वे से, ऑस्ट्रेलिया से, स्लोवेनिया से, जो जहां से जिसको बन पाया, जहां से भी बातचीत हुई, इनको बुलाया गया। अंजना अंदर से लगातार जयकारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे कानों तक पहुंच रहे हैं। आप समझिए कि जहां रेस्क्यू हो रहा है वो हिस्सा सुरंग के भीतर 200 मीटर अंदर है, लेकिन इनका जोश इतना हाई है और उनको पता है कि उन्होंने क्या हासिल किया है। 17 दिनों के संघर्ष के बाद उन मजदूरों की लड़ाई जो वक्त के खिलाफ थी, आज वो जीत ली गई है। तमाम कोशिशों और नाकामयाबी के बीच होती जो जंग थी, उसमें उम्मीद थी कि उम्मीद रहेगी, और उम्मीद आज सफल हुई है। और अब एम्बुलेंस आनी शुरू हो गई है। हम ये बता सकते हैं मजदूरों को लेकर के जो एम्बुलेंस तैयार थी, वो अब से किसी भी देर में निकल सकती है। पहली तस्वीरें पूरा देश आज तक पर देखेगा। अब वो मजदूर यहाँ से निकल रहे, हमारे वो 41 भाई देश के अलग अलग राज्यों से जो इस महत्वपूर्ण परियोजना में काम कर रहे थे, जिनकी दिवाली से लेकर के सारे त्योहार इस अंधी सुरंग में बीत गए, इस उम्मीद में कि ऑपरेशन कब पूरा होगा, क्या वो जिंदा बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। लेकिन अब वो सकुशल हैं, उन्हें निकाल लिया गया है, और अब बारी है घर जाने की, अपने परिवार से मिलने की। और इसीलिए जो चाय पिला दो मेरा। आया फोटो आया?
Okay. आप कह रहे हो थोड़ा इधर रख दो भाई 60 800 800 mm. Deepavali, Rahul, it's Diwali here. Number of crackers, everyone, be the locals or the family member, they brought here crackers here. They were busting crackers, rockets here. This is no less than a celebration. And as the ambulances are lined up, I have the information, the 9 of them have been evacuated. And once it started smoothly, now it has been expedited. The process has quite faster because rest of those workers who were about to be briefed about the SOP, how to go inside the tunnel, how to maintain a calm during this 75 or 80-second of the drive on stairs equipped with wheels inside a narrow pipe of 800 millimeter. So quite this, there was also another energy amongst the workers as they know this, they are going to be rescued. They have been waiting for this moment for last 17 days. And of course, immediately after the medical consultation, the minister... There is no doubt that there was lack of planning, there was lack of vision, and perhaps they could not anticipate the threat. For example, again I heard some crackers here. On 17th, when the debris collapsed inside where the rescuers were carrying out the operation, they failed to anticipate that there could be a fragile structure. When you have a mountain cavity literally falling inside, you could potentially, first priority was to ensure safety of the rescuers. Immediately what had happened, it took them 4 days to mobilize the resources, get the 2x2 concrete blocks, metal frame, and ensure the safety for at least 50 to 60 meters to carry out the rescue operation. There was delay. They did not anticipate that there could be another vertical drilling process should be carried out. All the agencies, they called up the global expert. I remember from second day I heard that the international experts have been pressed in, and it was the first, the Professor Arnold Dix, who was in then Slovenia. He reached me out that he have been contacted and I am trying to get through to India, but there are no flights. He went to Dubai. From Dubai he came to Delhi to Dehradun, and then he somehow managed to reach here on 4th day. Several other experts, Chris Cooper, another person who is the consultant for RVNL, the agency which is making a road from Rishikesh to Karnaprayag. All these mobilization resource, when the proper planning, and it was after the intervention of the PMO, when they sent Deputy Secretary and then the former advisor to the... मुश्किल साइड हो जाओ थोड़ा बस यही तरफ कर लो उधर से यही तरफ
हेलो हेलो राइट जाना अपने राइट हेलो अपने राइट में और राइट थोड़ा सा ठीक है थोड़ा सा और राइट जाना अपने थोड़ा सा और राइट जाना बस बस एम्बुलेंस भी है ये भी है ये क्या जा रहा है देखना क्या गया है एनडीआरएफ वाले ही हैं वो क्या ले गए एम्बुलेंस में से लेफ्ट में जाना थोड़ा सा लेफ्ट अब उन्हें आधे घंटे के बजाय 45 मिनट भी दे दीजिए 60 मिनट और दे दीजिए निकाल लें अपना समय ले लें क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ले लें लेकिन मुझे लगता है 60 मिनट से ज़्यादा का समय अब और बिल्कुल नहीं लगेगा देखिए जानकारी आने में थोड़ा समय लग जाता है एक तो इंटरनेट इतना मेहरबान हो गया है यहाँ पे कि इतने सारे लोग वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं कि इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई है तो पंद्रह नहीं 17 कर दीजिए बता दीजिए सबको 17 निकल गए हैं जैसे इंटरनेट साथ आता है जानकारी मिल जाती है मैं कंफर्म कर सकता हूं 17 लोग निकाले जा चुके हैं रफ्तार देखिए 30 मिनट में 17 आ गए अगले 30 से 40-45 मिनट में सारे बाहर आ जाएंगे अब से थोड़ी देर पहले दरअसल एनडीआरएफ की टीम एम्बुलेंस के भीतर से गर्म कपड़े कंबल काफी सारी चीजें अंदर ले गई हैं गर्म चाय अंदर भेजी गई है जहां डॉक्टर्स इस समय जितने लोग निकले हैं कोशिश की जा रही है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन देखिए यहां जल्दबाजी नहीं कर सकते वो जहां निकले हैं अंदर 30 से 32 डिग्री तापमान में थे बाहर इस समय 6 डिग्री है मेरे हाथ इस समय ठंडे पड़ चुके हैं लेकिन ये इन लोगों का जोश है ये जो खुशी है ना इस समय शायद सारी ठंड हम भूल सकते हैं यहाँ पे अंदर जो गए उनको चाय देना दवाइयाँ देना और खासकर ये देखना कि उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है इन सबको चिन्यालीस और के स्पेशल जो मेडिकल कैंप बनाया गया है वहाँ ले जाया जाएगा और हम बस उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब एक एक करके एम्बुलेंस निकलेंगी 4-4 के सेट में बाहर देख रहे हैं एम्बुलेंस ये एनडीआरएफ के जो काफ़ी कर्मचारी हैं ये भी हाथों में लेकर के मोबाइल फ़ोन कैमरा और उनके साथ जो दूसरे कर्मचारी हैं हर कोई इसका हिस्सा रहा है हर कोई वो लम्हे को देखना चाहता है अंदर स्वागत होगा तो बाहर भी स्वागत होगा जयकारों की आवाज़ रुक नहीं रहे रुक रुक करके भारत माता की जय के जो है जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं और जैसे वो बाहर आते हैं परीक्षण जरूरी है लेकिन हमें विशेषज्ञ लगातार अंजनाएं बताते रहे कि वो शारीरिक रूप से मजदूर हैं इस सुरंग को जानते हैं यहाँ के पहाड़ को जानते हैं ढर्रे को स्ट्रक्चर को जानते हैं हर चुनौती जानते हैं लेकिन 17 दिन तक अगर आप किसी अंधकार में फंसे हों इस उम्मीद के साथ जो टूट जाती थी शाम को कि हम बचेंगे भी नहीं बचेंगे ऐसे में मानसिक ट्रॉमा एक जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है वो बहुत बड़ी चुनौती है और इसीलिए शहर के लोग जानते हैं कि मनोचिकित्सा और ये जो दशा होती है हम आजकल वो बहुत मामूली बात नहीं उसको हमेशा बहुत गंभीरता से लेना चाहिए तो उनसे यहाँ परामर्श के साथ साथ ऋषिकेश एम्स भी ले जाने के लिए तैयारी है और इसीलिए चीनी हेलीकॉप्टर आए हैं Squadron. हाँ भाई कर दिया नंबर सेंड
अरे क्या बोला मेजर ने, आया क्या? इधर थोड़ा थोड़ा सा इधर बस यहीं पे रहो। भाई वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, कॉल करोगे तो वीडियो कैसे डाउनलोड? "19, Rahul, the number is now 19. 19 of them have evacuated. We are just trying to get an access to a video from inside. 19 of them have been evacuated, and the moment they came out, they heard the slogans of Bharat Mata Ki Jai. And the first reaction from many of those workers, because if I cannot get those images, at least I can explain verbally what was happening inside. When they came out, their expression was with a folded hand to everyone, to all the rescuers, because they are alive, they are safe, they have been rescued, evacuated. Now they'll be going home, meeting their families, and all because of that 2,000 of workforce from all the agencies who made this mega mission possible. Literally impossible, collapsing every day, halting operations, suspending various threat factors, and finally all efforts have been played out. And look at the other side. Or from another top angle, the barricade that you see, this is exactly the place where all these workers from different agencies who are stepping out, and there exactly you hear their sound bites, their statements about the rescue operation. But again, right behind them at the another point, you hear they are the locals from Uttarkashi district. These in scattered landscape or this difficult terrain, everyone from every house, people have come out in a huge number, chanting slogans, mantra. They have been literally praying here for the safety. And you heard that noise. This is the enthusiasm, the energy here, welcoming all their workers, the fellow workers who were making this significant strategically and all weather connectivity, a very important project. But somehow there is one incident and they were trapped inside. Right outside on the front portal, the NDRF, SDRF worker are also ready to greet once the ambulance start coming out. So after only the analyzing their psychological condition and especially the physical condition, the special warm clothes and the blankets have been sent in by the administration, and this is because they have been exposed now to a new climate totally after 17 days. Inside the tunnel, the temperature wasn't less than 30 or 32 degree, but right after coming out, the temperature for now has dipped nearly 7 to 8 degrees. And in that case, to avoid any such condition, they have been given warm clothes, hot tea, a cup of tea at least, and a warm welcome. And finally, they are meeting their family members at the moment. In fact, I'm waiting for more and more information about what is exactly happening inside. So for now, it is time for them to meet their family members. And then the set of 5 to 6 ambulances, they will be departing to Chinnalisore, where the special health facility has been made. And they will be staying there till tomorrow morning. And since we know the Chinook helicopter is here, they will be flying in
Chinook to Rishikesh AIMS. That is what I'm hearing from my sources. There was also earlier plan to send them Dehradun, but for now what I'm hearing, since the special block has been made ready for them, they'll be going to Rishikesh. The psychological analysis is very important because they cannot leave them going home just with a trauma what they have suffered through in last 17 days. And probably then we will see more people going them, visiting them, family members, those who have missed them, those who could not come out, they may also to arrive Rishikesh AIMS. So it is just matter for hour now, and I don't think more than 30 minutes left when everyone will be evacuated. So the idea, it seems like the rescuers are waiting. Let all of them come out. Let all of them be together. तैंतीस हो गए 33 अरे संदीप मांगो यार बोले एक और वीडियो सुनो जैसे 41 पूरा होगा ना हम सबको नारे लगाने इधर से यहाँ खड़े होके 33 आ गए आ जाओ 7-8 और बच्चे इधर ही आ जाओ सारे साला इंतजार खत्म हुआ यार आ जाओ यहीं पे और कैमरा घुमा दो सबकी और आंख बंद करके वो कहाँ पे लग गया यही तो बस 33 हो गए कहाँ पे लग गया वो कौन अरे ठीक है मुझे बहुत खुशी है लाइव में दिखाइए हम लोग वीडियो वाले खुशी कर रहे हैं अभी नहीं हमारा फ्रेम काटना है सबका फ्रेम हाँ ये चलाना है सब है बहुत खुशी है खैनी नहीं दिखाना है अभी नहीं खैनी नहीं दिखाना घूम गया कैमरा भाई मेरी तुम यार मतलब नोटिस भिजवा दोगे खैनी रिश्तेदार दौड़ के जा रहे हैं कहीं पे उधर क्लोज जाना मैं तब तक देखो उधर क्लोज जाना हाथ उठा के नारेबाजी हो क्लोज जाना भीड़ में लाइट नहीं लाइट के थोड़ी दूरी पर मैं जब तक इधर से देखूंगा तब घुमाना एक झटकन घुमा के कोई नहीं होता भारत माता की जय भोगनाथ के नारे लगाएंगे अरे पूछो ना कितने हुए काम पे लग गया वो तो 7 रह गए 7 रह गए नहीं अभी सब हो गया बैटरी देख लेना सेल देख लेना 34 another 5 minutes भाई यार मेरे हाथ देख रहे हो फ्रीज हो गया पूरा ये देखो अरे इधर बजाओ यार दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ बज रहा है तुम लोग भी नहीं लेके आप पटाखे यहीं बजा दे बड़ा सा छिप दे नहीं बजाना साला हिल गया पहाड़ हिल गया तब क्या होगा पटाखे अभी कोई फाट भी नहीं करेगा जोर से साला मैं डर कोई मजाक नहीं इस समय ओके एम्बुलेंस का स्पॉट लग रहा है लाइन पे
साइड हो जाना थोड़ा। यार नेट नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? मेरा बहुत हाँ जी बताएं। कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ जा रही है एम्बुलेंस अंदर। पूरा गवा भी मिलाओ ना क्या हो क्या रहा मेजर? मेरे को 41 सबसे पहले जाना है। क्या कह रहा है? अरे इनसे कनेक्ट करो ना, इनसे वाईफाई बंद करके देखो। अब वाईफाई स्लो हो जाता, बंद कर दो। अब मारो, ऊपर से आएगा डेटा, पुश करता फट से कॉल कर लो ना। मैं तो आज कल 3 दिन आपको आज नहीं जाओगे? चलेंगे बाद में। टिहरी जाकर रुक जाएंगे, है कितना वही लॉज वॉज रुक जाएंगे यार। जाएंगे सर होटल में। यहाँ होटल बुक करा रखा है, नहीं उधर नहीं यहीं रुक जाएंगे यार। हो जाने सुबह चिन्ह हाँ आप जा रहे थे सुबह। अभी यहाँ खड़े रहो मेरे पे, यहाँ खड़े रहो। मैं नहीं, आपने बोला था एक दिन, जिस दिन बोला 6 से 9 आप बोला मैंने पिछला लोगों को निकलते हुए देखेंगे, आप आगे जाने लग गए, फिर अचानक फिर आप वापस आ गए, फिर आज आपके सामने से निकलते मेरे बॉस नहीं बोला कि तुम वापस आ रहे हो, ऑनलाइन बोला साहब क्या रहा कि आपको वापस आ रहे हैं बैक बिकॉज हेलो निकल गए सारे। ऐसा ही आपने स्टार्ट किया था, फोटो भी तो भेजते कोई। हाँ नंबर पूछो, नंबर कितना हुआ? कितने नंबर हो गए? ये भाई बना कितने बार आगे, कितने बार आगे? पकड़ लो इसको बस, हो गया। अब सब अगले वीडियो का कौन बनवाएगा?
एम्बुलेंस आ रही है, पीछे हट जाना, पीछे हट जाना, पीछे हट जाना। Yes, yes, yes. जय। विजुअल देख लो, इधर आ जाओ। हाँ, इसमें है, अब कंफर्म कर लो। हेलो, बाहर आ रहे हैं। ओके, बाहर आ रहे हैं अभी। सुरंग से सारे निकाल लिए गए। ऑपरेशन पूरा हुआ, सबको निकाल लिया गया है। और दरअसल पहले 5 एम्बुलेंस भेजी गई है, आगे पुलिस एस्कॉर्ट है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। और ये देखिए पीछे से फिर एक बार 2 एम्बुलेंस अंदर जा रही हैं। तो हर एक एम्बुलेंस के अंदर जो है 2 से 3 श्रमिक, उनके पूरे परिवार के साथ, मेडिकल टीम, डॉक्टर्स की टीम। और जहां पे एक तस्वीर एक देख रहे हैं, खुशी का जो मौका था वो इन लोगों के पास था। हमारे वो टेक्निकल कर्मी जो दरअसल यहाँ खड़े थे और जैसे ही मिला दे हर हर महादेव भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, दरअसल इन लोगों का भी इंतजार था। रोज यहाँ खड़े होते थे सर्दी में और रात को 10-10, 11 बजे तक लकड़ियाँ यहाँ वहाँ से जंगल से ढूंढ के लाते थे ताकि सर्दी से खुद को बचाएं। आज ये लम्हा हर किसी के लिए खास है। उन लोगों के लिए भी जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, उन लोगों के लिए भी जिनके लिए यह ऑपरेशन हो रहा था, उन लोगों के लिए भी जिनके अपने इस ऑपरेशन में बचाए जा रहे थे, और उन लोगों के लिए भी जो इस ऑपरेशन को कवर करके हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे। अब देखिए 2 एम्बुलेंस अंदर गई हैं, एक और अंदर जा रही है। बाकी जो लाइन में थी उन सबको यहाँ लाया गया है। ये तमाम एम्बुलेंस अब अंदर जा रही हैं। एक एक करके उन मजदूरों को, उनकी पूरी टोली को ग्रुप में यहाँ से निकाला गया है। यानी इवैक्यूएशन के बाद अधिकतम 15 से 20 मिनट का समय लगा है, क्योंकि उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है, उनका अभिवादन किया। देखिए जो तस्वीर सामने नहीं आए उसको शब्दों में बयान कर सकता हूँ। जो जानकारी हमें मिली कि जैसे ही मजदूर आए बाहर, भारत माता की जय के नारे लगे, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग थे, और जब वो मजदूर निकले वो खुश भी थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक हैरत भी थी। उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन जब वो निकले तो उन्होंने हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन किया, धन्यवाद दिया कि आपने हमारी जान बचाई है।
और अब उन भाव, जल्दी हम वो तस्वीरें भी सामने देखेंगे, लेकिन उस भाव के साथ यहाँ जो मेहनत रही है 17 दिनों की, दुनिया भर के लोगों की, उन तमाम लोगों की जो इसमें शामिल थे ऑपरेशन में, चूंकि अब सब निकाले जा चुके हैं, अब समय है परिवार से मिलने का। जितने लोग यहाँ पर हैं उनके परिजन जो थे उनको यहाँ बुलाया गया, वो हर कोई अंदर जाने लगे, सबसे पहले मुलाकात हुई। आप समझ सकते हैं कि उनकी मनोदशा, वो स्थिति, वो भाव भंगिमा कैसी होगी अपनों को देख करके, जब उम्मीदें टूटते वो देखते थे। कईयों से हम बात करते थे, वो बाहर आते थे, रो देते थे। एक परिवार थे, उन्होंने कहा कि मैं पैसे लेकर के आया था, मेरे जेब में सिर्फ 300 रुपए बचे हैं, लेकिन आज वो 300 रुपए भी लेकर के वो रिच हैं। अब देखिए मेरे पास एक और तस्वीर आई है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये जब उन मजदूरों को निकाला गया, उनको माला पहनाई जा रही थी, तो उनसे बात की जा रही थी। मैं एक बार फिर वो तस्वीरें प्ले करने की कोशिश करता हूँ। मुख्यमंत्री धामी भी वहाँ मौजूद थे, वीके सिंह वहाँ मौजूद थे, तमाम अफसर उनसे मिल रहे थे। दरअसल नेटवर्क कोलैप्स कर गया, लोग हर जगह सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, और इसीलिए मुझे अपने मोबाइल पर ये तस्वीरें प्ले करके आपको दिखानी पड़ रही हैं। जल्दी हम ये तस्वीरें आपको स्क्रीन तक भी पहुंचा देंगे। ये अंदर की तस्वीरें जब उन्हें बचाया गया था, देखिए उनको शॉल पहनाई गई है, शॉल, फूलों की माला, और उसके साथ एक गरम जैकेट दी गई, यानी गरम कपड़े भी दिए गए हैं ताकि ठंड में ना रहे। और पीछे जितने भी मजदूर हैं, इस टोपी दिखाई पड़ रहा है कि हर किसी का स्वागत हो रहा है, उन्हें माला पहनाई जा रही है। और जाहिर है वो किसी युद्ध से कम नहीं था इसको जीतना, यहाँ तक आना। उनकी लड़ाई समय के खिलाफ थी, समय के खिलाफ लड़ाई जीत गए, युद्ध जीत गए जिंदगी का, और इसीलिए यहाँ युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है, उस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जल्दी ये तस्वीरें हम आपको फुल स्क्रीन पर दिखाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझिए कि जो कोशिशें थी वो कामयाब हुई हैं, और कामयाबी का जो जश्न है वो यहाँ पर हो रहा है। मतलब भाई को छोड़ दिया, भेज दे मेरे आपके पास, कर दो, भेज दो। शर्मा जी, हेलो। हाँ छोटा वाला मेरे पास है, कोई ले आए, वहाँ कोई था ही नहीं यार। थोड़ा गर्म। वीडियो डाला ग्रुप में, वीडियो मारो फुल फ्लेम। कोई बात नहीं, मैं हेलो छोटे वाला ले आए। हेलो, भाई वीडियो मारो फुल स्क्रीन। हेलो, वीडियो मारो फुल स्क्रीन, वीडियो मारो फुल स्क्रीन, असाइनमेंट देखो। वीडियो को मैंने देखा है। पीछे हटना, वो एक और एम्बुलेंस आ रही, पीछे हटना, इधर आओ, थोड़ा इधर। और आ रहा है, जैसे आए पहले खोल के दिखा देना फोटो, यहीं पे फोटो मंगाओ, वीडियो ना भी हो, फोटो। ये मजदूर है, पूरे मेहनती थे, बिल्कुल ठीक हो रहा। सबके नाम लिखे गए भाई, सबके नाम लिखे गए।
Absolutely, absolutely. And remember, Rahul, on the third day, when they pressed in all the international agencies, multiple other departments, everyone, so the biggest challenge was to bring them on one conclusion. For there are multi-approach, multi-dimension approach were opted out. Imagine you have one official from the BRO, another you have from the ONGC, and these officials having different different opinion and different approach as far as drilling is concerned, as far as carrying out the rescue operation is concerned. So the biggest challenge was to bring a consensus and a conclusion that this is exactly the study we should go in, and exactly why there have been almost every day 3 to 4 times of the meeting, drawing, strategy, designing, getting the equipments, getting the accessories, essential materials from all over the country. Now, no part of the country is left in this mission where they haven't imported or they haven't airlifted the machinery. You take it Pune, you Karnataka, from Odisha, from Jharkhand, every place, and the experts from all over the country were pressed in. International experts were called in for the consultation, and exactly this strategy finally paid off on the 17th day since this operation started. The one and significant and the primary thing, every time you make a tunnel, whether it is one way or two way, every time then you start constructing the tunnel, simultaneously make a scape way, make a parallel tunnel, even a micro tunnel. 2 by 2 is not really a big deal. If this can be done to save the rescuers when the debris collapse on 17th day, there is an SOP when you go to, by lane